शासन आता है और भी हमारे आदिवासी समाज में हमारे संस्कृति, रीति रिवाज, देवी देवता ये सब मन में सुनने के लिए मिलता है, लेकिन देखने के लिए नहीं मिलता। तो देखना चाहिए ना, जब सुनता है तब देखने का अपना इच्छा होता है। तो कैसे देखना चाहिए? देख के फिर उसको सवाल खड़ा होता है, 3 बार होता है। कुदरत का नियम है ये। अब सभी लोग, हम लोग जन्म होने से पहले तो सुनते रहता है, फिर थोड़ा थोड़ा देखते हैं, देखने के बाद बोलना होता है। वैसे ही हमारा ये है। तो वहां से है तो ये क्या है, समाज क्या है, ग्राम पंचायत क्या है, शासन क्या है, सरकार क्या है, ये पूरा सुन के देखने का ऐसा इच्छा हुआ। तो हिंदी में क्या बोलेंगे? देखने का। और ठीक है, अच्छा है ना। तो ऐसा होता है। ये दिल्ली क्या है? दिल्ली हम कभी देखे नहीं है। हम तो गली में रहते हैं, दिल्ली में आए हैं, है ना। दिल्ली कैसा है? तो हम दिल्ली अच्छा बिल्डिंग है, अच्छा है, लेकिन सभी जगह सरीका नहीं है। इस क्षेत्र में देखे तो पट्टी है, हमारे गांव जैसा है, वैसा है। तो ये समझना जरूरी है। तो ये हम बहुत सवाल मन में आए थे, तब हमारा ये वर्क हुआ। और शॉर्टकट में मैं उसका बोलने का बता देता हूँ। ये ग्राम पंचायत आपको मालूम है? पंचायत क्या है? पंचायत एक्ट बोलते हैं। क्या पंचायत है? वो 73वीं घटना दुरुस्ती, 74वीं घटना दुरुस्ती। क्या घटना है? 73वीं है क्या? तो हमको क्या मालूम। भारतीय संविधान हम लोग बहुत ही ये करते हैं कि भारतीय संविधान, तो भारतीय संविधान घटना है, घटना उनका है, सबको समान, वो बंधुत्व, तो समानता, ऐसे ही बोलते हैं। तो उसका भी हमने अध्ययन ऐसे ग्रुप में किया गया है। ऐसे हम रात में बैठे थे, पढ़े लिखे लोगों से सीखना या लिखे पढ़े लोगों से सीखना। ये पढ़े लिखे और लिखे पढ़े क्या इसका अर्थ क्या होता है? लिखे पढ़े लोगों से सीखना है ना, वो पहले लिखा था, उससे वो पढ़ रहा है। और लिखे पढ़े ये हमारा वो था। एक इशू आगे आता है। तो हम इसका ये किया था कि हम ग्राम सभा को फोकस नहीं किया। ग्राम सभा क्या है? ग्राम सभा क्या है, क्या चीज है? आदिवासी 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 कहते हैं। आदिवासी कौन है? आदिवासी के पूछो। अभी हमारा आदिवासी का मोर्चा निकलता है, कभी कभी युवा निकालते हैं। आदिवासी कौन है? जंगल का शेर है बोलते, गाय का शेर है, बिल्ली जैसे जी रहे हैं, है ना। तो शेर कहाँ है? शेर कैसे होगा? इस पर हमको सबको मिलके अध्ययन करना पड़ेगा। सभी विषयों पर ये ना है कि सरकार के बारे में तो ये किया, तब ये सवाल आगे से आता है, वो भी सामान्य लोग ना हो, उच्च शिक्षित, हायर एजुकेशन, IAS अधिकारी, वैज्ञानिक, संशोधक है, ये बड़े बड़े पढ़े लिखे हैं या लिखे पढ़े हैं, इनसे आना चाहिए। कैसे आना चाहिए? तो मैं बोलता हूँ तब ऐसा पूछने से नहीं जमता, काम करने से, बोलने से बहुत सवाल खड़ा होता है। तब वो सवाल आए ये IAS अधिकारी के पास, कैसे देखिए सरकार कहाँ है, ये हमने पूछा। तो उसने कि सरकार कहाँ है आपको पता नहीं। सरकार कौन है? सभी लोगों को एक एक को ढूंढो, कौन सरकार है, कहाँ है, सरकार कैसे बनता है, सरकार कहाँ है, कौन सा जगह पर बनता है। तो ऐसा हमने सोच लिया। तो हमको एक सवाल पर IAS अधिकारी, ये तो चपरासी दीवान जी को मत छोड़ दो, और एक हमने 100 IAS अधिकारी होगा। ऐसा हमने सवाल किया कि सरकार कहाँ है सर, बोलिए। तो तुम हमारे गांव में आते हैं और हमारे लड़की लड़का को हम स्कूल में एडमिशन करते हैं, तब आपको पता है विश्व को हमने पकड़ा। तो क्या
उसका डाटा कलेक्शन करते हैं हमारी लड़की लड़कों का। हम भी पढ़े लिखे हैं, आप भी पढ़े लिखे हैं, तो पहले स्कूल में आपका क्या पूछता है? पिताजी का नाम, माताजी का नाम, है ना, और जात, धर्म, दूसरा तुम्हारा जन्म तिथि। ये पूछते कि नहीं पूछते? तो सरकार को कभी पूछे हैं क्या? सरकार को पूछना है। सरकार, ये सरकार दिल्ली सरकार हो या बंबई सरकार हो, तो इस सरकार कौन सा माँ बाप है इस सरकार का? उसका माँ कौन सा है, पिताजी कौन सा है, कौन सा जाति का है, कौन सा धर्म का है, और दूसरा है ये सरकार का डिलीवरी करने वाला डॉक्टर कौन है? ये सरकार कौन सा अस्पताल में डिलीवरी हुआ, और इस सरकार का जन्म तिथि कौन सा है, बताओ सर। उन्होंने बोल दिया ये सभी कर, ये तो बकवास है तुम्हारा सवाल। अब पागलपन है, हम पागल कि तुम पागल? अरे सही सही हमको मालूम नहीं है ना, हम आदिवासी लोग हैं, जंगल में रहते हैं, सरकार क्या है पता नहीं। बराबर है कि नहीं? बताना चाहिए, कभी गलत मैसेज नहीं देना, गलत रास्ता नहीं बताना। इसीलिए तो हम, तुम पढ़े लिखे हैं क्या लिखे पढ़े हैं, वो बताना चाहिए। वो बोला कि तुम पागल है, भाई तो पागलपना का लक्षण है। हम भी बोला हम पागल कि तुम पागल, बताइए। फिर वो तो बहुत गुस्सा ही आया उनको, तो गुस्सा आने से आगे करते हैं। दूसरा गुस्सा है हमारे गांव में हमारी सरकार, दिल्ली और बंबई में हमारी सरकार, सब सरकार हुआ ना, जंगल सरकारी, पानी सरकारी, रास्ता सरकारी, शाला सरकारी, सब सरकारी, आदिवासी भिखारी, ऐसा है क्या? तो ये सब सरकारी सरकारी, तो सरकार को हम ले लगा, तो उसमें भी उन्होंने गुस्सा आया। ये तो तुम्हारा सवाल ये भी बेकार है, हमारा ये भी बेकार है, वो भी बेकार है, तुम्हारा क्या सही है बताइए? जंगल भी हमारा नहीं, जमीन भी नहीं, पानी भी नहीं, सब नहीं है, ये तो सरकार का है। अब सरकार का कौन है? तो बोले अधिकारी है। अधिकारी का मतलब कर्मचारी है, काम करने वाला, पर सरकार नहीं है ना, हम सरकार नहीं है, फिर सरकार कहाँ है बताइए? हम तो तुमसे ही सीखे। तो बोले दिल्ली और बंबई में, हाँ वही सरकार को हम ढूंढ रहे हैं। तो इससे आगे जाके क्या किया कि अभी ये लोग तो बताने के लिए गुमराह कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। तो जंगल हमारा, जमीन हमारा, तो दिल्ली और बंबई में हमारी सरकार, हमारे गांव में हम ही सरकार, जंगल जमीन गांव समाज का अधिकार। ऐसा वहाँ देश भर में भी आंदोलन, ये जंगल बचा मानव बचा का शुरू था। तो वहाँ हमारे गांव में सब, बाहर भी हमने देखा कि आंदोलन करने में बहुत पटाई है। सरकार को गाली देना आसान है, कोई भी गाली देता है और वो भी जोली में लेता है, कुछ काम नहीं करता है। तो ये बात हुआ कि इसमें भी कुछ दम नहीं है। अभी क्या करेंगे, है कि नहीं हमारे अधिकार? आदिवासी हो, जंगल में रहते हैं, तो हमारा हक या अधिकार है कि नहीं? तो हमने क्या किया, जैसा भारतीय संविधान का घटना है, घटना का मतलब नियम होता है कानूनी, हमारा ग्राम सभा का ही नियमावली और घटना बना दिया। एक ही पहला नियम ऐसा है, ये सब लोग अपना अपना अधिकारी में जाएंगे ना, तो वो बिना पूछे वहां नहीं जाता। तो वही हमने पकड़ा, हमारे गांव में किसी को काम करना है तो ग्राम सभा का पूर्व परवानगी लेना पड़ेगी, तो काम नहीं सकता। ये पहला नियम। दूसरा नियम था, हमारे गांव का कारोबार चलाने के लिए हर व्यक्ति हम प्रयत्न करेंगे। तीसरा नियम, गांव की समस्या तो व्यक्ति की समस्या, व्यक्ति की समस्या तो व्यक्ति गांव की समस्या। और तीसरा नियम है, तो यह जो हम हमारे काम के लिए ऑफिस में जाते हैं, सभी लोग ऑफिस में जाते हैं, वो अधिकारी क्या करता है, पटवारी, वन रक्षक, तहसीलदार ऑफिस में जाता है, गुरु दक्षिणा देता कि नहीं? आप नहीं, आपको पूछ रहा है, गुरु दक्षिणा देता कि नहीं? देता है ना? हाँ, अपना काम के लिए हम किसी को ही पैसा, शराब,
मुर्गा चावल ये नहीं देंगे, अगर देंगे तो रसीद भी एक बिगर नहीं छोड़ेंगे। ऐसा हुआ, ये सर्वसहमति से हुआ ये है। और दूसरा सरकारी योजना आता है तो सरकारी योजना का लाभार्थी का सिलेक्शन ग्राम सभा में ही करेंगे, किसको देना किसको नहीं देना वो करेंगे, वो भी और ग्राम सभा से हमने लिया है, ऐसा मैं मानूंगा। दूसरा नियम है कि शराब निकाल के नहीं बेचेंगे, खरीद कर नहीं पिएंगे। ये देखो इसका नियम क्या होता है, समझ लो, निकाल कर नहीं बेचना, खरीद कर नहीं पीना, इसका अर्थ समझ ले। आगे का ये था, जंगल में जो पेड़ है हमारे फल देने वाला है, तेंदू है, महुआ है, छाछुड़ी चिरंजीव है, आंवला है, कोई भी बूढ़ से नहीं काटेंगे, अगर और दगाली भी नहीं काटेंगे। तो काटेंगे तो उसको कितना, एक पेड़ का 10 पेड़ लगाना पड़ेगा, ये हमारा नियम है। और आगे जाके क्या इस करके देखा तो वन विभाग के अधिकारी को ठेस लगा, अभी कैसा करेंगे, वन विभाग को उनको परवानगी मांगना पड़ता है, तो वो संघर्ष चल गया। हमारे गांव में हम बाहर नहीं जाएंगे, हम गांव में ही ये काम करेंगे। तो संघर्ष हुआ वो मैं नहीं बताता हूँ, वो थोड़ा लंबा है। तो वन विभाग ने ये ऐसा वो एक आइडिया किया, हमारा संगठन गांव का हुआ तो वन विभाग का पूरा स्टाफ का संगठन हुआ, वो भी अकेले अकेले नहीं आते थे, हम भी अकेले अकेले नहीं जाते थे। तो वो क्या कि हमारा गांव में कुछ काम करना है तो हम ही करेंगे, ग्राम सभा में सर्वसहमति से निर्णय से, कहाँ डबरी बनाना है, गली ब्लॉक कहाँ बनाना है, पेड़ कौन सा लगाना है। सरकारी पेड़ हम नहीं लगाएंगे। सरकार क्या करते हैं, वो ऑस्ट्रेलिया का सूबा बोल देता है, वो कोई लकड़ी का भी उपयोग नहीं, पत्तों का भी उपयोग नहीं है कि नहीं, मालूम है ना। वो क्या करेंगे, हम हमारे स्थान में है ना, सभी जगह आदिवासी क्षेत्रों में वो भगवान ने निर्माण किया गया है, वो ही पेड़ को हम अच्छे तरह से संरक्षण करेंगे और उसका उपयोग करेंगे। हमारे पीढ़ी दादा से चल रहा है ऐसा हमारा, वो भी हम मना कर दिया। तो उन्होंने क्या किया कि वो थोड़ा संघर्ष बढ़ गया। तो कोई भी अर्जा देते हैं ना ये ऑफिस में, ये काम करना है, ये डबरी बनाना है, ये रास्ता बनाना है, स्कूल बनाना है, कोई भी ध्यान देते नहीं। उसका अध्ययन किया, इससे कोई होने वाला नहीं है। और दूसरी की लड़ाई का पद्धति बदलना है। पढ़ाई करेंगे तो लड़ाई करने के लिए पढ़ाई, बार बार पढ़ाई करना पड़ता। तो ऐसे किया कि ये क्यों ध्यान नहीं देते हैं, हम तो आदिवासी लोग हैं, हमको यह कुआं होना है, या डबरी होना है, या नाश्ता होना है, ये कोई ध्यान नहीं। हमने क्या किया, अभी वैसा नहीं करा। अर्जा देता था तो वो भी उल्टा होता था, हमको लिखने को नहीं आता, वो भी प्रयोग किया। हम एक विषय लिखना, नीचे कुछ नहीं लिखना, क्यों, वो पढ़े लिखे लोग है ना। हाँ? हमको रास्ता बनाना है, इतना ही लिखना, नीचे कुछ भी नहीं लिखना। हाँ, बराबर है कि नहीं, वो भी प्रयोग किया है। अगर ये नहीं समझेंगे तो क्या है, तुम पढ़े लिखा आदमी और सरकारी कर्मचारी। दूसरा हमने ये किया कि अभी कोई भी ग्राम सभा में ठहरा हुआ सर्वसहमति से सरकार को कोई डिपार्टमेंट को अर्जा देना नहीं देगा। अर्जा समझते हैं ना, आवेदन करना पड़ता। तो हमने ऐसे किया कि आवेदन देना नहीं, चलो जंगल में हम हमारे जंगल में पेड़ लगाएंगे और वो है ना गलीब तक वाटर सेक्टर, वो काम करने के बाद उनको पता देना हमने ये काम किया है, ऐसा उनको दे देना। दौड़ के आते थे वो लोग, और वन विभाग के लोग देख उनके, यहाँ तो तुम्हारा अधिकार नहीं है। किसका अधिकार भी, अधिकार किसका है, किसका जंगल है? वो बोले सरकार का। सरकार कहाँ है, तुम है क्या, हम नहीं है। सरकार कहाँ है? वो दिल्ली और बम्बई में। कौन जाता दिल्ली और बम्बई में? हमारे गांव में हम ही सरकार, हम हमारे लिए किया है। वो श्रमदान से किया, श्रमदान का हमारा काम हम ही करेंगे, ये हमने किया। तब उन्होंने इतना एक बोपस पत्र बनवाया, रेंजर को दे दिया, रेंजर ने डीओपो को दे दिया, डीओपो सीसीएफ को दे दिया। सीसीएफ और डीओपो दौड़ के लोग आए, दौड़ के आए और उसमें हमने ये किया
कि उन्होंने मान्य किया ये काम हमारा तक इन्होंने किया गया है, ये सब तो वो भी सक्सेस हुआ। दूसरा है कि तुम्हारा योजना हमको नहीं होना। देखिए कि कितना ये मानने के एक आदमी का नहीं है, सरकारी योजना नहीं होना, तुम्हारा नरेगा का काम नहीं होना, तुम्हारा क्यों नहीं होना, रोजगार नहीं होना, रोजगार होना, लेकिन हम रोजगार छोड़ के तुम्हारा पीछे आना पड़ता है। हम क्या गुनाह में क्या नहीं आएंगे आप? तो इसका अर्थ यह है अध्ययन करके ही आप खुदा हुए। योजना पहले क्या करते थे, दिल्ली और बंबई का योजना गांव में लागू करते, लोगों का सहभाग, सरकारी योजना लोगों का सहभाग। अभी वो कैसे बदल गया, हमारा जनता का योजना सरकार के और सहभाग। जो ग्राम रोजगार हमी का है हम ही बनाएंगे, हम साइट सिलेक्शन प्लानिंग एस्टीमेट हम ही करेंगे, हमारे लिए हम कर रहे हैं ना। तो उसमें भी ऐसा हुआ, कैसे क्यों क्यों नहीं कि हमको काम ही नहीं मिलता है ना, समय पर मजदूरी नहीं मिलता, तो वो भी हमने कम कर दिया, वो भी किया। ये ऐसा नहीं है कि हम मोर्चा निकलेंगे ये करें, मोर्चा मत निकलो। अभी वो अधिकारी लोग वहां जाएंगे, मंत्री को भी बोलेंगे कि ये क्या है, हम तुम्हारे इसमें क्या प्लानिंग किया गया। उनको समझ में आया ये तो बराबर है, लेकिन सरकार मानते नहीं। कौन सा सरकार नहीं मानते, दिल्ली और बम्बई क्यों नहीं मानते, वो पढ़े लिखे नहीं है सरकार, काय के लिए सरकार बैठे हैं। तो हमारा सरकार उनको बताएंगे हम पहले कि तुम पहले, गली पहला है या दिल्ली पहले। तो गली है इसलिए दिल्ली है, दिल्ली है इसलिए गांव है, ऐसा नहीं है, ये समझिए। इसमें उनको तो अच्छा लगा कि ये तो ठीक है, ये 5 उंगली से 2 उंगली अच्छा विचार करने वाले लोग हैं, पॉलिटिकल साइंस वाले भी है, अधिकारी भी है, सभी जगह अच्छा है। दृष्टि होना चाहिए, दृष्टि होगा तो सृष्टि दिखेगा, दृष्टि से नहीं तो सृष्टि कैसे दिखेगा। वो फिर वो धीरे 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 एक एक पंजर पर जाके ये पूरा एक गांव को दबा देंगे, ऐसे कुछ लोग बोलने लगे। अब एक गांव ग्राम सभा को दबा देंगे, लेकिन कानून का बाहर जाके काम नहीं करना चाहिए। कानून किसके लिए बना, वो कानून हम इस्तेमाल किया, दूसरा कुछ नहीं किया वहाँ। हाँ, कोई ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, अब संगठित होता है और ऐसे हमारे जाने माने लोग यहाँ बैठे हैं, इनका ही सहभाग हुआ तो किया, तो वो भी हो गया। अभी क्या हो रहा है, अभी तो पेशा कानून आया, वन अधिकार कानून आया, ये हमारे मराठी में क्या बोलते हैं समझते ना, कानून है ये जो पेशा कायदा, वन अधिकार कायदा, रोजगार हमी कायदा, तुमको किती झाला फायदा, तुम्हाला किती झाला फायदा। ये ऐसा हुआ तो उनको भी मालूम नहीं है, ये अधिकारी को सिर्फ वो आदेश का पालन कर रहे हैं, नहीं तो जानबूझ के टालाटाट कर रहे हैं। हमारा पगार भी कम होता नहीं, कुछ होता नहीं, हम काय के लिए इसके रिक्स लेंगे। तो उनको हम मालिक तुम नौकर, मालिक नौकर को काम पे लगाना है। अगर मालिक को जानकारी नहीं होगा तो नौकर ही का डाले पूरा, इस तरह से वो हुआ। तो वो फिर अभी एक एक इशू पर, छोटे छोटे यूनिट पर, बड़े पैमाने से नहीं करना। एक लड़ाई जैसा है कि ये सब हुआ। और संविधान के बारे में मैं बताता हूँ, इससे मैं रुकूंगा। संविधान पढ़े हैं आप, तो सब लोग संविधान बहुत लंबा लंबा भाषण देते हैं। हम ज्यादा संविधान नहीं पढ़ते हैं, हमको पढ़ने के लिए नहीं आता है, हम सुनते हैं। हमारा आदिवासी को ये स्वशासन सिखाना कोई जरूरत नहीं है, जनतंत्र मत सिखाओ आदिवासी को, उनका पहले ही है, वो कागज में नहीं है, जीवन में है। काम करते समय ही उनके हाथ में संविधान है। संविधान वो क्या है, तो 60 में वो तो देते हैं कि संविधान हमको नहीं आता है। ऊपर लिखा है हम भारत के लोग, क्या काम कहाँ करें, इसका ये करें। नीचे में जो लिखा है 26 जनवरी का, 26 जनवरी 1949 को ये संविधान क्या अधिनियम करके सब स्वतः प्रति, मराठी में बोलते स्वतः प्रति अर्पण करित आहो। किसी को दिया है क्या, किसको, प्रधानमंत्री को दिया है, ऐसा लिखा है
राष्ट्रपति को दिया है ऐसा लिखा है क्या? कोई पक्षी का नायक कुछ है? हम भारत के लोग। इसी बात पर हम दिल्ली मुंबई हमारी सरकार, हमारे गांव में हम ही सरकार, दिल्ली मुंबई का सरकार को एक अधिकारी छोड़ दिया और हमको हमारे गांव में हम ही सरकार को पकड़ा उन्होंने और हमको इतना डांटा। क्या शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया? हमारे गांव में हम ही बोलने वाले लोग तुम देशद्रोही है, ऐसे बोलने लगे। और वो क्या किया? अपना रूम में हमको 5 महिला 5 पुरुष को जोड़ के 1 घंटा जापा, किसी को आने को नहीं दिया। 1 घंटा जापा हम विचार करके गए थे, ये तो इंग्लिश बोलेंगे, हिंदी बोलेंगे, कौन सा है संस्कृति, कौन सा संस्था का पता नहीं, कुछ भी बोल सकते हैं। इस समय हम क्या करेंगे? किससे सीखेंगे? आदमी से मत सीखो, वो कॉलेज का नॉलेज मत उपयोग करो। किसके? कछुआ जो होता है वो कछुआ संकट के वक्त पूरे इंद्रिया अंदर लेता है। इनसे सीखो, कुदरत से सीखो। तो वो क्या चुपचाप बैठा, इतना गंदी गंदी बात उन्होंने गाली दिया कि ऐसे सुनने लायक बात नहीं था। और वो तो आईएएस और अधिकारी, ऐसे बोलने का उनको अच्छा नहीं था, लेकिन हम सुन लिया, चुपचाप रह गए। तो उनका दिखता है इतना, उनका आग वगैरह इतना गुस्सा था। और 1 घंटा जापने के बाद उसमें क्या हुआ? अंदर जो खराब हवा था वो 1 घंटे में बोलते 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 पूरा बाहर गया और शुद्ध हवा प्रवेश की। जब वो शांत हो, अब भी कैसा करेंगे? ये नरम है क्या गरम है ना? क्या बोलेंगे? ज्यादा बोलने से यहाँ नहीं जमता, तो हमने ये किया, 2-4 लोग गए थे, उनके सामने बोलना मुश्किल है। ये किया कि एक ही शब्द बोलना, वो समझेंगे तभी दूसरा शब्द लेना। अगर तुम टीचर हो तो वो छात्र को समझ रहे या ना रहे, ये पहले तो वो टीचर को अध्ययन करना पड़ता है और वो छात्र को ग्रुप बनाना पड़ता है, तभी वो टीचर सिखा सकता है। वैसा ही ये है। उनको बोला कलेक्टर को, तो साहब हमारा गलती हो गई साहब, ये बोलना है ना, गलती हो गई। उसका चेहरे में अच्छा लग गया, थोड़ा बदल गया। तो हाँ मैं जो बोला है ना वही इन्होंने माना, ऐसा उनका। हाँ आगे जाके हमने, साहब आपका तुम 1 साइड बोला साहब, वो सवाल समझ का। मैं कैसे 1 साइड बोला? तुम 1 साइड बोला कैसे? हमारे गांव में हम ही सरकार तुमने बोला, तुम्हारा कैसा है? हमारा वैसा नहीं है। कैसा है? दिल्ली और बम्बई हमारी सरकार, हमारे गांव में हम ही सरकार। ये तो थोड़ा तो समझ में आता है, लेकिन पूरा नहीं आता। वो उनका वायरस ज्यादा होता है ना, उसमें ज्यादा समझ में नहीं आता। फिर हमने क्या किया? शॉर्ट में हम भारत के लोग जो है, संविधान के ऊपर का जो देखते, कलेक्टर का पीछे है कि नहीं, देखा कि नहीं, ऑफिस का पीछे रहता है वो संविधान का। हमारे है इसमें है हम भारत के लोग, ये संविधान है हम भारत के लोग। इसका अर्थ क्या है? हम यहाँ जो बैठे हैं, ये यहाँ जो बैठे हैं, तो ये हम हैं, मैं नहीं। तो उसको क्या किया? हम इधर यहाँ बैठे हैं, हम आम्ही, मराठी में आम्ही कोणी सर ये बसा आहे सर, हे समजावून सांगाल का? मी मराठीमध्ये सांगतो म्हणजे तुम्हाला हे, हा इथं बसलेले आम्ही गाव, हा सुने ना, हा आम्ही इथं बसलेले आम्ही, हा गाव आम्ही, तालुका आम्ही, जिल्हा आम्ही, राज्य आम्ही, देश आम्ही आणि पुरा जग आम्ही। जगामध्ये आम्ही आहोत, जग आमच्यामध्ये आहे। विश्वामध्ये आम्ही आहोत, विश्व आमच्यामध्ये आहे। कपाळाला हात टोकला कलेक्टर, अरे बाप रे, विश्व में पहुंचा दिया हमको। बोलो अभी क्या करना है? मैं आता हूँ। हम तो प्रतिनिधि है, हमारे गांव में हम ही सरकार, ऐसा बोल दिया। वो आया, बैठक, काम भी कर दिया। इतने मैं उठता हूँ। और ग्राम सभा सुप्रीम है, पूरा ग्राम सभा बिना 1000 बीमारी 1 दवाई, ग्राम सभा सुप्रीम हाई कोर्ट। लोकसभा, विधानसभा, ग्राम सभा, विधानसभा लोकसभा का जननी ग्राम सभा। इतना ही बोलता हूँ, अभी मैं बंद करता हूँ। नमस्कार।
धन्यवाद देवा जी आपके इस सुंदर इंसाइट के लिए. He has spoken very interestingly about few areas. I just would like to highlight. One is about the contradictions that exist in our world between the rich and the poor, the government and the people, and a lot of other things that he mentioned. Then he also highlighted a few things about ownership. We've been talking about ownership all this while. Gram Sabha, he stressed on the Gram Sabha, and then he also highlighted a few provisions of the Gram Sabha, the rights that are given in the Gram Sabha to the Gram Sabha. Then he gave a call that education must be for agitation. So not education for the education's sake, but you must do something with the education that you have. Then he also stressed the fact that it is we who will be instrumental in bringing about changes in our world, not the government. It's not top to bottom. It starts from here, below. That's a dynamics very different from what we are used to listening to. Then, like the example he cites that, well, we prepare the projects, not the government. Normally what happens is the government prepares the projects and imposes on us. This is what you have to do. But we must make sure that we prepare the project as per the power that has been entrusted to us by PESA Act, and we must put them into practice. Then he talked about PESA Constitution. Well, in the words of Jaipal Singh Munda, you may remember that we are not here to teach democracy to the people, to the tribals. They are the ones who are more democratized. They have the most democracy. They are more democratized lot. Okay. The democratic people. And well, we are ours is the village, and we are the government. He stressed this in various ways, and he also at the end said that teacher emerges when the student is ready. Government, we cannot make the government our students. So, well, with these, I think आपको बहुत बहुत शुक्रिया देवा जी, बहुत धन्यवाद आपके इनपुट के लिए. Thank you. Then we will move on to Buddhan Kumar Singh. His inputs will be on understanding the local governing systems in the context of Kolhan. Okay, let's hear from Kolhan. Thank you, Chair, Father J.V. Soren, and all the dignitaries, intellectuals, and highly experienced, I should say my guardians or the professors gathered here. Johar to everyone. So I will be talking about the understanding the local governance system in the context of Kolhan, coexistence of traditional colonial legacy and panchayat system, local governing dynamics in Kolhan. Since my work is still in progress and with my limited understanding of Kolhan, and there are already people here who are more knowledgeable than me, but it's my humble attempt to understand Kolhan context, the governing system of Kolhan.
Kolhan is situated in the Simbhum district in Jharkhand. The Ladka Kols or Hos predominantly occupy the region and have permanent residents there. The Ladka Kols are Ho tribes, also called as Ho Munda, belonging to the Austroasiatic linguistic group. In other words, Kolhan is also referred to as Ho Disun, the land of the Hos. Despite being rich in natural resources and minings, which contribute significantly to the country's economy, the native people face poverty, backwardness, and also disturbances by the Naxalite movements. Let me take you back to the history of Kolhan, pre-British era. In pre-British era, Kolhan boasts a rich and proud history marked by a fervent struggle for independence, autonomy, and self-rule. Historians and scholars widely acknowledge that Kolhan has never been subjugated to external rules, whether by Marathas or Mughals or any other kings. According to the historical accounts, the Hos, who are believed to have separated from their Munda brethren in Chotnagpur, migrated southwards and established their independent lives in Kolhan area of Simbhum. Legend has it that the Hos possessed an intense passion for exclusion and isolation. For centuries, they maintained strict control over the territories, not permitting any strangers to settle or even pass through. Even pilgrims en route to Puri had to take circuitous route, spanning several days to avoid Kolhan. Even Britishers believed that traversing the whole country resembled entering a tiger's den, emphasizing the formidable and guarded nature of the region. Kolhan maintained its autonomy until the Britishers invaded the region, reportedly at the invitation of Purahat king, with the intention to subjugate the Hos and bring them under external control. The Hos, however, were staunchly opposed to accepting any form of outside supremacy and adamantly refused to pay taxes. Their belief was firmly rooted in the conviction that the rivers, forests, and jungles, which today we say as slogan Jal Jangal Jamin, were the providence of nature and Singbonga. This resistance to external rule and taxation reflected the Hos' deep connection with their natural surroundings and their spiritual beliefs. The British intervention marked a significant shift in the historical trajectory of Kolhan, leading to a period of change and challenges for the indigenous population. British invasion and Kol insurrection. The company launched an offensive against the Hos in collaboration with the Rajas of Purahat and the Jamindars of Simbhum, with the aim of suppressing them. This marked the beginning of the first Ho revolt in 1820 and 21, which eventually escalated into the significant Kol insurrection of 1831-32. The uprising was a notable resistance by the Hos against external forces seeking to establish control and authority in the region. The event during this period played a crucial role in shaping the historical narrative of Kolhan and the struggles of its indigenous population against colonial forces. Formation of Southwest Frontier Agency in 1834. All these revolts prompted the British authorities to recognize the need for new arrangement to tighten their hold in the area. Regulation 13 of 1833 introduced an administrative unit known as the Southwest Frontier Agency, established in 1834 with headquarters at Kishanpur, today we call Ranchi. This new jurisdiction was placed under an officer known as the agent to the Governor General, who would administer justice and oversees the police and revenue services under new rules specifically framed for the area. Recognizing the general laws and regulations intended for more advanced district of Bengal and Bihar were not suitable for the Adivasis areas, the entire Southwest Frontier Agency was declared as non-regulation area and exempted from the administration of general laws. Captain Wilkinson was appointed as the first agent to the Governor General, and the district of Simbhum was added to the agency. One of the most significant outcomes of establishing the agency was the implementation of regular system of police and court officers. Police stations were established and began to maintain the
maintained at the southern with appointed police officers overseeing law enforcement in the region. It was in 1837 under the British agent, specifically Thomas Wilkinson, as an agent to the British Governor General, that the British were able to establish the supremacy over Kolhan through a sheer brute force and the implementation of the divide and rule policy. The most significant revolt occurred under the leadership of Porter Home, and it unfolded in Sirimse Ghati. This revolt is fondly remembered by the hosts of Kolhan. The uprising garnered spontaneous support by numerous hosts, and rebellion rapidly spread like wildfire throughout Kolhan. This is interesting narration of 1837 Battle of Kolhan, which happened in Sirimse Ghati, but since there is lack of time, so I will not say. So after the subjugation of hosts, the agent Thomas Wilkinson wrote to one of the monkeys of Kolhan. It was Jamdar Manki of Asura. It was written as follows: Be it known to you that you have been appointed Manki of Gumrapir. This summons as presented to you according to the sanction of agent to the Governor General dated the 10th December the present year. In accordance with your promise before the agent, you will be held responsible for all the matters concerning the village under you, such as theft, murder, robbery, etc. If the revenue of your ilaka is not paid in proper time, you will be held responsible for it, and it will be realized from you. It will be realized from you. Hello. You should not knowingly let off guilty persons by taking bribes or on the consideration that they are your relatives. If you try to conceal guilty persons or say also any partiality, you will be taken to task for it. You will at once inform when a theft, murder or dacoity is committed in your ilaka. So basically, it was hukuknama, which means commandment by the British to the Manki. So basically, they were ordered to obey all the rules which been ordered by the British. There were some of the features which was to help the Adivasis is to protect them from the lawyers which were been prohibited. Lawyers been prohibited from practicing in any of the courts of the agency. And also Wilkinson rule was regarded to the sale or transfer of land on account of claim for rent, which would be legal only if previously authorized by the agent or his assistant. Basically, land transfer also at the time in 1837 itself was protected by Wilkinson rule of the horse. But at the same time, the Adivasis also realized that earlier the Munda system before Wilkinson rule was they were independent. They were governed by themselves. There was autonomy. There was sovereignty among the Munda Manki. But after the British came, they were subjugated and they just became police or the landlords appointed by the Britishers to collect the taxes. And the bond was signed with Jamdar Manki of Asura with the British on 11 December 1838, which is called Hukuk Taba, according to which in Kewat number 1, Secretary of State, in Kewat number 1, it was Secretary of State for India in Council, and Kewat number 2, Manki, and Kewat number 3, Munda. So that means the father figure or the Malik was the British, and after that the Manki comes and the Munda.
So, yeah, monkeys and mundas have been given powers and privileges via this Hukunama. So, I will not be saying that. But so, basically, the management system had two main goals: to exert pressure on the paternal government through the village communal system, and secondly, to keep Kolhan as a reserve for the horse. It was critical that the monkeys and mundas be under the control of Deputy Commissioner of Singhbum district in order to achieve these goals. And after CNT Act implementation, the monkeys and mundas were recorded as tenure holders under the CNT Act, which means monkey munda became the sole holders. So post independence, there were so many unrests in Kolhan area, especially in Singhbum. Like Kolhan Raksha Sangh came up in 1970s. After post independence, there was Jharkhand movement also. Simultaneously, Jharkhand Kolhan Raksha Sangh also started demanding for Kolhan government estate in Kolhan. And there was Jungle Katai movement in late 1970s, which was against the resistance against the forest departments, which tried to capture the tribal forests, which the tribals were not ready to accept. So the tribals started cutting the trees when the forest department started planting saguan trees in the place of sal trees. And also there was again sometimes like Ramo Birwa was there, and recently in that January 2022 there was, in the name of Kolhan government estate, the fake recruitments of Kolhan police and teachers of all languages also took place, but they were put under the legal terms. So let me now come to the three local government systems in Kolhan. As we know, in the Kolhan, the Pancha system and the bureaucracy. In Kolhan, as I said, it is a monkey munda system. There are three different systems of Kolhan local governance in Western Singhbum that interact from three different perspectives. The first is the traditional Munda Monkey or Kolhan system. This has officially been operational since 1836-37, when the British colonial officers finally, after several rounds of fierce encounters with the horse, subjugated them and employed the traditional village heads of the horse, such as the Mundas, the headman of a village, the Manki, the headman of cluster of approximately 10 to 15 villages. The power and authority of Mundas and Mankis have been derived from the concept of the patrilineal hereditary Kurshinama, or the record of rights over the piece of land possessed by the founding lineage Putkantidar of the village. Accordingly, the eldest son of the Munda or the Manki inherits the office after his father's death. This system has been very significant in the host community life. However, over the years, especially during the British and post-British colonial period, when the pan-Indian district and block development administrations were installed, the host traditional system began to lose its significance, although it is still significant in a limited way for a section of the whole society. There are many different processes and reasons for the traditional system losing its relevance for today's individual Ho and the society as a whole. The second system of local governance is the pan-Indian bureaucratic district and block development administration. This system was installed since the 1950s to administer each district. The district collector is the administrative head of a district, who oversees the functions of number of lines, departments such as irrigation, water and sanitation, health, education, welfare, road, transport, etc. The district administrative head
or the DCs are persons who qualify IS competitive exams. The DCs department heads and other heads of all government offices till the block development offices placed in West Simbhum have been persons from any part of the country except from West Simbhum. This means that all department heads have mostly been non-Adivasis and definitely non-Ho. Recently, Simbhum has a few Adivasis or Ho BDOs and a few Adivasi department heads. Being a non-Adivasi, these persons generally have less concern for Adivasi welfare, more prejudice about Adivasis, and most of them have thoroughly been corrupt. Naturally, the outcome of all development initiatives, including huge sums of financial resources being allocated for the development of the district, have not benefited the deprived majority masses within the Ho and other marginalized societies in the district. The third comes the role of democratically elected representatives of local people, the system of the Panchayati Raj. Panchayat traditionally meant a decision-making body at the local level constituted by the 5 respectable men called Pancha at hamlet or village level. The concept of Gram Panchayat for local administration was officially recognized and introduced by various regional states in India since her independence. The United Bihar state, of which Jharkhand was part till November 15, 2000, was one of India's first states that introduced the Bihar Local Self-Government Act of 1947, soon after India's independence. This act proposed for a two-tier structure at the district and the village levels. In order to set up panchayats at the block and district level, the Bihar Panchayat Samiti and Jila Parishad Act 1961 was passed. Thus, a three-tier structure was operational in the state of Bihar since 1971. However, its implementation was mostly ineffective, especially in predominantly Adivasi regions. This is evident from the fact that Bihar government has not held regular elections to its local government bodies since 1972 till 2000, when Jharkhand was carved out of it. Even after Jharkhand became a separate state, it took another 10 years to implement Panchayat election. In 1993, with the 23rd Constitutional Amendment, the Indian government officially introduced a three-tier Panchayati Raj system at district for local self-governance to be effective in all states. According to this system, every district in India, regional states, would have democratically elected representatives. These elected representatives would form a district Panchayat council. At the district level, block level Panchayat council, and at the lowest level, a Gram Panchayat, which is constituted by wards with which elected heads named as ward members. While a pan-Indian Panchayati Raj Act 1993, which provided Panchayati Raj institutions with constitutional recognition, functioned uniformly among the general population, a later constitutional amendment was made, that is, in 74th Amendment in 1996. This introduced an additional act to extend the provisions of Panchayati Raj Act in 1993 into the so-called scheduled areas. This additional act is called the Panchayati Extension to the Scheduled Areas in Act 1996. The Central Paisa Act 1996 makes it mandatory for the state governments to schedule areas to formulate the state's Panchayati Raj Act with provisions to constitute panchayats at all three tiers, which would incorporate and facilitate the cultural values and traditional customary practices of Adivasi inhabiting in every pockets of the state. One of the main provisions in Paisa is to have all powers to be vested with the Gram Sabha to take control over the resources in its geographical area. However, the mineral-rich states of Jharkhand, Chhattisgarh, and Odisha had not included these provisions explicitly in their respective PR Acts till recently. The reason for not doing this is the most of the mineral and natural resources deposits are concentrated in predominantly Adivasi regions. Furthermore, if the Gram Sabhas are given powers to decide how to use these resources, the state and its supportive capitalist forces would not be given a free hand to continue the exploitation of resources in scheduled areas as it has been happening. So, could you wind up, sir? Yes, sir. I will try to see how the gradual changes happen after the Panchayati Raj
system came into whole area of the affected the Wilkinson rule. The position of Munda Manki in the traditional Ho society has been very important since the beginning. So when the Panchayati Raj Act and the election of Mukhyas at the Panchayat level were introduced, there was a problem, in Wilkinson rule, the Manki Munda system, in the Manki Munda system, the Mundas and the Mankis, they were not being elected, they were selected with the common consent of the people. But in the Panchayati Raj system, it is the democratic way of doing, but they were being elected and there is a competition and the corruption being involved in that. Money is involved, as you say, Murga, Daru, ye sab. So that has affected the Panchayati Raj. The corruption has been brought to the village level. But at the same time, the participation of women in the Panchayati Raj system has got a space. Whereas in the Manki Munda system, there is, it is hereditary and the women or women are not being entitled or women are not allowed to become Munda or Manki. So, thank you and thank you for listening. This was my humble attempt to. Thank you, Sinku, for your presentation. I think we can recall 2 things before we proceed ahead. पहला है कि विल्किंसन रोड के बारे में, कि व्यवस्था के बारे में उन्होंने कहा है, जहाँ पर 2 चीज़ें विशेष मूलता हुई हैं. एक है कि लैंड ट्रांसफ़र पर पाबंदी लगी है और मुंडा मानकी सिस्टम को ये मान्यता मिलेगी. ये 2 चीज़ें हुई थी विल्किंसन रोड के साथ. उसके बाद में बहुत सारी बातें हैं. देयर वाज अ पीरियड ऑफ ट्रांजिशन, लेकिन अभी पंचायती सिस्टम के आने के बाद में वो देख सकते हैं कि जो पहले की व्यवस्था विल्किंसन रूल में जो व्यवस्था थी और अभी की जो व्यवस्था है उसमें थोड़ा सा गैप है, अंतर है, वो देख पा रहे हैं. कहते हैं तीसरी बिंदु पर उन्होंने कहा कि ये चुनाव व्यवस्था आने के बाद में कुछ परिवर्तन और दिखने लगा है. करप्शन की बात उन्होंने की है. ये 3 बिंदु बोलता उन्होंने अपने प्रेजेंटेशन में रखा है हमारे सामने. थैंक यू. May I now invite Honorable Lahu for your presentation? Okay. 20 minutes are yours. Yes. Good afternoon, you all. Respected moderator, or organizing committee, privileged to present my paper. Topic of my today's presentation is indigenous knowledge practice on governing the common land and evidence from unarmed Naga tribal communities. I'll divide my next slide. I'll divide my PPT presentation into 5 sections. 1, introduction. 2nd, methodology. And 3rd one, it's a case study, data. And then the 4th one is finding and discussion. The fifth one is the concluding remarks. This paper is a part of my PhD thesis, and then it's one of the data chapter which I've converted into paper article. Next slide. So before going to my topic, I'll just lay the governance systems that's existing in Manipur. So when we talk about Manipur as a state, geographically it's divided into two parts. It's hill areas and then the valley areas. So the hill areas, it's
It's under the Article 371C, also known as Hill Area Committee. There's a distinction between whether Manipur is coming under 5th schedule, 6th schedule. So it doesn't come either in the 5th or 6th schedule, but it's under the Article 371C, and this Article 371C has certain autonomy, but also has when we talk about autonomy, there's a judicial autonomy, but financial autonomy is not there. So many a times the tribal community has been trying to propose more of like a 6th schedule district councils, but this has been rejected by the state government all the time. And one of the cases 2021 where Autonomous District Council Amendment Act of 2011 was proposed, but it was rejected by the state government because there are higher MLS in the Manipur Parliament. Yeah. And there also somehow the contention of the conflict that's happening in Manipur itself. So yeah, the valley is governed by the MLR Act, this Manipur Land Revenue and Reformation Act 1960, and the hill areas is governed by the Village Authority Act 1956, the Hill Areas District Council Act 1971, and Article 371C Hill Area Committee. So again, there's two common tribal communities existing in Manipur. Those are the Nagas and the Kokis. So the Nagas practice mostly the community way of ownership, and then the Kokis they practice the chieftainship ownership of governance system. And then coming to the concept of commons now. So this concept of commons, because it's taken from the Western concept, and in the 13th century where the England they started movement of enclosure of these common lands for the cultivation and grazing ground. So it's somehow problematic, but then I try to operationalize or conceptualize the concept of common, looking at the perspective of the indigenous community and coming from my own Naga community. So common means commune, meaning both give and counter give, which implies we receive freely and also we need to reciprocate by safeguarding the commons. There's a Bowler 2014. So the study generally classified common as a category of resources akin to private and public goods. Some may perceive as unclaimed territory, such as untouched forest or unoccupied land between national borders. Also, unclaimed land or res nullis referred to as anything that can be owned but yet to be subjected to any legal regulation. Other views, commons as things shared by humanity, such as fish, air, outer space. These are the various communities belonging to everyone. So mostly people think common as open resources. That we'll discuss more when we go to the theoretical debate. So this common governance is recognized by the Indian Constitution under the 5th, 6th schedule and Article 243M, 2441, 2442 and 371. And it has contributed a lot in the overall well-being of the tribal communities and preservation of their traditional practices, protect the environment, and uphold the spiritual connection and meet their daily needs locally. Next slide. So coming to the theoretical debates. So when we look at the literature of commons, you'll find two main figure, Hardin. So Hardin 1956. Yeah, Hardin 1968 tragedy of commons. He talks about the metaphor of grazing land, where any resources which have individual interests, which will eventually deplete because there will be individual interests prioritized instead of the community interest. So when he gives an example of a metaphor of the grazing ground where
everyone started, for the profit of themselves, they started owning lots of cattle to graze that land. And eventually, when there's no rules or regulations set, and many people can come and then, graze the cattle, then eventually the resources deplete. So he gave that example and said that in order to avoid this kind of problem or issue regarding the commons, then it should be nationalized. Like state government has to take care. That's one proposal he made. And then second thing is that it can be privatized. When something, property or goods are privatized, then it can be managed better. So he proposed this, and then this has been like the theory or the solution he proposed has been part of the global management system of resources. But then Ostrom came in 1990s and she critiqued the idea of Hardin about the commons, where she talks about, the meaning of commons Hardin was talking about is mostly the concept of open resources. So it's open resources, so when we talk about open resources, there's no rules or regulation on who owns it. But when we talk about the concept of commons, there are community who owns the resources. And the community has their own way of managing the resources. They set their own rules, regulation, and they manage their own resources effectively instead of the private or the government influence. So she critiqued the work of Hardin and proposed that the idea of community-based resource management. And with the evidence, she studied across the globe regarding how commons are managed in the world. So but then her work on common has been very significant impact on understanding sustainable resource management across the world. But however, my critique on as Ostrom works on common is that though Ostrom theory talks about the, provide the available insight, it may need to be adapted to better incorporate indigenous perspective. She doesn't focus much on the indigenous perspective where our customary laws or traditional knowledge practices are embedded in our cultural practices. But she doesn't focus much on this, but she focuses more on the creating new institution where the laws can be made. But my critique is that indigenous communities have their own rules and regulations depending on the context, place, and setting. So instead of proposing that principle where effective management of resources can be done, she should focus more on the indigenous knowledge practices and the customary practices of the indigenous community. And for that reason, I have used the indigenous lens adopted from the indigenous perspective, drawn on the works of Linda Smith, Julian Go, Ketji, and then Fraser also adopting a perspective from within framework, Alexa Cook. So I've used this perspective from within plus the indigenous lens to understand how my own Anal Nagar community govern their commons. Next slide. This is the theoretical framework, indigenous lens. I don't know whether it's visible or not. So I've talked about this behavior, principle and values, and also relationship and worldview, where all these four themes combined form the indigenous lens. And with this lens, there's a holistic approach of managing resources, and also that ecological services provided by the commons, and there's embeddedness, sustenance in managing these resources. And the outcome is that there's ecological imbalance and equilibrium between the human nature spirit, continue having reverence for the nature and spirit, and continue dependence on natural land, forest, and natural environment for sustenance of the well-being. Also, protection of land and resources from outsiders, continued practice of socio-cultural tradition and practices embedded on land. Next slide.
So the methodology I've used is Anal Indigenous Communities land, where I've used the qualitative case study approach, which aim to study the lived experience of the Anal Naga communities. And I've used primary data interviews, discussion and observation, secondary data journals, books, and researcher. My positionality here is that researcher being a part of the research, as I belong to the Anal community, so I've used imic perspective. And I've adopted purposive sampling and open-ended questions because I have to interview people who knows the indigenous knowledge practices for my community. So Anal Naga tribe worldview, we believe that Mother Earth is the ultimate source of life. This one I have covered in my PhD thesis, first chapter, worldview. So we believe that all the life came from the source of Mother Earth, emphasizing interconnectedness, viewing all life as unified whole, and rooted in systematic intergenerational knowledge, prioritizing harmony with nature and spiritual well-being. Drawn from the Anal Naga tribes' life experience and their worldview, center on interconnect human nature spirit framework in exploring the tribal culture, customary and indigenous knowledge practice in governing community. Next slide. Now, governing the land in common, customary practices. When we look at the common land, so there's a relational concept of common land to community well-being. It's the overall well-being of the community which bring that attachment with the land. And the philosophical view that Mother Earth is source of that I have mentioned, an emotional and physical attachment to the earth land we live in. Spiritual belief system, recognize and respect the spiritual being exists in nature. That's animism. We practice animism, that the spirit exists and then we have to give respect to the spirit. And the spirit won't disturb our inhabited areas. That principle and belief we have. And principle and values, we practice equity, distribution of resources, self-governance, democratic and republic, community ownership, community participation in decision making, which will be reflected in my next discussion. So, utilization of common land. I've interviewed one of the elder from Lamphau Charu. His name is, we call it Bu Aril Lumring Anal, 75 years old. Explained three primary purposes of using this common land. Those are the settlement areas, agricultural activities, seasonal livelihood sustenance. Next slide. So I've created this figure drawing the knowledge. Where the first circle, it's the settlement area, the inhabited areas of the people, of the villages, where homestead lands there, public grounds there, and churches are constructed, community halls are constructed. Also roads. And the second zone, it's more of it's a conservation of forest areas, where there's also an interface between the spiritual realm and the human realm. So, for instance, there's a forested area called Sukom. We call it Sukom, where the village priest has to pacify many a times the malevolent spirit, and chase the malevolent spirit from the inhabited areas and drive away the spirit to that Sukom area, the reserve forest area. So there's interface regarding where the spirit exists and then the human exists there. I won't explain the whole thing. Next slide. Yeah. So governing settlement areas. When we talk about settlement areas, it's defined by the how we migrated also. There's a whole story about how we migrated from the Upper Burma areas, come to the Chin Hills, and then come to the present location at Chandil district. So the rationale behind the identification of settlement area was
back to me by R.L. Lumring Anal again. There's a rationality behind indigenous knowledge practice of this common settlement area. It's carefully planned grounds for residents, communities, and essential facilities foundation for communal living and cohesion. So the factors involved are like in the hill areas, they will be chosen location where in hill areas, but which is a little bit gentle slope where house can be constructed. And then the main criteria given to settlement area is the availability of the water, mostly the spring water. And it should be defensibility, vast forested area for June cultivation. So when we look at the location of the settlement areas, then we find the ancestral villages, Anal Kulen village, Piran Kulen village, Uglu, and Torcham, Kumbung Kulen village, all located in the hill areas, but the area where located has a gentle slope, and then availability of waters are abundant, and availability of the forest areas are abundant. And also there's a strategic significance of settlement areas of the ancestral villages, because we always have a conflict with the Kamhos, we call it Kukis, neighboring tribes. So we choose the elevated areas location to defend ourselves better. And the egalitarian practices, we follow these egalitarian practices. Pu Diwai Alam, it's about the age of 70, chief of Lambung village has emphasized egalitarian practices where distribution of settlement area is done equally, clan-wise for Jumfield, and need-based equity principles in allotting homestead land in the settlement areas freely by the village authority. So in case, if I'm going to get married, then the village authority will allot to me homestead land freely. But I can do many things in that. I can have a garden, private garden, whatever, but the condition is that I'm not allowed to sell. And if I'm going to shift to another village, then I have to either transfer that to my closest kin, or I have to revert back to the village land. Yeah. And creation of community forest reserve area, we call it Uju. So it's a local dialect, Uju. And Mr. R.D. Kowar, 75 years of Womku village, has explained the rationality behind the creation of this Uju, where the reserve forest is kept. It's mainly because of the fire breaks pathway, we call it Pilham. So there's a traditional knowledge involved in how when there's a sudden wildfire takes place, then this acts as a defense mechanism for the inhabited areas not to get into fire areas. And also wild animals trade and potential trade from enemies place to set up traps in defense. So this is a reason area where many things can be done. And like I have explained about the concept of Sukom, where ritual and spiritual practices are done to pacify the malevolent spirit and not to disturb the settlement areas. Use of community forest reserve areas. So this has been practiced not by all the villages, but some have recently started practicing the use of this community reserve forest area. I've come across the village of Maribong village, where they, since 2000, they have started practicing of raising funds for construction of community halls per se. But then they also, after cutting down of trees or forests, they give chances to regenerate again. For 10 years, they are not allowing any person to cut trees from that area. So there's a sustainability plus livelihood activities that's happening in the community reserve forest. An individual can plant bamboos, groups, and other practice gathering of mushrooms, wild berries, edibles, and roots for sustenance in this area. It's any people can go and gather mushrooms and wild berries or leaves in this area. And families who are unable to own LPG gases are allowed to practice logging of wood, 1 kela, we call it, it's a local measurement system, per year for their sustenance to
to have that logging system for the sustenance of the community, but it's not for profit making. Next slide. So yeah, governing common agricultural land known as Mulji. This Mulji, it's if we translate it to English, it's basically it's the hill agriculture. We call it hill agriculture. So the focus on this. So there's a dual ownership in this principle of Mulji. There's clan and community ownership, and diverse and food sovereignty principle is there. There's lots of things which I'll just keep it. Pamki, Visa, seed sowing, these are the ritual practices, but has been, now disturbed by the coming of Christianity. Next slide. Yeah, key observation and finding. There's changes in common settlement areas, conversion of clan lands to private land has been solved. One private land or family land, clan land has been converted into private land and sold to my uncle in Lamung village. Conversion of clan lands into Pata land to get more compensation in road development projects. That's because of the influence of the state projects, development activities. And the second one is influenced by the legal state laws, where Pata system has been come up so that they can get loan, but has also blended with the traditional practices where they are not allowed to sell to the, though they have Pata, they are not allowed to sell to the tribal communities. And then the Christianity influence has been, the ritual has been changed into prayers now, and village priests are changed by the pastors or the elders now. So concluding remarks, next class. So my attempt for this paper is that alternative epistemology where, the nature, spirit, and human relationship are reflected in this alternative epistemology as egalitarian way of resource distribution, cultural and customer practices, recognition, and community participation in decision making, which Nancy Fraser has also proposed about the 3 dimensions of justice. Transition from clan to individual ownership can be revisited, can have community dialogues and revisiting traditional practices, and resolve the issue involving community elders and leaders, strengthening community solidarity by prioritizing community interests over individual. Preserving Jum cultivation is important, and also to protect the clan community ownership of land from outsiders. So recognition of indigenous knowledge at global level, national level, and regional level and local level to effectively govern the commons and prevent from exploitation. Recognition of indigenous knowledge practice is important for the sustainable and resilient community in the face of global changes dominated by new liberalism. Thank you. Thank you. Thank you, Lagu, for the presentation. विशेष करके फोकस था कि सामुदायिक संपत्ति को कैसे मैनेज किया जाए, कैसा मैनेज हो रहा था, उसके बाद में अभी क्या क्या डेवलपमेंट्स हैं, इसी पर चर्चा हो रही थी. May I now, from there on, may I now invite the third presenter, Sunil Kumar Jojo, on customary law, the foundation for peace and good governance at 5th schedule areas in India. आदरणीय सभापति जी और हमारे पैनल मेंबर्स, सभी बुद्धिजीवियों, मैडम्स एंड सर्स, मैं बहुत खुशी हूं कि आज मुझे ये मौका मिला है इस मंच में कुछ बात रखने के लिए. मेरे से पहले बहुत सारे वक्ताओं ने कस्टमरी लॉ के ऊपर कहा है,
इसलिए मेरी बात बहुत आसान हो जाएगी, क्योंकि उन्होंने बहुत गहन अध्ययन करके बहुत सारी बातों को ऑलरेडी बता दिया है। फिर भी मैं कुछ बातों को रखना चाहूंगा, और हो सकता है ये क्या हो गया, तो मेरा टॉपिक है हमारे 5th शेड्यूल एरिया में, ये लास्ट पहुंच गया सर, उसको आप पहले कर दीजिए। कहाँ खो गया? ओके, थैंक यू। तो कुछ थॉट प्रोसेस में मैं कुछ इंस्टिगेट करना चाहता हूं कि हम लोग कुछ और गहन अध्ययन करें। तो उस हिसाब से हम लोगों ने बहुत बातें की है कि कस्टमरी लॉ क्या है। तो अब मैं आप लोगों को ये सोचने के लिए मजबूर करना चाहता हूं कि आप क्या सोचते हैं कि आप कौन हैं, हमारे समाज क्या सोचता है कि हम कौन हैं, उसके साथ दूसरे लोग क्या सोचते हैं कि हम लोग कौन हैं, और जो लोग संविधान के विशेष स्थानों पर हैं, पदों पर हैं, वो क्या सोचते हैं, और जो लोग ब्यूरोक्रेट्स हैं वे हमारे बारे क्या सोचते हैं। बहुत प्रकार के बातें कही जाती है आदिवासियों के ऊपर में, लेकिन मुझे जो बहुत पावरफुल लगा वो कि जब 2011 में सुप्रीम कोर्ट के 2 जज ज्ञान सुधा मिश्रा और मार्कंडेय काटजू, उन्होंने कहा कि आदिवासी ही भारत के असल मालिक हैं। सबसे पावरफुल स्टेटमेंट, इससे और ज्यादा पावरफुल स्टेटमेंट हो ही नहीं सकता कि सुप्रीम कोर्ट के जज कह रहे हैं कि आदिवासी ही असल मालिक है और बाकी सब बाहर से आए हुए लोग हैं। उसके साथ अगर हम देखेंगे कॉन्ट्रास्ट में, तो जब यूनाइटेड नेशंस का डिक्लेरेशंस ऑन द राइट्स ऑफ द इंडिजिनस पीपल्स UNRIP का जब वोटिंग हुआ, भारत ने उसका फेवर में वोट किया, लेकिन वहां बोला कि भारत में कोई इंडिजिनस नहीं है, सभी कोई इंडिजिनस है। कॉन्ट्रास्ट। हमारा गवर्नेंस सिस्टम का एक ग्राफ बनाने का मैं कोशिश किया हूं, जैसा कि हमारे संविधान में है। सबसे ऊपर में है प्रेसिडेंट, उसके नीचे है गवर्नर। 5th शेड्यूल के एरिया का एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल गवर्नर को दिया हुआ है। उनको सहायता के लिए TAC, ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल, फिर उनके नीचे ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट ऑटोनोमस काउंसिल 6th शेड्यूल के पैटर्न पर, और नीचे ग्राम सभा अभी जो पैसा आया है और फॉरेस्ट राइट्स एक्ट आया है, उन्होंने इसको और मजबूती दी है, और नीचे हमारे सभी 5th शेड्यूल एरिया। गवर्नमेंट के साथ हमारा कोई लेना देना नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट आदिवासी क्षेत्र के लिए कानून तो बना सकता है, लेकिन गवर्नर का पावर है कि वो उसको लागू किया जाए या ना लागू किया जाए। ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है। कोई भी कानून, जनरल एरिया का कोई भी कानून हमारे इलाका में एज इट इज लागू नहीं हो सकता है जब तक गवर्नर उसको पार्शियली और फुली या मॉडिफाई करके लागू नहीं करता है। लेकिन आज तक ऐसा हुआ नहीं। गवर्नमेंट एक वेलफेयर स्टेट के हिसाब से हमारे लिए बहुत सारे प्रावधान है, उन प्रावधान के अनुसार बहुत सारे कानून बना सकते हैं, लेकिन गवर्नर का दायित्व है ये देखना है कि आदिवासियों के ऊपर उनका जो सेल्फ गवर्नेंस का जो सिस्टम है, व्यवस्था है, उसके ऊपर आंच ना आए। इसके लिए गवर्नर का बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और उसको पूरे आदिवासी सिस्टम को सहायता करने के लिए, देख रेख करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स है, उधर ST कमीशन है,
और अभी पार्लियामेंट्री कमेटी फॉर ST and SC है। तो ये सारे उनको सहायता करने के लिए है। तो हमारा गवर्नेंस सिस्टम कंप्लीटली अलग है, स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट का दखल अंदाजी नहीं है। तो ये सेपरेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्यों, ये प्रोविजन क्यों रखा गया, ये सोचने वाली बात है। और बहुत वक्ताओं ने अपनी बातों में कुछ कुछ बातों को बता ही दिया है। हमारे लिए सारी प्रोविजंस हैं। संविधान पीस एंड गुड गवर्नमेंट की बात करता है। संविधान में लिखा है गुड पीस एंड गुड गवर्नमेंट, गवर्नेंस नहीं, गवर्नमेंट। और एंड governor has constitutional accountability. ये क्या हो गया, थोड़ा पीछे जाएंगे, इसके आगे और आगे जाइए। हाँ, तो अभी हम लोग देख सकते हैं कि बहुत सारे ये जो सेग्रीगेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है आज नहीं हुआ, ये पहले से शुरू हुआ। और इतिहास में हम जाएंगे, अलग अलग स्टेट में अलग अलग समय में ये सारे चलते आया, और आज हम संविधान में ये व्यवस्था को देखते हैं। तो ये सारी चीजों को हमको समझना है। आगे जाइए। कस्टमरी लॉ के ऊपर में हमने बहुत बात किया, लेकिन ये है क्या, बहुत सारे डेफिनेशंस हैं। मैं उन डेफिनेशन की ओर नहीं जाऊंगा। जो मुझे अच्छा लगा, जो कि यूएन डॉक्यूमेंट 1966 में लिखा हुआ है, द राइट्स टू यूज और डिस्पोज ऑफ यूज राइट्स ओवर लैंड which rest neither on the exercise of brute force nor on evidence of rights guaranteed by government statute। बहुत पावरफुल। और मैं समझता हूं कि ये हमारे कस्टमरी लॉ के ऊपर ज्यादा प्रकाश डालता है। नेक्स्ट, कस्टमरी लॉ 4 एरिया को कवर करता है: control and administration, social structure and governance, personal code and traditional knowledge. Next, control and administration. ये territorial control and administration के बारे में बोलता है। Ownership, communal management of resources, assets, आप जो भी बोल सकते हैं। Preservation of nature and environment. In fact, जितने भी विद्रोह हुए हैं, कोल विद्रोह से लेकर बिरसा मुंडा तक, सब कोई स्वाधीनता संग्राम के लिए नहीं लड़ा। वो लोग लड़ा, इसके ऊपर जब अटैक हुआ तब वो लोग ने लड़ाई किया। उनका मुख्य लड़ाई का मकसद इसको बचाने का था, टेरिटोरियल कंट्रोल, एडमिनिस्ट्रेशन। ये मुख्य बात है, इसको हम सबों को समझना बहुत जरूरी है। और यही बात संविधान में निहित है। और जितना भी कानून अभी बना है, पेशा और फॉरेस्ट राइट एक्ट, इसी के ऊपर बना हुआ है। दूसरा, आगे, सोशल स्ट्रक्चर एंड गवर्नेंस। ये हमारा व्यवस्था के बारे में बोलता है। जनरल असेंबली हम पढ़ा बोल सकते हैं, हम महासभा बोल सकते हैं। इसके ऊपर में जो लेजिस्लेशन होता है, एजुकेशन, जुडिशियरी, ये सब कुछ उसी में होता है। लेकिन हमारा जनरल एरिया में जो संविधान में निहित है, हमारा 3 पिलर ऑफ डेमोक्रेसी है, जो कि जुडिशियरी अलग है, लेजिस्लेशन अलग है, एजुकेशन अलग है, सब अलग अलग है, इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। लेकिन हमारा में सब कुछ एक साथ है और एक दूसरे से वो लोग अलग कभी नहीं हो सकते। ये बहुत अलग सिस्टम है। और उनका इलेक्शन है, हमारा कॉन्सेंसस बेस्ड डेमोक्रेसी है। तो ये डिफरेंस को हमको समझना है। और जितना भी वेलफेयर है, वो हमारा मेंबर अपना कम्युनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है और कम्युनिटी अपने मेंबर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आगे, नेक्स्ट। तो पर्सनल कोड में हम लोग काफी सारी चीजों को देखते हैं, जिनके बारे में बहुत सारे वक्ताओं ने पहले बोल चुके हैं।
जैसे हमारे जितने भी लाइफ साइकिल इवेंट्स हैं, फ्रॉम बर्थ टिल द एंड, टिल डेथ एंड आफ्टर डेथ रिलेशनशिप, बिलीफ सिस्टम, रिलीजन, वर्शिप ऑफ गॉड्स, प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस, अडॉप्शन, मैरिज एसेट्रा, ये सारे इसमें आते हैं पर्सनल कोड में। आगे ट्रेडिशनल नॉलेज, इसके ऊपर में बहुत बातें हो चुकी है। नेक्स्ट, तो इसमें हम देखते हैं जितने भी हमारे ये जो एरियाज हैं जो कस्टमर लॉ के अंदर आते हैं, ये सारे 5th शेड्यूल में, पेशा एक्ट में, FRA में नहीं थे। हम लोगों को इन कानून के जो द स्ट्रक्चर है, जो उसके अंदर में जो एसेंस है, वो सबको पकड़ना है, तब जाके हम लोगों को ये 4 एरिया में उसको हम लोग कैसे लागू करेंगे, वो कैसे हमको इम्पैक्ट करता है, उसको हम लोग समझ सकेंगे। नेक्स्ट, इतना सारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन रहते हुए क्या आज हम हमारे एरिया में पीस एंड गुड गवर्नमेंट देखते हैं? सवाल है, क्या कारण है? नेक्स्ट, अभी बहुत प्रकार के बर्निंग इश्यूज हैं हमारे इलाके में, इससे भी और है, बहुत ज्यादा है, लेकिन मैंने उनको यहां लिखा नहीं है। लेकिन वो लोग वो और पॉइंट्स जो भी आएंगे इनके अंडर ही आएंगे, जैसे हो गया ह्यूमन ट्रैफिकिंग, माइग्रेशन, ये सारे सिम्टम्स हैं। नेक्स्ट, हमको आगे करना क्या है? नेक्स्ट, देखिए, जैसे मैं पहले बोला, गवर्नर के पास सारे अधिकार है, पावर है, कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है। कोई भी कानून, ये आईपीसी भी हमारे एरिया में लागू नहीं होगा। जितने भी जनरल एरिया के कानून, एक्साइज, फैक्साइज, इनकम टैक्स वगैरह एज इट इज लागू नहीं हो सकता है, ये कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है, मैं नहीं बोल रहा हूं। गवर्नर अपना काम बिल्कुल नहीं कर रहा है। गवर्नर has failed the constitution because governor is not fulfilling his or her duties, constitutional duties, not ordinary duties. 4 अप्रैल 2013 में मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने एक लेटर लिखे थे सारे गवर्नर्स लोगों के लिए कि आप अपने इलाकों में ग्राम सभा को मजबूती दीजिए, मजबूती के साथ उसको इंप्लीमेंट करिए। गवर्नर आदिवासी लोगों को बचाने के बदले चुपचाप बैठा हुआ है। ओडिशा में राजभवन में हमारे एक आदिवासी भाई काम करते थे, उनका नाम है पॉल कुल्लू। उनके ऊपर झूठा इल्जाम लगाया गया कि वो माओवादी है। अब गवर्नर उसके ऊपर सिग्नेचर करता है। आज ये पहला इतिहास है कि एक आदिवासी गवर्नर के ऊपर केस किया, हाई कोर्ट में केस दर्ज हुआ, आज तक गवर्नर उसका जवाब दे नहीं पाया और हर साल लोग टालते जा रहे हैं। और वो व्यक्ति आज रिटायर्ड भी हो गया, फिर भी फैसला अभी तक आया नहीं। हमारे पेशा कानून के साथ ये कहा गया है कि जितने सारे भी कानून है वो सब पेशा कानून के साथ मेल मिलाप करके इंप्लीमेंट होना है, लेकिन ये काम तो कोई कर नहीं रहा है। ये करना जरूरी है। टीएसी फंक्शन नहीं हो रहा है। टीएसी गवर्नर के अंडर में आना चाहिए, लेकिन चीफ मिनिस्टर उसको हाईजैक करके अपने अंडर में रखा है। तो जो एग्जीक्यूट कर रहा है, जो सरकार है, अगर वो खुद ही उसका चेयर रहेगा तो टीएसी में तो कोई भी निर्णय आदिवासी के पक्ष में नहीं आएगा। बहुत बड़ा समस्या है। टीडीएसी इंप्लीमेंट करना जरूरी है। उसके साथ ट्राइबल लीडरशिप को हमको स्ट्रेंथन करना है। आगे 3 minutes. तो ग्राम सभा के बारे में हम लोग पहले ही बहुत बोल चुके हैं। पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्राइबल्स,
और जितने भी सारे हमारे सुप्रीम कोर्ट के कुछ ऐसे इस प्रकार के जजमेंट्स हैं जिसको रिव्यू करना जरूरी है, तो उसके लिए भी हमको कदम उठाना चाहिए। नेक्स्ट, एक इंडिजिनस फोरम हमको करना चाहिए। दिल्ली हमारा कैपिटल है, उसके साथ जितने भी एरिया में, जितने भी स्टेट्स में 5th शेड्यूल एरिया है, वहां पर स्टेट लेवल में भी इंडिजिनस फोरम का गठन होना चाहिए, लीगल सेल होना चाहिए, इंडिजिनस कॉमन फंड होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग ट्राइबल एडवोकेसी ग्रुप होना चाहिए। नेक्स्ट, सबसे बड़े मुद्दा है तो हम आदिवासी आपस में डिवाइडेड हैं, यूनिटी नहीं है। नेक्स्ट, पारंपरिक व्यवस्था को समझने के लिए हमको ये 3 चीज को समझना है, जिसके बारे में प्रोफेसर वर्जीनियस भी कल इसके बारे में बोले थे। नेक्स्ट, एक कहानी है, आप इसके बारे में सब कोई जानते हैं। एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट अफ्रीका गया वहां का लाइफस्टाइल समझने के लिए। कुछ बच्चों को वो बोला कि देखो पेड़ के पास मैं वहां मिठाई रखा है, तुम लोग यहां से दौड़ो, जो पहले पहुंचेगा पूरा डब्बा ले जाएगा। तो सारे बच्चे एक लाइन में खड़े हो गए। ये एंथ्रोपोलॉजिस्ट सीटी मारी और सब कोई एक साथ एक दूसरे के हाथ पकड़े हुए एक साथ गए और सब कोई उसके चारों तरफ बैठ के डिब्बा को बीच में रखा और सब कोई बांट लिया, इक्वली बांट लिया। तो ये देख के वो बहुत घबरा गया। मैं सोचा था कि एक बंदा तेजी से दौड़ेगा, उसको पकड़ के वो ले जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो ये विचित्र घटना देख करके वो पूछने लगा कि भाई ऐसा क्यों। नेक्स्ट, तो वहां के जो लोग थे उन्होंने बोला उबुंतु। उबुंतु का मतलब होता है आई एग्जिस्ट बिकॉज वी आर। इतना बड़ी शिक्षा उसने वहां से लिया और यही बात है कस्टमरी लॉ। डू आई हैव एन उबुंतु फीलिंग? नेक्स्ट, आज आदिवासी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। क्योंकि क्यों नहीं हो रहा है? कुछ लोग नदी पार कर रहे थे, नाव में बैठे थे, नाव के आगे गांव के लोग बैठे थे, पीछे मेरे जैसे सूट बूट लोग पहन के, जूता पहन के बैठे थे, घड़ी पहने थे। कुछ आगे चलने के बाद आगे नाव में छेदा हो गया, पानी घुसने लगा। तो जो आगे बैठे थे हाथ से पानी निकालना शुरू किया। पहले तो एक व्यक्ति किया, फिर पानी ज्यादा भरने लगा तो 3-4 व्यक्ति किया, फिर जितने नीचे बैठे थे सबका कपड़ा भीग गया तो सब भी उसको हाथ से करने लगे, लेकिन नहीं सके। तो पीछे जितने भी बैठे हैं उनको बोले कि भाई आओ मदद करो। तो उन्होंने बोला मैं क्यों, मुझे ऑफिस जाना है, मैं IAS ऑफिसर हूं, मेरा जूता भीग जाएगा। उन्होंने क्या बोला, ये काम तुम्हारा है क्योंकि छेद तुम्हारी तरफ है। नेक्स्ट, तो चलिए सब कोई पढ़िए इसको। आज आदिवासी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है क्योंकि छेद तुम्हारी तरफ है। धन्यवाद। नेक्स्ट, That's a good way of concluding your presentation. Thank you, Student Kumar. Well, we have heard about 5th schedule areas and its provisions, the responsibilities of the governor, and all the dilemmatic situation in which we are as far as implementation of it is concerned. We are all concerned, but Ubuntu is the best I can consider in this presentation. Ubuntu, I exist because we are. I exist because we are. Talks a lot about the presentation. Okay, with that we end the presentation. Now it's time for the queries and the clarifications from the floor. All of you are welcome. सभी कोई आमंत्रित है सवाल के लिए। Yeah, there, yes. Just indicate who your question is addressed.
Mr. Lambu, but also I would, it's also an open question if anyone is interested. So land transaction among the indigenous community, it's not really a very accepted ideology, as in the relationship with land, it's not considered a commodity. So the transaction is not very accepted. So how do you see the transaction of land, and what are the ethical dimensions that are involved in transaction of land, be it to a non-indigenous community or an indigenous person, as in how should that land be that is being transacted, how should it be used for what projects, and how even the process of transaction should be followed. Yes. So ethics in land transaction, yes, any one of you, कोई भी बोल सकते हैं. भूमि हस्तांतरण की नैतिकता पर कुछ बोलेंगे, ये सवाल है. You can speak something. I think it depends on the the classification of land. For example, clan land. Let's say clan land, because we have June cultivation. It's a part of the clan land. So transaction can happen, but selling and transaction, I don't know. You mean transmission of the land or the transaction, selling of the land? I didn't get that properly. Can clarify a little bit on that? Selling of land. Also, if you think that there are different ways of transferring the ownership, for example, even if it involves, if you have any idea of non-involvement of cash to transfer or exchange land, maybe if you can also speak anything on that also, it's all right. I just want to get the idea of how land from one community or one person, when it's exchanged or given to other, whether involving cash or not, how it happens. In our another tribal community, so when a new village is going to be created, then they ask the land from the larger village area. So certain traditional practices are followed. Like you have to slaughter the 4-legged animals, and then you have to give the community fish to the original village ownership. So there's no money involved. But now, like present, I have seen some changes where one particular individual wants to start another village, and he buy it with his own money. So there's a customary law that if that person buys a land for creating a new village, and until and unless the village member of that community repay back that money, then the ownership will remain with that person. But if they repay back, then the ownership will go to the village. Yeah. मेरा सवाल ये था, अभी आपने जो बात रखा है, तो गवर्नर आज अपना नहीं रहा, तो हम तो समझे कि गवर्नर हमारे पिता है, तो अभी तो पिता नहीं रहा, इसके लिए हम लोग को क्या करना होगा? दूसरा जो सवाल अभी याद में आने से हाँ, दूसरा सवाल ये था कि सबसे भारत में मूल निवासी हम लोग हैं, हमारे ऊपर कोई नहीं, ये सवाल खड़ा हो गया। तो हम सबसे ऊपर है, हमारे ऊपर कोई नहीं, कि आदिवासी के ऊपर हमला क्यों हो रहा है, ये मेरा थोड़ा ध्यान है। हम इस हमला के ऊपर हम लोग क्या करें, कैसे जीने, कैसे रहे, ये मेरा था।
questions are there. Why are the Adivasis tribals being attacked? And can we have any alternative as to the guardianship of the governor in terms of youth sector areas? There are two questions. Jojo, आप बोलेंगे कुछ? आपने सही कहा, गवर्नर हमारे पिता हैं, पिता समान हैं, क्योंकि उन्हीं के ऊपर कॉन्स्टिट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको दिया गया है। लेकिन सवाल है कि आज गवर्नर क्यों अपना काम नहीं करते हैं, ये बहुत बड़ी सवाल है। वो लोग नहीं करते हैं या फिर उनको करने नहीं दिया जाता है, ये दो सवाल है। पहले सवाल के अंदर में फिर और दो सवाल है। अगर उनको नहीं करने दिया जाता है तो कौन नहीं करने नहीं देता है और उसका मकसद क्या है, फिर हमको अंदर जाना पड़ेगा। और ऐसा करते 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 जाएंगे तो उसके अंदर में और हमको और बहुत सारे मुद्दा मिलेंगे। तो ये ऊपर से, अभी मैं नीचे से जाने के लिए कोशिश करता हूं। आदिवासी के लिए डेमोक्रेसी सिस्टम अलग है। जैसे मैंने बोलने का कोशिश किया लेकिन मैं छोड़ दिया समय के अभाव में, कि हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन मैकेनिज्म है वो कम्प्लीटली अलग है। इसीलिए शुरू से अब तक उसको अलग ही रखा गया है। जनरल एरिया का कंट्रोल एंड एडमिनिस्ट्रेशन के अनुसार जो पॉलिटिकल सिस्टम है उस सिस्टम हमारे ऊपर लाद दिया गया है, जिसके चलते आज हम भी 10 पॉलिटिकल पार्टी के पीछे दौड़ रहे हैं। हम लोग डिवाइडेड, हमारा गांव डिवाइडेड है, हमारा ग्राम सभा डिवाइडेड है, एकजुटता नहीं है। और जब यहां हमारा पॉलिटिकल सिस्टम में जितने सारे चुन के आते हैं वो लोग आदिवासी का मुद्दा लेके नहीं जाते हैं, वो पॉलिटिकल पार्टी का इंटरेस्ट में जाते हैं। और वो लोग जब ऊपर जाता है, असेंबली में बैठता है, तो वहां जितने भी हमारे ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल हैं यहीं से आते हैं और वो लोग आदिवासी के खिलाफ योजना बनाते हैं सरकार के साथ। यही चल रहा है। जो टीएससी ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल गवर्नर ऑफिस में रहना चाहिए वो वहां ना रह करके उसका पोजीशन कहां है, गवर्नमेंट में है। वो संवैधानिक नहीं है, असंवैधानिक है। हमने कभी आवाज उठाया? हमारे एमपी एमएलए आवाज उठाए? नहीं उठाया। ये व्यवस्था को हमको तोड़ना होगा। कैसे तोड़ेंगे? हमारा व्यवस्था क्या है? हमारा व्यवस्था है पारंपरिक व्यवस्था, पढ़ा व्यवस्था, और हर आदिवासी समुदाय का अलग अलग व्यवस्था है। लेकिन ये व्यवस्था है कि हम सबको मिल के शासन करते हैं। इसीलिए हमारा लेजिस्लेटिव, जुडिशियरी और एग्जीक्यूटिव सब एक में है, पढ़ा में है। लेकिन हमारा यहाँ क्या है? जुडिशियरी अलग है, पार्लियामेंट, असेंबली अलग है, और एजुकेशन अलग है, ब्यूरोक्रेसी। तो ये जो सिस्टम है हमको नीचे से हमको मजबूत करना है। इसका मतलब है हमको हमारा पढ़ा व्यवस्था को मजबूत करना है। जब पढ़ा व्यवस्था मजबूत हो जाएगा तो हम लोग अपना अपना इलाके में चुनेंगे अपना रिप्रेजेंटेटिव को, और वो किसके लिए काम करेगा? ये व्यवस्था के लिए काम करेगा, व्यवस्था के इंटरेस्ट में काम करेगा। अभी वो लोग क्या कर रहे हैं? पॉलिटिकल पार्टीज के इंटरेस्ट में काम कर रहे हैं। यही प्रॉब्लम है। इस चीज को समझना है, तब जाके हम लोग ये व्यवस्था को तोड़ेंगे। अगर हम लोग इसके ऊपर अवेयर नहीं होंगे और इसकी व्यवस्था नहीं तोड़ेंगे तो ये कंटिन्यू चलेगा और इसमें कोई सुधार होने वाला नहीं है। एग्जाम्पल मैं देता हूं, 2017 में हम लोग एक बहुत बड़ा सेमिनार किया था। उसमें ग्राम सभा को मजबूती के लिए और हमारे सुंदरगढ़ जिला में ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का गठन के लिए हमने बात की। दूसरे ही दिन सरकार ने
अपना सारे कैडर को मोबिलाइज किया और गांव-गांव भेज दिया और सबके यहाँ से लिस्ट मंगवा लिया कि भाई तुमको गांव में क्या चाहिए। उतना डर हो गया उनको और तुरंत उड़ीसा में गठन हुआ स्पेशल डेवलपमेंट काउंसिल और उनका काम क्या है, साड़ी बांटना, मानदर बांटना और दूसरा कुछ काम नहीं। और वहां पर चेयरपर्सन किसको बना दिया है, आदिवासी को। और हम लोग क्या सोच रहे हैं, हमारा आदिवासी एक पिक्चर में दिखाना चाहता था लेकिन वो ये नहीं कर पाया। बहुत लोग आप लोग देखे होंगे, एक टांगिया होता है, Jojo, can you be brief? सब कोई वोट देते हैं उसको, टांगिया को, क्योंकि वहां जो लकड़ी लगा है हम लोग सोचते हैं हमारा समाज का है, लेकिन वो वही आकर के हमारा जंगल काट रहा है। यही बात है। तो इसके लिए मतलब ये है कि आज समय तो नहीं है, लेकिन इस आप जो बात कहिए बहुत वजीफ बात है, इसको हम लोगों को आगे लेना है कि वर्तमान में जो व्यवस्था हम लोगों के ऊपर थोप दिया गया है उसको हम लोग कैसे किनार करके कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लिए जो व्यवस्था रखा है उसको हम कैसे अपनाएंगे। और उसके लिए अच्छा पहल इन्होंने किया है, आपको बहुत बधाई। इसी प्रकार हमको लड़ना है। थैंक यू। Thank you. Jojo, yeah. Any other further questions? Yes. I had a question. Yeah, sure. So it's particularly for honoring sir. So we're very well aware of how indigenous knowledge is the best for tackling all kind of climate crisis and the current climate change. So when you laid down the case study of your particular community, you talked about how the principles of egalitarianism and distributive justice apply over there. So coming from a very ethical and moral debate about global justice, I wanted to ask you that whether such similar principles that your community follows. I just wanted to know what are your views upon the implementation of the same on a global scale in order to tackle climate crisis. So that was my question. Thank you for the question. So at the last slide I've talked about Nancy Fraser, about the 3 dimensions of justice. They involve the egalitarian way of resource distribution, cultural practices, and then the representation of the community in political sphere. So she said that if these 3 dimensions are fulfilled, then whether it's in local level, or regional level, or state level, or it's in global level, this certain kind of climate crisis can be solved. So if we apply this kind of framework, what Nancy Fraser proposed, then that's high chance of solving the issues that's happening globally. Thank you. Just one. Go ahead. One more intervention. Yes, sir. Excuse me. Jojo Saab has explained us the many things. As well as explanation, he has given many questions which rest upon us that what we will do for our society. इसी के कॉन्टेक्स्ट में जोजो साहब ने हमें हिंदी में एक्सप्लेन किया, इसलिए मैं हिंदी में क्वेश्चन कर रहा हूँ। जोजो साहब ने कहा कि कहीं पर भी गुड गवर्नेंस के लिए या तो हम गवर्नमेंट काम करती है, हमारी पीस और गुड गवर्नमेंट। तो एक क्वेश्चन इसी में है मेरे को, ये पीस बनाए रखने के लिए कौन गवर्नमेंट गुड है और बैड है, तो गुड एंड बैड गवर्नमेंट के विषय में थोड़ा सा हमें नॉलेज दे दें। सेकंड क्वेश्चन, शायद जोजो साहब ने यूएन में काफ़ी काम किया हुआ है या अभी भी कर रहे हैं, तो यूएन का ही क्वेश्चन मैं ये बोल रहा हूँ। गवर्नमेंट ने, इंडियन गवर्नमेंट ने ये बोला है कि भारत में आदिवासी नहीं है, ये डिक्लेरेशन दिया है। तो हमारा इंडियन गवर्नमेंट
अभी हर जगह यही बोलती है हमारा राष्ट्रपति आदिवासी और हमारा देश में आदिवासी नहीं है। ये बहुत बड़ा कंट्रोवर्शियल वाला क्वेश्चन है। क्या हम लोग इस चीज़ का क्लैरिफिकेशन इंडियन गवर्नमेंट यूएन में दे सकती है? अगर गलती किया हुआ है तो क्या करेक्शन कर सकती है? और तीसरा क्वेश्चन, ये जो हमारा उत्थान के लिए जो साहब ने काफ़ी कुछ एडवाइस किया था, विशेष करके फोरम बनाने के लिए, ये पहल हर जगह होनी चाहिए। जहाँ तक हम लोग कोशिश कर रहे हैं दिल्ली में बनाने का, ये मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। और इसी के साथ ये जो लास्ट एक चित्र उन्होंने दिखाया था, उस पर हम लोग ध्यान देंगे। वो यूनिटी दिखाता है मेरे हिसाब से। अनटिल अनलेस हम जितने भी ट्राइब्स हैं इस फॉर्मूला को फॉलो नहीं करेंगे, तब तक हमारा अपलिफ्टमेंट नहीं हो सकता है। और तोहफा साहब ने इसका उदाहरण, ज्वलंत उदाहरण बताया, और मेरे ख्याल से सब चीज़ का आंसर शायद तोहफा साहब ने बताया, उसी पर रेस्ट करता है। थैंक यू। थैंक यू। आपने मुझे हिंदी में सवाल पूछा है तो मैं भी आपको हिंदी में ही जवाब दूंगा। आपने गुड और गवर्नमेंट के बारे में you can also speak in English because there are a few here who do not follow Hindi. Okay. The question is about good peace and good government. In the constitution it is mentioned government. So what is that government? There is no good and bad government. There is no two different governments which can be good and bad. We are separate from the common general control and administration system. That means we have only one government, and that is self-government. Our own vyavastha, our own system. Today, this system is not functioning. It is completely disintegrated. There is no peace. There is no governance in our government system. That is what the real meaning is. Yes. Coming to Indian government stand. See, when you are power, you can do anything. Because you have majority in the parliament, and so you can decide anything. Any policies, whatever you can do, whether it is bad for some community, you make a decision because it is majority, that's it. So then, it just happened that way. Second, this also raises a fundamental issues about what people think about Adivasis. That is why I raised that question. But now you ask this question, and so the importance of what I raised is now felt. There is a Brahmanical thinking behind. There is other thinking behind, which we need to understand, and at this moment there is no enough time to go into that detail. But you know for sure that behind this there are other thinking which is not favorable to indigenous community. Till today, we are all living in contradictions. Supreme Court has given so many favorable judgments, and the same Supreme Courts have contradicted many things in subsequent judgments. We need to study this. Is it clear? So I think it's time that we wind up. Last question. Yeah, we ask from the organizers, do we continue with the question? Okay. I have a question, but I will keep it for the next session. Okay, good. Thank you. Because I think Thank you. Professor Vajray's Khatha is there good that this relates to something that... Okay, sure. Yeah. Sure. Just once again, just wanted to give you this one. We have made a lot of, we did a lot of advocacy at UN, and through our Vice Chairman Pulman Chaudhary, we have raised this issue at the UN, and at least at UN level, they are ready to include the word Adivasi for India. Okay, fine. Yeah. Go ahead with your question. Yeah.
मेरा सवाल देवाजी सर से है। देवाजी, आपके लिए सवाल। हाँ जी सर। तो मैं ये कहना चाहती थी कि आप अपने एरिया में काफ़ी क्रांतिकारी तरीके से स्वशासन लेकर के आए हैं, तो फिर आप बाकी लोगों के लिए क्या सजेशन देंगे? स्पेशली जैसे झारखंड में अगर कुछ भी ऐसे आंदोलन होता है तो आदिवासी समाज से अगर आंदोलन उठता है तो उसको एंटी नेशनलिस्ट या नक्सल से जोड़ा जाता है और उसको फिर खारिज कर दिया जाता है, तो आप क्या सजेशन देंगे? संक्षेप में थोड़ा सा बोल दीजिए। इसका तो जवाब मैं ज़्यादा नहीं दे सकता हूँ, लेकिन मैं जो काम किया है वो बता सकते हैं। ये जो बाकी जो हमारे देश में अलग अलग क्षेत्रों में हमारे आदिवासी भाई अपना हकों के लड़ रहे हैं, वो भी क्रांतिकारी का ही काम है। देखिए, भौगोलिक परिस्थिति और लड़ाई लड़ने का तरीका एक है। जब बोला कि वो संघर्ष करते समय लड़ाई करने के लिए पहले पढ़ाई करना पड़ता है। ऐसा पढ़ाई करना पड़ता है कि आगे धोखा होने वाले क्या है ये देखना पड़ता। सभी लोग यही कहते हैं, क्या नुकसान तो होने वाले नहीं, ये पढ़ाई करना पड़ता शॉर्टकट में। दूसरा, नक्सलाइट के बारे में आपने किया तो हमारे यहाँ भी है। हमारे यहाँ बहुत सारे लोग आते हैं, पुलिस भी आते हैं, एम्पायर भी आते हैं, पूछते हैं यहाँ नक्सलाइट कहाँ है, कहाँ उठता है, हमको पता नहीं, हमको कहीं मिला ही नहीं। हमको मिलता है इंसाफ। हम इंसान को ही पूछता है कौन पुलिस कौन अधिकारी का ठप्पा दिखा है। हमारा हक के लिए हमारा स्नाइपर हम कर रहे हैं। तो इतना ही बताता हूँ कि एक भी केस हमारे ऊपर नहीं है। 5 DIG दिल्ली से केंद्र सरकार ने भेजा अध्ययन करने के लिए। बहुत सारे रिपोर्टर यहाँ तक आए, केंद्र सरकार में बहुत ग्रुप्स आए, केंद्र सरकार से ग्रुप भेज दिए। लेकिन 2 ग्रुप ने, एक ग्रुप अच्छा उन्होंने, एक ग्रुप ने भाई मेंढा में कुछ नहीं है, आदिवासी बेकार लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं, क्या समझते हैं। तो दूसरा तरफ से फिर यह तो अच्छा है बोलकर भारतीय संविधान के मूल मामले अनुसार और अधिकार काम कर रहे हैं। 5 DIG आए, 3 घंटा चर्चा की, 3 घंटा, 2 महिला, 3 घंटा से पूरा समझ में आई उनको ये यहाँ कोई भी गड़बड़ नहीं है। समस्या तो बहुत देश में है, लेकिन ये रास्ता निकालने का, लड़ाई लड़ने का तरीका अभी बदलना है, माइंड सेट करना है सबका। दिल्ली से गली तक इतना मत दर देता है, कोई भी समस्या नहीं है। समस्या जो आता है यही आगे जाने का मौका देता है, समस्या नहीं है। Okay, thank you. So, चेयर, okay, we go ahead up here. Yes. चेयर, एक बात मैं कहना चाहता हूँ इसी माध्यम से कि ये जो मुद्दा है, ये मुद्दा को हम लोग अनदेखा नहीं कर सकते। और इसके लिए मैं इस मंच से आज ये अनुरोध करूँगा कि किसी मौके में कस्टमरी लॉ एंड गवर्नेंस, पीस एंड गुड गवर्नेंस के मुद्दे पर और एक सेमिनार रखा जाए, क्योंकि बहुत सारे मुद्दे हम लोग बात नहीं कर रहे हैं। जो एक्चुअल में जो इश्यूज जो घट रहा है उसके ऊपर हम लोग ज़्यादा काम नहीं कर पा रहे हैं। अभी इस सेमिनार में बहुत अच्छी इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स हुआ, अब उसको हम लोग समाज के लिए कैसे उपयोग में लाएंगे उसके ऊपर हमको काम करना है। उसके लिए और एक सेमिनार होने से अच्छा होता, जिसपे जो मुद्दा है आप जो उठाए हैं, बहुत सारे लोग आज जो संघर्ष कर रहे हैं ग्राउंड में, उनको अर्बन नक्सल बना के जेल में ठूस कर रख दिया है। आप उनको कौन निकालेगा, कैसे निकालेगा, ये बहुत बड़ा समस्या है। Okay, thank you, thank you. Organizers can take note of it. Yeah, thank you. Okay. So we wind up here. Yeah. Can we have a huge round of applause once again for all the presenters for their efforts? Thank you everyone here on the dais for bringing us to a very productive session today.
I now request the moderator, Father Xavier Soreng, to kindly give away the mementos to the presenters for their deliverances. I now request all the presenters to kindly stand up and assemble for a group picture. Meanwhile, ये समय होगा जब मैं धन्यवाद ज्ञापन के लिए यशोदा मुर्मू जी को बुलाना चाहूंगी। उससे पहले मैं चाहूंगी कि यशोदा मुर्मू जी हमारे मॉडरेटर साहब फादर ज़ेवियर सोरेंग जी का मोमेंटो देकर स्वागत करें। जोहार। 2 दिन से हम लोग अपना आदिवासी नॉलेज ज्ञान हम लोग का सिस्टम के बारे में मंथन किए। 2 दिवसीय कार्यक्रम में आज शायद 1 सेशन बाकी है, आखिरी पड़ाव में पहुंच ही गए हैं। तो अभी के सेशन में जो बताए हमारे मॉडरेटर फादर जेवियर सोरेंग जी ने बहुत सुंदर से हिंदी और इंग्लिश मिला के सभी का भाषण को बहुत सुंदर से रिपीट किए। इसके लिए फादर सोरेंग जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे बीच पहुंचे मिस्टर देवाजी नवालू तोफा जी ने बहुत सुंदर से ग्राम सभा में हम लोगों को अपना राज किस तरह से कराना है, सरकार के लोगों से किस तरह से हम लोग उसको अपने सिस्टम से अपने लिए किस तरह से मंगाना है या अपनी जगह में किस तरह से स्थापित कराना है ग्राम सभा के नियमों को, इसके बारे में बहुत सुंदर से बताए। देवाजी जी को बहुत बहुत बधाई और थैंक यू। इसके बाद हमारे बीच बुधन कुमार सिंह जी ने कोल्हान के बारे में वहाँ रह रहे हमारे आदिवासी उनके रीति रिवाज मंकी मुंडा और पंचायत राज के बारे में स्वाधीनता के पहले से शुरू करके अभी से जो नियम लागू हुआ है, जो सिस्टम अभी चल रहा है, उसके बारे में बहुत सुंदर से बताए। कोल्हान क्षेत्र के बारे में सिंह जी को बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद उन्हरिंग लंगू जी ने मणिपुर के बारे में हम लोगों को बहुत सुंदर से बताए, वहाँ के नियम और वहाँ के अंगल नागा ट्राइब के बारे में। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे बीच मिस्टर सुनील कुमार जोजो जी ने बहुत सुंदर से हमारे कस्टमरी लॉ के बारे में बताए और हम लोग आगे बढ़ने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, जो हमारे लिए तो है लेकिन हमारे बीच नहीं पहुंच पा रहा है, क्यों नहीं पहुंच पा रहा है, उसके लिए हम लोग को मंथन करना पड़ेगा। इसके लिए हम साथ हैं तो हम हैं, बहुत सुंदर सा उन्होंने बताए। और ऐसा नहीं कहेंगे कि क्षेत्र तुम्हारे है, तुम्हारे तरह है, इसीलिए हम
हम क्यों उसमें पड़ेंगे। तो बहुत सुंदर सा लास्ट में जज जी ने हम लोग को बताया, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और 2 दिन तक आईएसआई ने हम लोगों को यहाँ अपने प्रोग्राम को करने के लिए जगह दिए, और साथ में यूएसएड अन्नामय और पिरामल, जहाँ से हम लोग को सहायता मिले हैं हमारे 2 दिन का कार्यक्रम के लिए। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी के लिए अभी सभी को धन्यवाद, श्रोताओं को भी धन्यवाद। जवाहर। धन्यवाद यशोदा जी. This would be a time for tea break, quick tea break for 15 minutes. So we have already passed the scheduled time. We'll try to be very quick. And a small information for all the participants, presenters, resource people who are residing at the ISI residence. The checkout time is tomorrow 12 in the afternoon. So if you plan to stay back, kindly inform the timing at the reception or to Father Vincent. All the participants, if you wish to have a participation certificate, kindly come to this table number 1 and give your names. Thank you.
everyone. So let's get ready for one another empowering session we have right now. This session is a panel discussion on the topic of indigenous ways of education, human formation and governance system. To moderate this session, I shall now call upon Ms. Tanya Jayaraj. She is a lawyer by profession and she is associated with Piramal Foundation, which works on forest self-governance and nutrition. She is involved with Anamaya project and where she engages with tribal health. I shall now call upon all the panelists for this session on the dais. Dr. Zifranius Bakla, Mr. Devaji Navalu Tofa, Dr. Anju Helen Bara, Dr. Joseph Marianus Kujur, Professor Sona Jharia Menj. I shall now give a brief introduction about the dignitaries that we are going to have as a panelist. Professor Sona Jharia Menj, former Vice Chancellor Sidhu Kanu Murmu University, Dumka, Jharkhand. She is currently professor at the Center of Computer Science, Jawaharlal Nehru University. She engages at various educational initiatives and currently one of her research projects, I may say COPI, in the collaborative project with IIT Roorkee on funded 2-year project by Asia Pacific Network on global change. She was also awarded an honorary rank of Colonel by the Ministry of Defence for work and support to 4 Jharkhand Girls Battalion of NCC Jharkhand, Bihar. We have among us Dr. Zifranius Bakla, the founder of Lur Dippal. We have heard him in the morning. Also Mr. Devaji Navalu Tofa. Dr. Anju Helen Bara. She did her PhD with Humanities and Social Sciences at IIT Bombay. During her PhD, she also spent a year as a Commonwealth split-side scholar in the Department of Development Studies, School of Oriental and African Studies, London. And currently, she is Assistant Professor in the Department of Development Studies, Social Sciences and Policies, Central University of South Bihar. Dr. Joseph Marianus Kujur is the Director of Xavier Institute for Social Science, Institute of Social Services, Ranchi. He was a lecturer at the Department of Social Science, Janadeepa Vidyadeep, Pune, and he was also the HOD and Assistant Research Director at the Indian Social Institute, New Delhi, and currently Head of the Department of Research and Planning. I thank you all for having patience. We have one another session after this. I shall now hand over the session to the moderator. Over to you, Tanya. Thank you. Can you hear me? Yes. And welcome. This is our penultimate session, so maybe energy levels are flagging, but we're going to try to keep this as conversational as possible. Without further ado, what I'd like to do first, we've had a very interesting and enriching day. So what I'd first like to do is ask each of our panelists over here to spend just 5 minutes. Not more than that, because we have a hard stop at 6. So just spend 5 minutes on reflecting back on today. Tell us what you connected with and how you, engaged with what you heard today. So maybe we can start from the left. Dr. Achu, would you like to start? Thank you. Johar and good evening to all of you. Thank you, Tanya, for giving me this chance. Today, 2 important areas or themes were being covered. And as a takeaway for today's discussion, deliberation, one important thing which we have learned today, and for me the takeaway is to have the indigenous education system, the morning session which reflected in, the education system which is being owned by its own people, the curriculum which is designed by its own people, and it emphasized more on
emphasize on to have the education on its own mother tongue. So that is the most important takeaway. Howsoever, that also leads to a very important question, and that really concerns me, is that can we just replicate the experiment which was done in Gumla to other places? The experiment which was done in Kort Raji, can it be really replicated to other places among the Mundas, among the Hos, maybe, not just as we were told that there are very good experiments and already, the education is being given in their mother tongue. So howsoever, how to really continue with this particular experiment, sustain it, and to replicate it in other places. So this is something which we really have to work. Whatever experiment has been done there, a successful one, we need to put into action in other places to really, have a sustainable and more development of the tribal society. That also gets into the next question is about, which we discussed in detail in the same session, about the indigenous methodology, and it also brings into the question that who the indigenous people are. So this is something, when we talk about the methodology, we have few kind of a literature which are there, but when we are taking it in our own perspective, in the Indian perspective, we really have to be careful enough, we have to be cautious enough when we are using it, and we have to take into consideration, like we say in social science about using the context. So really have to bring in that thing. We also have a very interesting presentation. We have two very interesting case studies which were being reflected from Northeast, giving us the viewpoint, the worldview, the tribal worldview from Northeast, and how they associate with land. Definitely it added on to the already existing literature on the commons, on the land governance, and how they really understand the tribal worldview. What is very interesting at this particular juncture for me is that more and more studies are coming. 10 years, when we look into back 10 years back, we never saw these many studies. Now more and more studies are coming up. So one important thing is the takeaway is that really we need to document these studies. We need to have a dialogue. We need to share more of this knowledge and to get into it. And lastly, the indigenous governance system. We have been listening to the Gadchiroli case study, the kind of immense successful experiment which has gone into there. Again, my question is that Gadchiroli was known as the most notorious Naxalite area. Once upon a time, Gadchiroli ja rahe ho, Muhammad Jana. That was the expression, but now we see that a successful village governance system has come up. So here, my takeaway is that if once notorious Gadchiroli can become a role model for India, why not Jharkhand? Why not any other place? Why not Chhattisgarh? So ultimately, we need to learn from each other, and we need to share our experiences, and I think this is what this conference, this 2-day conference has been successful enough to a certain extent. I will share my challenges and the concerns maybe later on. Thank you. Thank you, and thank you for being exactly on time. Thanks. आप देवा जी, आपको समझ में आया? मैं आज का दिन में हमने जो भी सुना है उसके बारे में आपका क्या विचार है? आप किसके ऊपर और सोच रहे हैं? थोड़ा 5 मिनट में आप उसके बारे में बात कर सकते हैं, मगर 5 मिनट। जोहार। तो आज मीटिंग में ये सुना है, मैं 60 कट में चुका हूँ। ये जो है ना, हमारे ट्राइबल का अलग अलग है, लेकिन एजुकेशन का सिस्टम कैसे वो कहे हमारे गोट में जो भोटुल कहते हैं, भोटुल कहते पुराने जमाने में, वहाँ लड़के लड़की को पढ़ाई की थी। तो वो सिस्टम बहुत है, लेकिन वो जो था
वो एजुकेशन ऐसा था कि वो एक कारखाना था। हाँ, जैसा कच्चा माल डाल देते हैं वहाँ पक्का निकल जाता, तो बच्चों को वहाँ डाले तो वहाँ इंसान बन जाता। अब इंसान नहीं बन रहा है ये शिक्षा से, राक्षस बन रहा है। तो इसको अगर सुधारना है तो फिर वापस आदिवासी के पास जाना पड़ेगा। उनका एजुकेशन क्या है, वो कैसे कर रहे हैं, तो मैं पूरे युवा जो पढ़ाई करते हैं वो शिक्षा वहाँ मिल जाता है। और जीवन से जुड़े हैं वो शिक्षा, जमीन से जुड़े हैं, जंगल से जुड़े हैं, पूरा पानी से जुड़े हैं, वो शिक्षा होना चाहिए। आप कॉलेज में पढ़े हैं तो क्या पढ़े, वही है ना, पेड़ कौन सा है, प्राणी कौन सा है, जमीन है, कुएं है, वातावरण। उससे ज़्यादा वहाँ हमारे आदिवासी वो पढ़ाई करता है। तो अभी का जो शिक्षा का महत्व करना, गांव से करना, उनका मातृभाषा से शुरू करना, डायरेक्ट उसका मातृभाषा। हमारा गोंडी है तो गोंडी टू इंग्लिश, इंग्लिश तो पढ़ने वाला बहुत अच्छा बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं तो लेकिन अच्छा ही बोलते हैं। तो समझ में नहीं आता। लेकिन इससे हमको फिर वापस जाके वो शुरू करेंगे गली से, हमारा इसको वापस हमको लाना पड़ेगी। हमारा एजुकेशन हम करेंगे, प्राथमिक एजुकेशन हम गांव से शुरू करेंगे। गांव, मोहल्ला, टोला, वो क्या है, वही तो असली यूनिवर्सिटी वो है। ये तो यूनिवर्सिटी नहीं है, वो कच्चा माल तैयार करते हैं वो यूनिवर्सिटी। हमारा यूनिवर्सिटी पक्का करेंगे और इंसान बनाएंगे, समाज से जुड़ के रहेंगे, हाँ, जमीन से जुड़ के रहेंगे, देश विदेश से हमारा जुड़ के रहेंगे। ये देख कितना एजुकेशन है। तो ये एजुकेशन सिस्टम हमको बनाना है और वो ग्राम सभा से करना पड़ेगी। गांव का टीचर गांव में काम करेगा, गांव में गांव का ही ग्राम सेवक होता है ना, सचिव, वो गांव में काम करेगा ग्राम सभा में। वन रक्षक गांव का रहेगा, वो तलाटी गांव का रहेगा। ये बाहर से पढ़े लिख के आते हैं, कुछ भी समझता नहीं है, हमारा पूरा बिगड़ जाते हैं। ये नहीं होना चाहिए। एजुकेशन सिस्टम काम करते करते सीखेंगे, सीखते सीखते काम करेंगे, काम इतना उतना दाम मिलेंगे। उनको बच्चों के एजुकेशन के लिए पैसे का जरूरत नहीं है। माँ बाप को क्या बोलेंगे, उस पर बोझा नहीं होना चाहिए। ये शिक्षा पद्धति हमको लाना पड़ेगी, तभी होगा। ये पूरा बिगड़ हो रहा है, हमारा बयाना से ही बिगड़ गई, इसलिए हम पर बहुत अन्याय अत्याचार होता है। तो एजुकेशन जो है, इसमें मेरा जो सुझाव है कि इसको शुरू करना पड़ेगी। और इसको किस तरह से हमारा दिल्ली सरकार कैसे मदद कर सकते हैं, और लोकसभा विधानसभा के लोग कैसे मदद कर सकते हैं, बड़े बड़े एनजीओ है यहाँ, वो कैसे मदद कर सकते हैं। तो गांव को मदद कर, तभी वो गांव ग्राम सभा और लोग पावरफुल ताकतवान बन जाएंगे। अभी तो पूरा कमजोर हुआ है, एजुकेशन भी बहुत गड़बड़ है। उससे कल मैं बोला ना, बदलो बदलो शिक्षा, नहीं तो मांगना पड़ेगी शिक्षा। पूरा ये मैं बात करता हूँ, मैं ज्यादा नहीं बोल सकता। धन्यवाद। थैंक यू। आप जो बोले परफेक्ट है। थैंक यू। I'm very thankful to the organizers of this conference, two-day conference, who have invited me, and also for having been tolerant and patient with me. I was unable to join before this moment, and so since I have not been here, I don't have anything to say at the moment, so pass from my side. After 2 days of seminar, I feel 10 years younger. I thank the organizers who have invited me. Little work that we are doing in Lodipa, I never thought it would be recognized like this. And I felt massive support for the ideology of Lodipa, that is mother tongue medium of instruction, and all that goes with it to make a group and nation. It is a nation building center, Kudukh nation. It is the Kudukh people, Kudukhar who are divided to Chhattisgarh, Rohtasgarh, Odisha,
Jharkhand and bit of Bengal, but it is not contiguous. We don't claim that one, but this area has been marked and it has to be honored. It was said by even from Bishanpur, Ashok Bharat. He had called me recently in June, and he patted me on my back and he says, "You have done a wonderful work," and then that the people, area which speaks this language must be honored. I don't know what he meant. Maybe I'll go and talk to him again. So it is a nation building work, and I was again felt 10 years younger more, because after hearing the talk of our Sunil Jojo, because the real matter is there. We are sitting down here, we are struggling, we are blaming each other, we are struggling with other people. It is precisely because our ways, our worldviews, our systems, our custom, everything is different. Our mode of governance also is different, and we are trying to mix together and try to get benefit from our enemies. So I always say that Gram Sabha, where our enemies are inside and we are trying to work together, it will not work. You don't put tiger and goat together and say we'll have a wonderful result. So that is not possible. Because composition of present PSA Gram Sabha is that everyone has to play part of it. That means those who are oppressing us, against whom our ancestors fought. I remember especially our Bir Guru. If, like us, educated people, if we had calculated, I am fighting against the British Empire, where sun has not set, such a huge empire. Will I succeed? You would not have started a fight against the enemies. And you would not have got what we have today. Fixed you. And I will only ask massive support for the system, school especially, because when mind is open, there is quality education, social transformation is guaranteed. Otherwise, nothing is possible. And then I will ask your support and prayer, our own brethren, Kanavagat brethren, and Padha people. Some of them are still in jail in Latehar. Because we had challenged to the DC, DSP system that is alien to us, so we don't want, and then put some blocks that try to block, but then we are caught and put in disturbing the government functions, and therefore some of them are still in jail. So let's hope that it's a governor, it is the government which is unconstitutional. They are the Desdrohi, but they are putting owners of this land, innocent people in jail, and they are rotting there. So it is time that we come together and all of us put our hands together, support our system by which we will be free. So with this prayer from you that you support, I will also tell you good news that next month we are going to open a center also in Rohtasgarh, that is a Bihar, on Kuruk school. And then we have 3 times one group had come from Bundu Tamar to open Mundari school, and they had studied after the team had gone. Maybe they have done much better. I have to go and see that when they have started doing Mundari school. So idea is picking up what to do. God has given us different tongues. So let us remember it is enriching humanity, and culture and expression of the languages and different cultures. And that is a very good thing that is happening. So these 2 things are something new in the next. And then as somebody has suggested very beautifully, that let us come together again to pick up certain really vital issues and support, and then advocate also wherever we can get some benefit to our cause. And then I invite all of you to come and see our nursery, and not mine but ours, because we have started together with the elders, and because my narrating is not enough. When you come and see and experience and say that maybe it is worthwhile starting like this, or we have been neglecting this one for long and almost destroying ourselves, when people begin to have their loathing the use of language at home, and then they are
feeling inferior because they are using their mother tongue. It's a very sad situation. Now it is reversing. That's the good news. Let us thank God and then collaborate as best as we can. Thank you. I'll try to conceptualize on whatever has been narrated or whatever case studies or voices from the grassroots we have heard since yesterday, but very especially since this morning on education, indigenous ways of education, human formation and governance systems. I would like to put indigenous ways of education and human formation more or less together, because formation is also training. It's a way of preparing them in terms of how they should be socialized or enculturated in their own tribe or in their ethnic group, etc. But I would like to look at these two components, education, formation, and governance, as correlated. Because as I asked one question yesterday, placing three components before us, before the August gathering here, for us it's very important to know as to who owns the resources or a system. Number two, who controls it. Number three, who manages it. If we reflect deeply on education or formation or governance system from this point of view, we'll realize that education is not owned, or there is no ownership of the indigenous communities. They are not controlling education. They are not managing education. And that's precisely why I'm full of appreciation for the initiatives taken by Dr. Edwa Rao and others. Having said that, let me also place on record a statement from after the Second World War. This is from the Nazi camp. What is education? And I would also like to take off from where Dr. Edwa Rao left us, talking about social transformation. Unless there is social transformation, what's the use of education? It's as good as useless. It's as good as nothing. And hence, let's remember this. Because what we are preparing, if it's a factory, then we are processing the human beings, Adivasis, who should be better human beings, but are they really better human beings or not? Let's look at this. At the end of the World War II, this letter was found in a Nazi concentration camp. It is addressed to teachers. Dear teachers, I am a survivor of a concentration camp. My eyes saw what no man should witness. Gas chambers built by learned engineers, children poisoned by educated physicians, infants killed by trained nurses, women and babies shot and burnt by high school and college graduates. So I am suspicious of education. Remember that? I am suspicious of education. My request is, help your students become human. Your efforts must never produce learned monsters, skilled psychopaths, educated illiterates. Reading, writing, arithmetic are important only if they serve towards making our children more humane. Having said that, as I said, there is a correlation between governance and education or formation. Pierre Bourdieu also reminds us of how there is inequality and schooling interrelated. Relationship between the higher education system and social class structure. Education serves to maintain rather than reduce social inequality. And we also know how he argues how social inequality is culturally transmitted from one generation to another, and that education plays an important role in this transmission. And therefore, we need to be extremely careful whenever we are talking of education. And to quote Paulo Freire, who talks about pedagogy of the oppressed, education is always associated with power and empowerment. And hence, there is an argument. We argue that we need indigenous way of looking at things. We need to understand ecology and whatever we spoke since yesterday, whether it be governance from the indigenous people's perspective, from their communitarian perspective, so that we are able to do justice to the climate, to environment, to ecology, to education, to governance, etc. More little later, but for the time being, to conclude, I would say
It has been very revealing and very informative and very enriching that we are talking about education from the perspective of the indigenous peoples community, so that indigenous peoples have something to contribute to the country in the process of nation building. Indigenous people also have to contribute to the world when we find ourselves grappling with various chaotic situations. Thank you. Thank you, that's very powerful too. I'd like to move now to a round of specific questions to each of the panelists. Again, if we could keep it to about 5 minutes per person, and then open it up to the public over here. And this time, I think what I'm going to do is I will start with Professor Mintz. What's that with you? All right. So my question to you, it's about education, since that's the space that you are in and most familiar with. Do you see any kind of disconnect between indigenous education and mainstream education? And also, to explore that further, do you see barriers or challenges between the two, as they work with each other, if they work with each other? Okay. Yes. Thank you, Tanya, for that question. It's a great question, and I think it takes a lifetime to actually find many things, not all, but many things, as each one of us sitting in this room would have had their modern education. I use the word modern education because we have been schooled through that. And prior to modern Adivasis being exposed to modern education, there was our traditional education system. जैसे तोफा साहब बता रहे थे कि आपके पहले भी वहाँ होता था. So there is, each one of us can profess this and definitely testify. Beginning with language, the disconnect begins. Because the medium of instruction in the schools we went to, be it Hindi medium, that's not the mother tongue. So therefore, that's the first thing. One is the child goes to a space which is outside the house. So there is that disconnect begins from home to another space. Next is language and everything. So that's one. Two, to me, to the extent I have been raised with the Urao and Kuruh and Urao specifics of the culture. I think by the age of 5, 6, 7 at the most, each of us have had a good taste of what our community is, or what makes me Sonachariya Minj, And so I would have been told numerous things, because my parents took me to the village also. Every year we did go more than once. Or therefore, everything that was there in that space, and that the things we learned at home, there is a total disjoint set coming up in the school. Since the Hindi, which is not my mother tongue, but for some other reason, I was not able to understand anything in my class 1. That is how I would like to state that the modern education had no connection between what was taught to me at school, besides my mother who took pains to teach me tables of 2 at home before I went to school. So that was also not cultural, So therefore, there is a disconnect in terms of content. There is a disconnect in terms of pedagogy. Content, I understand it can be incremental, but then referring back to what Father Mariano read out, can mathematics, arithmetic and mathematics make better humans? So, to what extent is it required? Okay, arithmetic is good, but thereafter, whatever is not used for daily life, and that calculation, I'm sure children learn anyway.
I was just looking at the history of, we all need to know how education itself has evolved. And then it all began in monasteries, be it Buddhist monastery or, Catholic monasteries in Europe. But in India we would in Hindi say Gyan, and and the Rishi Munis also said it all began with Gyan, and then some who would want to, which was about the knowledge about the divine and whom am I and etc. etc. But then modern education, then it says, and if we look at the terms, the dictionary meanings, then we come across the term Vidya, okay, in Hindi, so which is knowledge or specific information, which is basically, so now everything going towards livelihood or livelihood options and therefore skills for livelihood. Now, if my family is engaged with agriculture, I'm not learning anything in school. If my family is there to engage in processing of forest produce, I'm not learning anything in my village school. Or the teacher also is unable to relate to my culture. So there is a disconnect for sure. Okay? As I said, many things, the content and pedagogy, because again, I really appreciate that the two words Father Mariano's combined, culturally transmitted. Unless something is culturally transmitted, it's another framework in which things are being presented, so much for the child to negotiate between what he or she knows and what he or she is being exposed to. I visited on 7th and 8th of September, Wayanad, and to be precise, Kenyambeta, and I visited two hamlets. One is Paniya's hamlet and Kurumbas. And thereafter I was told, now in Kerala, till such time they attain GRE 100% and drop out 0, there are some who are last and some who are lost. And so I've been talking to them that these things, that at least I'm trying to negotiate with them. In class 1 and 2, why does it have to be a certain textbook? Because the outcome is supposed to be the skill. So focus on the skill, not what they are supposed to know, and which we want them to know because that's there in the NCERT textbook. No, they can know the same skill, they can come out victorious learning the same skill with another content, not culturally transmitted. And so I think, although I forgot your second question, but then there is this disconnect which actually becomes the barrier. And I was speaking to some teachers then, I'm sorry if I'm taking more time. Okay, yeah. So I asked the teachers who were teaching in a school which had probably good number of tribal children also, but multiple tribes. I said, how do these children react? They said, no, they are very quiet and, in some corners sometimes they don't even speak to the other children. I said, do they not talk to themselves? Yes, they do. Why should they be talking to other children? If the other children are not talking to tribal children, what is your problem? 1, 2, I asked, then said, no, they have some problem in expressing, speaking back. Okay, then I asked the teacher who teaches maths, how do they perform maths, arithmetic in school? Oh, they do well. See, the things that they know probably at home, how to add, how to subtract, if that is being taught, of course they'll do well. But if alien things are being taught to them, there is a difficulty. So, see, content is also a barrier. The pedagogy is the barrier. And it's almost like I used to wonder, children who are unable to, before they start speaking, and they just make out some sounds, since I have two children and I saw them grow, I used to wonder if
when they were trying to communicate through some sound and I wasn't able to understand, whether they thought I was a fool who could not understand. So why should a tribal child think likewise of a teacher who's bringing modern education to the person? Okay, so therefore I think I'll stop here with whatever I've said. But okay, one thing I would like to mention is what I have been thinking, being absent in this conference, and the tribal way of education. See, everything that was taught in our those village schools or those cultural schools was linked to the livelihood of the community. So if they were honey gatherers, they would teach their children how to, when and how and etc. If they were agriculturists, so it has been linked to livelihood. Now, if we decide that we go for the other livelihood opportunities and options, these other skills may be required. But then to prepare children with less reducing or decrementing the barriers of modern education and allowing their brains to work in parallel to the capacity of the others, because for them language is not a barrier. They are able to perform better. Here language is a barrier. They are unable to perform, and so they are catching up with the language, and so there is actually no equality there. And so what our Dr. Bakla has done, he has made a step of equity. And that equity plus quality can only bring that equality. And so therefore, if we are going to focus on schools in our tribal areas, I think those equity measures, which will have to be tailor-made culturally and linguistically, will have to be brought in so that they would be at the same footing at a particular stage as towards equality, and so education thereafter can be be an equalizer. Otherwise, it's only making more in the gap wider and wider. I'll stop here. Thank you very much, Professor Mitch. Very wise. And what I'm hearing you say is that, and I'm going to be very simple in very brief, is that in the absence of a known context, and when you impose a foreign context, education or true learning or building the human is lost, and therefore the opportunity to gain equality is missed. Yeah, thank you for that. Maybe to take this conversation a little further, Father Marianus, how about you explore, the negotiation and the interplay between mainstream education and indigenous education further? Thank you. In my opinion, the whole notion of so-called mainstream is problematic. People have been talking about mainstream development, mainstream education, etc. However, if I'm not mistaken, Dr. Etwar can speak his mind later, but indigenous peoples or tribals on the whole think wherever they stand, wherever they sit, that's the mainstream for them, because they wouldn't like to be part of the mainstream which burns its brides, which doesn't treat women equally, etc. So this is problematic, so I'm problematizing it, number one. Number two, I would also like to connect it with quality education. Very often, in the context of reservation policy or affirmative action, it's argued quality has been compromised. However, the main argument here is not quality, not merit, but equal opportunity. If equal opportunity is given to any indigenous person, any tribal, he or she will not only be competitive, but he or she will perform better than many others coming from the so-called
dominant society. So that's my second take. Thirdly, how is education or formation transmitted to a child who is born? The first educator, the first teacher is his or her mother. And if the mother doesn't know the language, in the context of the Koduk, she doesn't know the Koduk language, we can take other languages also, but then let's take this. Or if she is not formed well, then she'll also transmit the same to the child. And therefore, mother happens to be the first teacher along with the mother, father, family, community or village and society, ethnic group, tribal group, etc. So therefore, for the formation and education of a child in a particular setup, not only the family is responsible, but the entire ethnic group, entire tribe is responsible. And therefore, if a child or if a grown-up boy, let's say, or a girl is not behaving responsibly, not only the family but the entire community should take responsibility, as happens in other cases as well. Because it's also a question of indoctrination, what we call in social sciences, process of socialization, in anthropology, enculturation. So therefore that takes place through Dhumkudiya or through Ghotul, or there are other systems in all the tribes. So therefore, how a person has been, in fact, indoctrinated and enculturated as far as the lifestyle of that particular tribe or group is concerned. Having said that, just to add one more thing, so therefore it's also a question of identity, which is dynamic. And therefore, we are not talking about identity which is stagnant, but it is porous. It could be contextual, but there are certain limitations, because there are certain sides of identities which are more permanent than the others. But we now scholars do not accept the argument that identity is sort of stuck or it's permanent. And in this context, therefore, it's important for the tribals and in terms of education and formation to understand there are two components of culture. One is external manifestation and another is internal formation. So external manifestation, the way we dress, the way we eat, drink, etc., or the way we manifest ourselves externally. But internal formation or internal makeup takes years or centuries, and therefore the belief system, again one more concept we use of culture lag. There is material culture, there is spiritual culture. Material culture in terms of our costumes or our habits, which may change overnight. But whatever is the spiritual culture, whatever is in the mind, the formation that has taken place psychologically, mentally, that takes years to change. And therefore, it's very important for the family, for the mother, for the parents, and for the entire ethnic group to sort of form the child or educate the child in the way tribe or his or her tribe would like him or her to be. And therefore, it's very important for us to understand how negotiations are taking place, because the identity is porous, it's contextual, and it's changing, and therefore whatever formation is taking place in that context. And I would like to conclude, we have been also talking about one more concept, adaptation. However, adaptation could also be a little dangerous. Adapting to what? Adapting to the whatever culture West is bringing to us. But here I would like to place before this August gathering one component. Perhaps we could look into that more seriously later on. How we can have the best of both the worlds. Yesterday we spoke about the tension between the modernity, or rather tradition and modernity. Tribal development and modern development. Development from the perspective of the tribals, or from the top-down model or bottom-up approach. And also the same thing can be said for education, from whose perspective. And if, therefore, how do we get the best of both the worlds? From modernity, from the West, from the westernization, no problem. Because if we want to survive, then we have to adapt. But adapting to what extent, this is the question we have to ask. If we adapt to everything that is being placed before us, then it could be dangerous for the Adivasi society also. So to what extent, and so how do we make our negotiating power or bargaining power more powerful?
So that will be a real call for us, and we have to think together so that we can take our societies together. I'm talking about our societies. In social sciences, we don't talk about tribal society, tribal community. There is no one tribal community. There is no one tribal society. And therefore, that's a question of diversity. So we are talking of this diversity, diverse diversities, as Amartya Sen also writes in his book on identity. And therefore, that has to be recognized and respected, as we discussed this morning and afternoon also about customary laws. That's precisely why governance and all these whatever laws, customary laws, etc., or statutory laws and education and information are interrelated, interconnected. Thank you. That's very deep, and I heard so many different contexts and explorations in that. But it's almost like a pyramid. If I can repeat what I heard you say, the top of the pyramid is the ultimate, which is having the power to negotiate. And then as you come down the pyramid, you break that down into what makes up that power to negotiate. So, you explored the adaptation, the tension between, the modern and indigenous here, and how does one take what's good out of both and, mitigate unintended consequences in that. You also talked about how, you went all the way down to, what is mainstream, right? And how every aspect of this, especially education, is contextual, and what builds that context. So thank you. Thank you for helping us think in that direction. Thank you. I'm going to switch tracks a little bit. देवा जी, अभी हम आपके पास आने वाले हैं. You talk about self-governance, right? आपका मकसद self-governance से बहुत जुड़ी हुई है, right? But इसमें ग्राम सभा, सिर्फ एक आदमी तो कुछ नहीं कर सकता. ग्राम सभा का रोल सबसे महत्व है. तो क्या आप देख रहे हैं कि ग्राम सभा पार्टिसिपेट करती है, जितना उनको पार्टिसिपेट करना है वो करती है? अगर नहीं करती है तो क्यों नहीं करती है, और अगर करना है तो कैसे करवा सकते हैं? उसके बारे में बात कर सकते हैं. ये जो ग्राम सभा का जो है, सभी लोग ग्राम सभा बोलते हैं, लेकिन वो जमीन पर काम नहीं करते हैं. ग्राम सभा का मतलब क्या है? कौन सी ग्राम सभा है? एक है कि पंचायत ग्राम सभा है ना, एक गांव ग्राम सभा है, एक पेशा ग्राम सभा है, वन अधिकार ग्राम सभा है. ये कितने ग्राम सभा हैं इसमें? तो ये ग्राम सभा को हमने ये क्या किया कि इस पर हमने अध्ययन किया. एक आदमी का ये काम नहीं है, एक आदमी का काम नहीं है. ग्राम सभा बोले तो गांव में रहने वाले सभी लोग. और गवर्नमेंट का सिस्टमेटिक नियम होता है कि वो जो ऑर्डर लिस्ट में जिसका नाम होता है वो उसमें बैठ के उनका ग्राम सभा. हमारा ग्राम सभा वैसा नहीं है. गांव में वोटर लिस्ट में है या नहीं है, वो जो लड़की लड़के रहते हैं वो भी सहभागी हो. ये है ग्राम सभा. तो इसमें अध्ययन किया कि ग्राम सभा में लोग क्यों नहीं आते. गांव के लोग तो बोलते थे और बाहर वाले भी बोलते थे, लोग प्रतिनिधि भी बोलते थे, आईएएस अधिकारी भी बोलते थे. 4-5 लोग ऐसे बैठ के आईएएस अधिकारी का एक घंटा चर्चा किया. अब ग्राम सभा बोलते हैं. ग्राम सभा में कौन आने वाले हैं? ये किसका सवाल है? आईएएस अधिकारी, सीओ हैं, कलेक्टर हैं, ये किसका है? तो हमको तो समझ में नहीं आ रहा है कि हम कर रहे हैं लेकिन काम नहीं हो रहा. उससे उसके घर में ये चर्चा हुआ, सीओ साहब का घर में, तो कैसे करना पड़ेगा. तो आपकी जो गवर्नमेंट का जो ग्राम सभा है, इससे है कि आपकी ग्राम सभा में बुलाने का तरीका एक आमिष दिखा के बुलाते हैं. ग्राम सभा किसी को
आवास देना है, किसी को बैल जोड़ी देना है, किसी को क्या देना है, इसके लिए ग्राम सभा में आता। बीपीएल में नाम आना है तो लोग आते हैं। हाँ? ये तो बहुत गड़बड़ वाली ग्राम सभा तुम्हारी। हाँ? हमारी ग्राम सभा, गांव की ग्राम सभा जो है परंपरा से है, लेकिन उसको ही समझ के हमको आगे जाना है। गांव की ग्राम सभा को तो गवर्नमेंट मान्यता नहीं है ना, बोले गवर्नमेंट, कौन सी गवर्नमेंट मान्यता नहीं है? कौन सा गवर्नमेंट का वो दिखाओ कागज नहीं मान्यता है तो कौन मान्यता दिया है इसको? हमारा ग्राम सभा को मान्यता की जरूरत नहीं है, गवर्नमेंट की जरूरत नहीं है, हमारा है ना सभा। तो ऐसे चर्चा हुआ कि आप लोग ये एक निर्णय लेते हैं बहुमत से। ग्राम सभा में लोग आते तो झगड़ा होता है, कोई शराब पी जाते हैं, बहुत झगड़ा होता है, शिकायत बहुत हमारे पास आ रहा है, पूरे देश में झगड़ा ही होता है, निर्णय नहीं होता है। तो उसमें क्या है कि वही तो एक एजुकेशन का आपको मौका मिल गया। तो झगड़ा क्यों करते हैं, कारण कौन सा है? वो नहीं आते ये एक सवाल है, दूसरा आते तो झगड़ा करते हैं, तो वो एक सवाल हुआ। इससे और भी अध्ययन करने को मौका मिल गया। इंसान का मानसिकता है, मानस शास्त्र बोलते हैं। आप पढ़े लिखे हैं, मैं तो नहीं बोलना ये बराबर नहीं है, लेकिन बोलना ही पड़ेगा। ये है मानस शास्त्र, मानव शास्त्र और समाज शास्त्र और पॉलिटिकल शास्त्र, अर्थशास्त्र, एजुकेशन शास्त्र, हेल्थ शास्त्र, भूगर्भ शास्त्र। क्या पढ़े 3 दिन में? इतने तो यहाँ चर्चा हुआ। जमीन में कितना पानी आता है कौन जानता है? तो ये जानता है वहाँ के आदिवासी के पास। ट्राइबल जो है ये कोई यूनिवर्सिटी में नहीं हुआ, वो डायरेक्ट है, और आप लोग पढ़े हैं तो इनडायरेक्ट है। वो जाने में बहुत समय लगता है, इधर उधर जाके फिर भी गाँव में जाने, तो वो डायरेक्ट हो जा रहा है। तो वो ग्राम सभा निर्णय कैसे लेना? तो सर्वसम्मति से, एक भी आदमी विरोध न हो। अगर विरोध हो, सहमत नहीं है तो वो काम नहीं। इसमें भी बहुत सवाल खड़ा कर दिया लोगों ने, अरे एक आदमी सहमति नहीं है, यहाँ तो सब आदमी आपके पास है, क्यों निर्णय होगा, क्यों नहीं करते हैं? ये तो समय लगेगा। ये समय लगेगा तो कैसे लगता है? नहीं लगता, नहीं लगता। आप लोग एक बाजू में देख रहे हैं, दूसरी बाजू भी देख रहे हैं। तो सर्वसहमति का निर्णय में मैं बोला ना उस दिन, आईएएस अधिकारी का ये सवाल है, दुनिया में नहीं हो सकता। पति पत्नी का सर्वसहमति नहीं होता है, गाँव की बात क्या नहीं होता है। वही काम तो हमको करना है, होता है उसको तो कोई बताने का कोई जरूरत नहीं है। तो इसका अध्ययन हुआ कि क्यों नहीं होता है, किस कारण से नहीं होता है, इसमें क्या जोड़े है। ये हम यहाँ से अध्ययन अलग अलग तरीके से हमने किया। सब अनपढ़ लोगों से पहले ये करें। अनपढ़ लोगों में कोई इसमें नहीं है ना, आदिवासी में लोग जमीन में उसका है ना यूरिया और डीएपी नहीं डालता, वैसा अनपढ़ अशिक्षित जो आदमी है उनके पास गड़बड़ नहीं है। ये आधा शिक्षित है ना, इनके बहुत गड़बड़ है। तो पूरा भी नहीं, आधा भी नहीं, गड़बड़ होता है। तो उनसे भी चर्चा करना जरूरी है, क्यों ऐसा बोलते हैं। मानव शास्त्र जो बोलते हैं, मैं तो नहीं पढ़ा है, बहुत पढ़े हैं बोलेंगे आप। नहीं, मेरे को जो ऑब्जर्वेशन आपसे मेरे को ऊर्जा मिल रहा है, आप तो पढ़े हैं ना, है ना। तो वो हमने किया कि इस जगह पर जहाँ सर्वसहमति का ग्राम सभा होता है, वहाँ हमारे एक समझ है, भगवान रहता है। जहाँ तोड़ फोड़ करता है वहाँ शैतान रहता है। देखो क्या चल रहा है इसका। तो भगवान कहाँ है? तो ये विज्ञान और अध्यात्म दोनों को साथ साथ लेके जाना है। इसमें क्या है ग्राम सभा? भगवान भी है। यहाँ कोई हम उनको ऐसा अधिकारी को बोला है, यहाँ सिर्फ उन्होंने बोला आदिवासी का ग्राम सभा हो सकता है। गलत सोच कर रहे हैं। आदिवासी का ग्राम सभा नहीं, मानव जहाँ है वहाँ उनका ग्राम सभा होगा। आदिवासी गैर आदिवासी बाजू में रखो। मनुष्य जो है
इनका ग्राम सभा होगा। तो तब उनका देखिए कैसे होगा, तो होता ही नहीं। तो हम कभी कभी अभी जो है ना, हम यहाँ आने से बहुत डरता है। यहाँ तो बड़े बड़े सब पढ़े लिखे लोग हैं, हम कैसे बोलेंगे? अभी तो पूरा मिल गए, कैसे बोले तो तुम सवाल ले लेना। हम एक ही आदमी वैसा हम जाके हुए आए अधिकारी का, तो इतना हम पढ़े लिखे हैं लेकिन इतना हम अध्ययन नहीं किया। फिर काय का अध्ययन किया? अध्ययन काय का किया? तो वो बताया नहीं कि अध्ययन क्या है, हम पढ़ाई की तो वो बोले ना कॉलेज नॉलेज भी ले, हाँ कॉलेज का नॉलेज इनको है लेकिन इंग्लिश का नॉलेज नहीं है। तो उसको क्या कि ये देखिए शासन ने क्या प्लानिंग किया गया है। ये पंचायत एक्ट लागू किया। इसका अर्थ क्या होता है? हमारा ग्राम आदिवासी का पंचायत का अर्थ क्या होता है? पंचायत का अर्थ हमारा आदिवासी का पहले से ही परंपरा से पूरा है, सबको लेके वहाँ उधारी सब लोग निर्णय लेते। ये समझना जरूरी है। ये अगर नहीं समझेंगे तो आगे गाड़ी नहीं जा सकती। पंचायत का मतलब क्या होता है? पंच, गांव पंच, पंचायत पंच। तो पंचायत में कितने लोग रहते हैं? 4-5 लोगों को चुन के देते हैं। आपके पास कितने उंगली है? 5 है। ये यहाँ देखिए, कागज मत देखिए, हाँ 5 उंगली है। तो गांव में एक आदमी को चुन के देते हैं, उसको क्या समझते हैं? एक मुखिया। और देश में चुन के देते हैं, राज्य में चुन के देते हैं, उनको मुखिया। और हम कहते हैं, समझते हैं सज्जन। उसका नीचे दुर्जन, उसका नीचे महाजन, उसका नीचे सामान्य जन, उसका नीचे निर्जन। कितना हुआ? ये है पंच। और इसको अगर एक कट्टा लाना है तो ये उंगली तो सरी का नहीं है, कैसे आ जाएंगे? ये सीखना है, ये समझना, एक दूसरे से सीखना है। ये 5 उंगली एक सरका नहीं आता है तो तुम सर्वसम्मति का बात नहीं। इसीलिए भगवान ने क्या किया कि इस धरती में कितने जीव जंतु तैयार किया, कितने प्राणी तैयार किया, अगणित है बोलते हैं हम। हमारे जो अध्ययन में आता है, बड़े बड़े साइंटिफिक होते हैं, अधिकारी होते हैं और विभाग के होते हैं, बहुत जीव जंतु है, कोई हिसाब नहीं किया। अच्छा हिसाब तो नहीं किया है। एक प्राणी ऐसा है, 2 पाई उपाय, समझ में आया? 2 पाई उपाय, 2 पाई है लेकिन उनको उपाय बहुत है। कौन सा प्राणी? मानव। मानव को विशेष भगवान ने क्या दिया? बुद्धि। बुद्धि कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के हैं, एक सद्बुद्धि, एक दुर्बुद्धि। है कि नहीं? ये शॉर्टकट में है। हाँ। तो दुर्बुद्धि सद्बुद्धि देते हैं। तो इनका बुद्धि का उपयोग करिए और विज्ञान और आध्यात्मिक का उपयोग करिए। विज्ञान का बहुत प्रगति हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है। ये पृथ्वी का आदमी चांद पर गया लेकिन नजदीक का गरीब आदमी का पर नहीं पहुंच पाया। काय का ये डेवलपमेंट यह है हमारा है। तो क्या कि बुद्धि का उपयोग करो। बैठे बैठे 5 उंगली एक सर्कल लाना है तो बुद्धि से ला सकता है, बराबर। तो यह है हमारा क्रिया कि अगर इन लोगों को, गांव वाले आदिवासी को वो बराबर वो बताइए, भूखे पिरा के नहीं बोलेगा, लेकिन पढ़े लिखे लोगों को समझाना बहुत मुश्किल है। तो इसमें ये आया तो बोले कि ये तो एक गांव होगा, 10 गांव होगा। क्यों एक गांव होगा? ये है इसका 5 उंगली का समझ में आया? सज्जन, महाजन, दुर्जन, सामान्य जन और निर्जन। वह है कि ये उंगली है ना, ये बड़ा है, ये है सज्जन, मुखिया। हम मानते हैं ना, मुख्यमंत्री चुन के दे दिया, मंत्री चुन के दे, अच्छा है, काय का अच्छा है, उसको टेस्ट किया, उस लायक का है था या नहीं था, ये तो करना है। तो ये सज्जन को, ये क्या है? ज म्हणजे जनता, ज म्हणजे जमीन, ज म्हणजे जंगल, ज म्हणजे जग, ज म्हणजे जन्मत,
5 है, ये इनको 1 कट्टा लाइए गांव के विकास के लिए। ये हमारे आदिवासी जो है ट्राइबल वो है भी रहेंगे, उनसे जाके पूछो। हम तो इनसे सीखा है ना, कहीं जाने का जरूरत नहीं है, बराबर वो कर रहा है, उनको उन पर डिस्टर्ब मत करिए। तो यह इसका करके इसका काम क्या है सज्जन का, सबको एक जगह बुला के सबका जनहित चुनना सज्जन का काम। और दुर्जन का काम कैसे भी बोलो, तुम्हारा पैर खींचने वाला है, वो पत्ता कट करने ही वाला है ना। तो उनको उन पर ज्यादा प्रेम करना है, विरोध नहीं। वो ही सच्चा आदमी है। उनको भगवान ने गुण दिया कि कैसे भी हो, कहे भी जाओ, तुम विरोध ही करो। देखो ना वहां, जब तुम विरोध करेंगे तब देखिए वो आदमी खराब नहीं है, खराब नहीं है। तुम्हें इसका जो आपको सीखना है तो वो उनका काम है। महाजन का काम क्या है, अब दादा कुर्सी में बैठे हैं, देखिए उनका कहाँ पर्दा झुकता है, इधर झुकता का उधर झुकता, ऐसा झुकता। उनके पास बुद्धि और पैसा, यह है महाजन का काम। सामान्य जन का काम क्या है, सज्जन कह रहे उनके तरफ झुकते हैं, वो दुर्जन कह रहे उनके तरफ झुकते हैं। और निर्जन का काम, यहाँ निर्जन, अभी बुरा गुस्सा मत मानिए, बुराई मत मानिए। यहाँ जो बैठक में आए हैं, कितने दिन आए एक भी बात नहीं बोले, तो निर्जन का ग्रुप में जाएगा। हाँ भी नहीं, नाम भी नहीं, है ना। ऐसे ही ग्राम सभा में है, गांव में है, वो तो यूनिवर्सिटी वहां सीखना है, यहाँ तो हम चर्चा करते हैं। और पॉलिटिकल साइंस वाले कौन है, तो पॉलिटिकल का उसका गणित देखो, हिसाब करता है। अगर वो नहीं बोलने वाले है ना, वो सज्जन बोल रहे तभी भी वो नहीं बोल रहे, वो समझ रहे कि भाई ये मेरे बाजू में है। और दुर्जन बोल रहे तभी भी वो नहीं बोल रहे, उनका स्नेह होता कि मेरे बाजू में। देखिए पॉलिटिकल साइंस वाला दुर्जन ने वो नहीं बोलते हैं ना, इससे फिर 2 गुट तैयार होता है। सर्वसहमति के रुकता नहीं, किसी को भी विरोध नहीं है, लेकिन विरोध करता है उन पर ज्यादा प्रेम से बोलो। जब हम लोग एक संघ है ना, यहाँ हम बोलते हैं हमारा विश्वास का आदमी है, अच्छा है, हमेशा बैठता है, इसमें कभी धोखा देगा पता नहीं, लेकिन वो विरोध करने वाला कभी धोखा नहीं दे सकता, क्योंकि ये हमारे भाई है। और जो है सामने गड्ढा है, वो उसमें ये जाके गिरेंगे, इसलिए आपका विरोध कर रहा है। तो तुम्हारा दिमाग चलता है, हम गलती तो हुआ नहीं है, कहाँ तो गिरेंगे तो नहीं। देखिए समाज करते रहता है, समझ में आए। अभी ज्यादा समय नहीं लगता, हम यहाँ बैठे हैं, ये हमारी ग्राम सभा है। अभी ये लोग हम इधर बैठे हैं, तो इधर एक यहाँ रहे 2 मजे, एक सर्वसहमति, एक असहमति, और हमको एक रास्ता बनाना है। तो गांव में एक ना एक विरोध करेगा, मेरा सहमति नहीं है, तो इधर ही बैठ के बोलेंगे कि भाई सहमति क्यों नहीं, किस कारण से नहीं है, उनको बताना पड़ेगा। और सहमति वाले यहाँ जो हम यहाँ बैठे हैं, नीचे भी बैठे हैं, यहाँ जो बैठे हुए इसको हम क्या समझते हैं, ये लोग बहुत बुद्धिवान लोग हैं, है ना, इनके पास कुछ भी नहीं है, कोरा पार्टी है। तो ये जो बाग होता है, ये सर्वसहमति देने वाले लोग भी हमारे यहाँ पुजारी बैठे हैं, तो मुंडकी हला के सहमति देते हैं, है ना। हाँ, तो ये ऐसा नहीं होना, आपको बोलना पड़ेगा एक एक आदमी को, तभी लोक सहभाग होगा। तुम्हारा बीमारी क्या है अंदर, बोलेंगे, मुंह खोल के बोलेंगे तब तो अंदर का खोलेंगे, नहीं तो कैसा समझेंगे। ये है हमारा, समय नहीं लगता है, जो बड़े IAS अधिकारी को भी वहाँ आना पड़ा। अब काय के लिए काम करते हैं, जनता के लिए, ये काम करना कि नहीं करना आप सोचिए। ये सीधा सीधा है, ज्यादा समय लगता ही नहीं। हाँ, सभी लोग यहाँ आके
गुस्सा लेके आते हैं, लेकिन वहाँ आके उसका बैटरी ही चार्जिंग होता है। थोड़ा हुआ कि नहीं? मोबाइल चार्जिंग हो रहा है ना? हो रहा है। ये है काम का, लेकिन समय लगता है। समय लगता नहीं है काम करने का तरीका और सस्टेनिंग डेवलपमेंट शाश्वत ये है। मैं तो क्या है, भाषण देते रहते हैं, भाषण में तो राशन मिल रहा है लेकिन ये भाषण का कोई उपयोग नहीं। हम अभी भाषण देना बंद किया है, चर्चा करिए। दूसरा है ग्राम सभा मजबूती करना है, तो हमारे गांव में एक छोटा सा गांव है, उदाहरण में टोला है, पाड़ा है, उसका अध्ययन ग्राम बैठक, अध्ययन ग्रुप में रहना चाहिए। अध्ययन में कौन रहेगा? चुने हुए लोगों को वहां नहीं रखना। वो चुने हुए लोग चुन के देंगे ना, वो बोलेंगे तुमने चुन के दिया, मेरे को क्या करना है? वहां जाके सोचता है सब। देखो वो लोकसभा और विधानसभा, अरे उनको इच्छा ही नहीं होता है। तो वहाँ ऐसे लोग ना कि 2 दिन में, यहाँ मैं देख रहा हूँ टाइम टू टाइम, कोई इधर उधर नहीं है। ये है गहराई से इसका ज्ञान और ये करेगा तभी इसका लाभ मिलेगा। वैसा गांव में भी करेंगे। और महिलाओं का सहभाग है ना, महिला कितना अध्ययन करते हैं, बारीक से बारीक। वो ज्यादा काम घर में करते हैं, लेकिन अध्ययन में बैठते हैं। उनको महिलाओं को और साथ लेके अध्ययन करना है। हम उनको कोई मुद्दा नहीं देना, इशू नहीं देना। बैठे तो कोई भी कुछ भी चर्चा होता है, और मुद्दा लेके अगर बैठेंगे तो वो चर्चा नहीं होता है। जैसे कि पेशा में अबंध निधि और अनप्लानिंग निधि, अनप्लानिंग है ना, और प्लानिंग वाला यही करना है, ये प्लानिंग का काम। हाँ, अबंध वाला क्या करना है आपको निर्णय देना। वैसे ही अध्ययन ग्रुप में कोई चुने हुए विषय पर नहीं, हर आदमी का जो है इसको कमजोर मत समझिए। कोई भी हो, वो भेड़ बकरी चराने वाला भी है, और ये व्यवस्था बदलना और सक्षम करना है, तो सबका सर्वसहमति, सबका सहभाग और नियमावली बनाना पड़ेगा। अध्ययन ग्रुप में निर्णय नहीं लेना। अध्ययन ग्रुप कितने भी घंटा आप चर्चा कर सकते हैं। ग्राम सभा में 1 घंटा में ग्राम सभा खत्म। दिन भर नहीं करना है। हम तो दिन में तो काम करने वाले, मजदूरी करने वाले, कौन बैठेगा? ये ग्राम सभा, शासन का ग्राम सभा, हमारा सचिव जो है ना, घड़ी देख के आता है 12 बजे, हम जाते हैं मजदूरी में, कौन रहेगा वहाँ? हमारी ग्राम सभा का नियोजन हम ही करेंगे। ये होने वाला ही है, नहीं करेंगे तो इसका एक दिन होगा धीरे धीरे। ये तो ये मोहल्ला ग्राम सभा, गांव ग्राम सभा, इसके उसको 4 दिन करने वाला अध्ययन ग्रुप, वो गांव का ही नहीं, गांव में अगस्त का जो है ऐसे वो वही है। और अधिकारी भी रहेगा, अधिकारी लेवल का पॉलिटिकल प्रतिनिधि हैं, उनके साथ सेवाभावी संस्था है, उनके साथ, और सभी समाज के साथ इसका बहुत परिणाम होता है। अध्ययन यही विषय है। अब हम कर रहे हैं ना, कोई समस्या नहीं है। अब बैठते ही नहीं। वो ये है ना, पॉलिटिकल प्रतिनिधि हमारे यहाँ बीजेपी, कांग्रेस, शिवसेना और गोलवाना दुनिया भर के पार्टी। एक गांव में 17 डिपार्टमेंट, एक गांव में 17 पार्टी। क्या काम किया? उनको बैठक के सिर्फ चर्चा कर दो, अच्छा बोलता है वो बहुत। और इससे फिर उसका एक यहाँ है ना, सिर में जो कचरा साफ होता है ना, साफ सफाई करना है, स्वच्छ भारत करना है, तो हमारा सिर भी स्वच्छ करना है, तभी भारत स्वच्छ ऐसे करते हैं। कोई कॉलेज होगा, यूनिवर्सिटी होगा, प्रोफेसर का काम क्या है? वही तो एक गाँव सुनो, ढूंढ के ये काम सुनो, अच्छा ही होगा। लेकिन उनको कुछ भी काम नहीं करना, पैसा बाहर से नहीं लाना, उनका डबरी नहीं बनाना, रास्ता नहीं बनाना, मकान नहीं बनाना। हम इस करने के लिए हम लोग आए नहीं, हम चर्चा करने के लिए आए। क्या चर्चा करेंगे? ना क्या वो भी निकालते हैं उसमें। यह है हमारा तरीका। ये सक्सेस है, सक्सेस है। हाँ,
देखते हैं मेरा बोलना तो ऐसा होता है, मेरा गड़बड़ भी होता है। देवा जी थैंक यू, क्योंकि बहुत ही कम लोग जो आपने किया है, बहुत ही कम लोग किए हैं, इसलिए सिर्फ आपके पास आपका ही सुनना, आई मीन आई एम श्योर अ लॉट ऑफ अस वुड जस्ट लाइक टू कंटिन्यू लिसनिंग टू देवा जी, बट मैंने जो सुना है, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई कर सकती हूँ तो जो सबसे इम्पोर्टेंट है, ग्राम सभा आदिवासी कम्युनिटी में पहले से ही उसका जानकारी है, उसका प्रैक्टिस है, राइट। एंड ग्राम सभा अलग अलग तरीके के होते हैं, बट ब्यूटी ऑफ द ग्राम सभा ये जो है कि सभी का आवाज सुनना चाहिए और सभी के साथ बात करना चाहिए, राइट, एंड मिल के डिसीजन प्लानिंग करना चाहिए अपने के लिए क्या चाहिए। थैंक यू वेरी मच। I'd like to move to you, Dr. Baka, and what I would like to hear from you is again related to the community, right? Acha, which is, you have an amazing intervention, an amazing solution that you have created in your school. But as you say, it's not yours, it's ours. And that ours implies a community. So, can you talk more about, what role you find the community playing, or you wish that they would play, and how do you catalyze this role so that the solution that you have built is sustainable and it goes on for generations? Thank you. First of all, one's lifetime is not enough to be worthwhile or visible, and I do realize that. Now, I give just one information, is this, that I had mentioned that Ashok Bhagat is also trying his own area. Gita Shri and Arunarao, they have got Adivasi Vikas Parishad, they are also running Murtumukudia. Then my friend Tom was asking where you can see Dhamkudia, and that is in Lower Daga. There is Nagaraj, he has got Dhamkudia is running very good, beautifully well. And so the concept of Dhamkudia, going back to our roots, and then and revive it in a renewed form so that it will be modern and palatable to the younger generation. They are doing that one, so it is multiplying. So we are hopeful, and that is a green signal. And then, you see, we have to be updated, as Dr. Mariana says. And I am also of that opinion. And that comes only when new blood is injected into any movement. Of course, we have not yet formed, if you can say, a registered organization, or we can say new congregation, or something like that which can continue. But the mere fact that the Dhamkudia concept is multiplying and institutions are mushrooming, already idea has taken root. And as I said, it is not mine, it is of the community. So community is taking initiative. So I am hopeful that in the near future they themselves will organize, find better ways maybe than what we have started, and it will continue. And then little time that is granted to us, because after certain age every day is a grace. So if God gives a little more time, I would like to animate more, motivate people more, so that they will come into this thinking and then look after themselves. I always put model, and that is common for all of us. हम लोग उदाहरण के लिए हम हमेशा किसी बड़े चीज़ को रखते हैं ना, और मैं जरूर उसको देखा हूँ और इसलिए महसूस करते हुए लोगों को प्रेरित करता हूँ कि वो लोग उसे उसकी ओर देखें। और जैसे जिस
देश में जिस समुदाय अपने भाषा की महत्व है और उसी के आधार पर वो लोग अपने को संगठित कर रहे हैं, सोच रहे हैं, निर्णय ले रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, वो समृद्ध होता है और सफल होता है। और उसके लिए हम लोग थोड़ा सा देखेंगे, उदाहरण के लिए इसराइल, अभी भी वे लोग जहाँ तहाँ भटके हुए हैं, लेकिन वो लोग अपने बच्चों की इसराइल भेजते हैं और भाषा सिखाते हैं। अमेरिका से, रशिया से, जहाँ भी है वो लोग हैं, और इसीलिए वो लोग दुनिया में टॉप हैं, क्योंकि भाषा, संस्कृति, परंपरा, पहचान को वो लोग बहुत महत्व देते हैं। दूसरे देखिए जर्मनी, वो भी बहुत आगे है, क्योंकि भाषा स्टेट है, कंट्री है। जापान देख रहे हैं हम, छोटा सा देश दुनिया को कमांड करता है। वैसे बहुत सारा जो ग्रुप अपनी भाषा को महत्व दिया है और आगे बढ़ रहा है, वो आगे बढ़ रहा है। हमारे देश में भी जितने लोग स्टेट है, वो लोग अपने भाषा को महत्व दिए, वो लोग जरूर आगे हैं, वो लोग स्टेडी है, वो आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ, मेरा विश है, मेरी प्रार्थना है कि मेरा समुदाय, हम लोग आदिवासी समुदाय भी अपनी भाषा को इतना महत्व दे कि आगे जा कर के वो लोग भी अलग अलग नेशन भी बन सकते हैं। वही मेरी इरादा है और आशीर्वाद है। थैंक यू। Thank you. And from you, I heard about the importance, of course, of community involvement and motivating more people to get involved, and also about this beautiful concept of how bhasha is important for identity and how that connects with becoming a nation builder. So thank you for that. I'd like to end this round of questions finally with Dr. Bara. My question to you, Dr. Bara. So the theme of today's panel discussion is indigenous ways of education, human formation, and governance systems. Now, these are not three separate concepts. So if you will, I would like you to weave them together and talk to us about the connection. Thank you. As I said before, I look these three ideas, these three concepts, not in isolation, but together. So the indigenous ways of education, human formation, and governance system is basically, it's all together answering who we are. So first of all, I really want to congratulate the entire team, because here we are sitting today since morning, and finally, talking about the entire discourse on tribal identity, education, and all. So it gives me a feeling that finally we have realized. There is a sense of realization to question who we are, and also the realization that there is a problem. And we are sitting to discuss that, to deliberate on that. This brings me to the question of indigenous education. Rather, I would say, the education of the indigenous people. Now, why do we really want a separate school? We all are sitting here, maybe the first generation learners or the second generation, educated in different medium of schools. So why do we need a separate school altogether? Yes, language is important. First of all, it is needed, and that is what, our renowned Dr. Edward Rao, he brought up the solution because there was a problem. There was a problem because the problem is coming from the very tribal disintegration. I completely agree with Professor Mariana Skujur when he says that the education starts from family. हम लोग अपनी भाषा जो है, अपना कल्चर, हम लोग जो खाना खाते हैं, जो हम लोग गाना गाते हैं, जो हम लोग नाच गाते हैं, मेरी परवरिश बाहर शहर में हुई, लेकिन कहाँ से सीखा? अपने घर से, अपने माता पिता से. Yesterday someone, and that was a very strong statement,
I do not know my language because my parents never spoke. That was very striking. And I told that, it is your responsibility, rather the responsibility of the elders, to teach their young child who we are. We are just left to the outer world when we go outside. And then we are asked, "Aap kaun ho? Aap ye ho?" Some of us are baffled. We do not know who we are. And some of us, we are confused. And that is where, today there was a very interesting presentation, the psychological dimension. This loss of language is a loss of identity, loss of culture. And that is actually the loss of self, the state of complete loss. And we are confused. And that sense of confusion definitely leads to the overall degradation, the overall, the complete destruction of not only that individual, not only of that family, but of the complete society. So henceforth, it is really, rather I'm quite happy because we are discussing a problem, we are discussing the experiment, we are discussing the different solutions. So first of all, we need to acknowledge that education starts from the family, from the parents, telling about who we are, what our identity is, be it culture, be it language, be it your food, be it your, the different. So the rhythm of Bandha, we need to know. The dance moves, we need to know. How many of us here, sitting here, we really know what is Damkach? Maybe few of us, not all of us. Here I will just tell you about one particular incident from the Aboriginals of Queensland, Australia. Now, we are very fortunate because in India we never had those kind of instances. But in Australia, what they did, that when a child was born, it was being taken by the state. सरकार उस बच्चे को ले लेती थी और उनको अलग हॉस्टल्स में रखती थी जहाँ से उनको माता पिता से दूर रखा जाता था, उनके कल्चर से दूर रखा जाता था. क्यों करती थी? Because it was a civilizing mission. We have gone through that civilizing mission in India. Today we have, a lot of stories which were coming up. But this particular civilizing mission went to that extent that the child was completely away from the parents, never knowing that who his or her parents were. वो बच्चा अपनी भाषा भूल जाता है, वो बच्चा अपनी आइडेंटिटी भूल जाता है. I had a chance to meet one such woman, जो बचपन में अपने घर से उसको अपने माता पिता से दूर कर दिया गया था. वो अपने लेट 30s में आती है ढूंढते हुए कि मेरा घर कहाँ है, और वो अपनी भाषा सीखने की कोशिश कर रही थी. तो वो है कि जब वो अपनी भाषा नहीं जानती, अपना आइडेंटिटी नहीं जानती, she was in a crisis. So henceforth, language is important. But apart from the parents, when we talk about the indigenous people's knowledge, we need to tell our children what our stories are. जो हम लोग रात को सुनते थे नाना जी से, दादा जी से, वो stories अपने गाना के माध्यम से हम लोग को बताना है. And in fact, all those symbols, say for instance, again going back to Australia, they have kept those symbols. They are taking the child, they are taking the children to those sites, showing them that this is what your ancestors have left. And that is giving them that sense of identity, a strong identity, the power that yes, this is what we are. And they are trying to, definitely the relations had broken, but now they are trying to connect it. So even we should also really attempt to take back our children, connect it, those symbols, those culture. Another very important thing is about learning from experiences. In the last 2 days, we have, interesting experiments and interesting instances. They told us our experiences. Dr. Etwa Rao, उन्होंने अपना experience बताया. उन्होंने क्यों शुरुआत किया, कैसे शुरुआत किया, क्या challenges थे. और उसी तरह से हम लोग को तोफा जी ने बताया उनके अपने experiences. ये जो experiences होते हैं, जो हम लोग अपने माता पिता से या तो अपने बड़ों से घर पे सीखते हैं, और वो हम लोग को help करते हैं आगे बढ़ने के लिए. But again, I'm not romanticizing this entire concept of indigenous people's knowledge and the education system because, we have gone way ahead.
And we really have to live in a real world where there are market forces, where there are neoliberal forces. And henceforth, we need to balance. On one hand, what I'm saying is, I'll just take that particular thing about adaptation. Yes, we need to adapt, but to what extent? So here, we have to adapt, keeping intact our identity. That is very much important. Second is, being tribal. It is also, when we look through the lens of, so say for instance, what I say is we have to connect with the past, with the spiritual world, our own worldview. So we are related to each other, to the natural environment, to the spiritual world. So the education through our own culture, our language, it is very well connected with the natural world, with the environment, with our own ecosystem. And that is actually forming our worldview. And that is giving the shape to who we are. That is about the human formation, about the values. So we cannot detach it. Our values are coming from there. Our existences are coming from there. And the most important question is that yes, now we have done it. As I was telling you previously, that how to replicate it. But the most important question is how to sustain it. So it is about what I told you, about the realization. Second is about the revival. We are in a revival process. Some of us being uprooted completely, some of us are still connected with our roots, but it is a revival process of our identity. We have become more assertive. But again, it is another thing which is about being responsible. So being responsible of keeping our identity intact, along with that, giving it to the next generation, what we want, in the right way. So here, we see there is a gap. There is a real gap. Because we need to acknowledge, we need to see the fractured lines. The fractured lines which has really disintegrated our society. On the lines of the tribes, we are divided. So here we are together, but the moment we go back to our home, we become Brahms, we become Mundas, we become Poles. Why not we are together? We are divided on the basis of religion. So right now, like those who are from Central India, Jharkhand, they might be knowing that what kind of movement is going on in Sandapur. So once we were neighbors, now we do not talk to each other because I am a Christian and the other one is Sarna. And within the Christian, my identity is, okay, are you a Roman Catholic? Are you a CNI? Are you a, Algerian? So why is it so? If I'm a Christian, why not? I'm just a Christian. Why do I need to define? Why do I need to tell very categorically that out of these three, who am I? And here we are sitting for the tribal identity. That is what is my original identity. So why I'm asking that question? So henceforth, these fractured lines need to be resolved on the basis of being urban and rural. Rather, we are all the urban elite. Yeah, no, really. The word I have chosen very thoughtfully. It's not coming just like that. And so how many of us, we are sitting, we are talking about the tribal identity. Millions of people are sitting there right in the village. We have to relate with them. Because whatever we are discussing here, finally it has to go to them. Rich and poor. The status has come very clearly. Tribal society is no more an egalitarian, full of equity. No. We differentiate on the basis of kaun kitna car hai, kiske paas kitna paisa hai. That is a reality. If we are talking about tribal identity, let us also acknowledge the differences. Let us also talk about it. So here, first of all, before adaptation, I would rather suggest, let us embrace who we are. Whatever differences we have. First, we have to accept who we are. Secondly, it is very important to have a dialogue, the communication. We are having dialogue, we have representations from different states. We have to dialogue within ourselves. Before we say to the world that we are the tribes from India, let us have a dialogue and let us be united. And that is what Mr. Tofa has been talking about. Very beautifully, he actually narrated
what Eleanor Ostrom talks about in her book, Governing the Commons, about the community. The tribal society is distinct because it is a community. It is one. So the sense of community has to be there. And you know what Mr. Tofa was talking about, कि हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं कि सहमति है नहीं है, वो है सेंस ऑफ कम्युनिटी. और वहीं से आपका आता है कलेक्टिव राइट्स, वहीं से आता है आपका कलेक्टिव पावर, और वही पावर आपको देता है नेगोशिएट करने के लिए. तो जब तक हम लोग एज अ कम्युनिटी नहीं आएंगे, जब तक हम लोग कलेक्टिवली नहीं आएंगे, तब तक हम लोगों के पास कोई पावर नहीं है नेगोशिएट करने के लिए. और जिस दिन हमारे पास पावर नहीं होगी, यस, वी डू नॉट हैव पावर. So, as you know, yesterday in one of his talk, Dr. Mayanus Kujuri really asked a very critical question: who owns the resources? Who controls? Who manages? So here, on the basis of the policy documents, on the basis of the legal documents, we are. But do we understand it? And are we able to put it into action? No, we are not. So, along with that, these whether owns, we also need to see that how we are really able to put it into action. And henceforth, I believe that documentation, writings, record keeping the footprints for the future generation becomes very important. If you look into the indigenous movement, again going back into the Latin America and the Australian movement, what we see, for them, it is those footprints of the past, and on that they are negotiating. We do not have. We have lost. आज सुबह किसी ने टांगीनाद के बारे में कहा, चर्चा में सुबह में था. कभी वो हम लोग का हुआ करता था. We have lost it. So we are not able to. So in that way we are powerless. And as I told you, that when we do experimental learning, we have to question, we have to experiment, we have to experiment again and again, we have to question again and again. We need not be into that situation. What yesterday Dr. Bakla was saying, we are very enthusiastic to start anything, and after halfway through, we just surrender, or we become weak, or we just give up. If we have the give up attitude, we are never ever going to be successful, no matter how many conferences we keep doing it. And lastly, adaptation. Yes, that is the way out. Adaptation, because we cannot go back into the same, the same ancient world. I think we are not, and we should not. We have moved out of that. But when we talk about adaptation, it should be to fight, to sustain, not to lose one's identity. And we have to adapt on our terms, keeping intact who we are. So I think this is what my last point was. Thanks a lot. Thank you very much, Dr. Bara. That was, to me, it sounded like a journey that you were describing, one where identity is at the core, and what happens when there's a loss of identity, and how do you protect identity without allowing it to be eroded by different factors, but allowing it to be enhanced and to evolve and not be static. So thank you very much for that, and also for about how all of these aspects, education, human formation, governance systems, all of them are parts of a whole, which is the identity. Thank you. I'm not sure if we have time for questions. I see the organizers shaking their heads. Maybe 5 minutes? Can I negotiate 5 minutes? Okay, we have 5 minutes. So let's take maybe 3 questions. I'm sorry to do this to you, but 3 questions, and then we'll have a few quick answers, if that's okay. Yeah? Who has questions? Okay, there's a question back there. Okay, so there's one back there. And anybody
so we can. I have this for Dr. Batra. When you're talking about Israel and what we are seeing about Israel these days, it's disturbing. But when you are putting it in a context when we are talking about tribal indigeneity, are you trying to tell us that we have to learn what from Israel? We have got everything to learn about. We don't have to copy anything. But you time and again, in the morning you mentioned Israel, even now you mentioned Israel. What of Israel do you want us to emulate, copy? What is it that you want us to learn from Israel? We take 3 questions. जी नमस्ते, मेरा नाम प्रोफेसर साहू है, मैं झारखंड गुमला का हूँ और मैं इस मीटिंग में बहुत सडनली 1 घंटा भर आया, तो कुछ भी मुझे नहीं मालूम किसी का सवाल का जवाब, पर जो भी बात किया मेरे दिल में चुभा कि मैं भी कल्चर पे भाषा में काम कर रहा हूँ झारखंड में, और दिल्ली में रहता हूँ। तो इस जो भी यहाँ पर काफ़ी बच्चे लोग हैं जो दिल्ली में रहते हैं, उनको अपनी भाषा की जो ट्रेनिंग इधर किसी न किसी तरह माध्यम से होना चाहिए। और अभी झारखंड सरकार ने ये निकाला है कि गवर्नमेंट जॉब उन्हीं को मिल रहा है जो लोकल लैंग्वेज में बोल सकते हैं, लोकल भाषा में एग्जाम दे सकते हैं। तो सॉरी, मुझे किसी से ज़्यादा नहीं कहना। मेरा सवाल पूरा पैनल के लिए है। हम लोग बहुत कुछ सीखा और मैं ये देखा कि जैसे आप लोगों ने बहुत बार बोला भी है, अडाप्टेशन की ज़रूरत है। अब सवाल है इसको हम कैसे करें, क्योंकि गांव में जो हमारे पढ़ा के राजा लोग हैं, राजा देवान जो हम बोलते हैं उनको लीडर्स, अगुआ, नेता तो नहीं बोलते हैं, अगुआ बोलते हैं, और हम जो इंटेलेक्चुअल यहाँ बैठे हैं, हम दोनों के बीच में फ्यूजन कहाँ होगा, कैसे होगा। अब हम लोग बहुत सारे डिस्कोर्स करके हर चीज को हम लोग एक अलग ढंग से देख रहे हैं, नई चीजों को हम लोग उजागर कर रहे हैं। इसको हम लोग किस ढंग से हमारे जो पारंपरिक अगुआ लोग हैं जो हमारे समाज को आगे ले जा रहे हैं, उनके साथ हम इसको कैसे फ्यूजन करेंगे, ये मेरा एक सवाल है। इसका कलेक्टिव आंसर ढूंढना है। Actually, he has already mentioned what I was about to ask, that you're talking about adaptation. So how would we, I mean, is there any process? For example, since we are among tribal, there's a concept of youth dormitories in like Tumkuria or Ethioda or Ghodul. So is there any possibility, like if we incorporate those informal education in some formal institutions, because it's obvious that it is not possible to teach in every family, like, because no one is going to do that. So is it possible to incorporate those things in some formal institutions? That's my question. सभी को जोहार। मैं क्षमा चाह रहा हूँ कि नौकरी पे आदमी 2 दिन नहीं आ पा रहा था, लेकिन मेरा एक ही क्वेश्चन है मैम, क्योंकि डैश में जितने भी मुझे लग रहा है कि हिंदुस्तान के टॉप ट्राइबल लीडर्स कहा जाए, ट्राइबल एजुकेशनिस्ट कहा जाए, आप लोग बैठे हुए हैं, लेकिन 70 सालों में जो आदिवासियों की क्या स्थिति है, मुझे लगता है कि किसी से छिपी नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि डिस्कशंस के बाद क्या रोड मैप बनना चाहिए। मुझे लगता है अभी तक किसी के पास कुछ ब्यौरा नहीं है जो कल हम जाके क्या करेंगे। तो आई थिंक कि मुझे लगता है कि ये भी आप लोग को बताने की जरूरत है कि दिल्ली नहीं, हमारे गांव में क्या होना चाहिए, हमारे कस्टमरी कैसे बचना चाहिए, क्योंकि इलीट क्लास के लोग लगातार पढ़ते जा रहे हैं, नौकरी लेते जा रहे हैं, बाकी लोग वैसे ही बचे हुए हैं। तो मुझे लगता है कि जो पढ़े लिखे समुदाय है नौकरी ले रहे हैं, बैठ जा रहे हैं।
तो मुझे लग रहा है कि हमारी जिम्मेदारी बनती है कि कैसे उन आदिवासी भाइयों के बीच जो बड़े बड़े लोग हैं, मैडम ही बैठी है, डीसी बन के अभी ढूंढ गई हुई थी, तो मुझे लग रहा है कि आप लोग रोड मैप बताना चाहिए दिल्ली जैसे शहरों में कि आदिवासी क्या करें। अन्यथा मुझे लगता है कि सोमनाथ इसी तरह बातें होते रहेगी और बहुत सारे आदिवासियों को जो समय है वो किलिंग नहीं होना चाहिए बल्कि एक रिफ्लेक्शन देना चाहिए। थैंक यू। जो मीडिया से हम लोग को दिया जा रहा है वो बिल्कुल सही नहीं है। Israel as a community and the nation is one of the most fabulous group, perhaps the best group in the world. And those who are critical about Israel, I think they should study. Because you just see their performance. They are top in every field. Religion, philosophy, sociology, mathematics, Albert Einstein, you can never forget. Psychology, Sigmund Freud, you can never forget. So there are so many good things in there. And then even the conflict that takes place, they are never the first one to attack. In retaliation, they will teach a lesson till the enemy doesn't again do that. That attitude is there because first you survive, then you can save others. This is a principle applicable to every individual and every group. And what they have done to the world, they are the biggest benefactors of humanity. Because inventions, number of inventions, they have come, and that is not serving only Israel but the whole of humanity. Just one example I cite, and I am not a science student, so I stand maybe wrong, but then as our friend Birwa was telling us, the possibility of science also in our tribal thinking and what we are doing. Recently they are saying that they are creating water out of air. This is Israel. And that is why they are doing that one? Because they have seen African women 4 hours walking to the source of water and walking back another 4 hours, 8 hours a day. They are only fetching maybe 1 or 2 pots of water. And these people have invented a machine by which they can collect water anywhere, and that will be helpful to those people. So they are not as bad as the media paints them. Sometimes it happens that since we are not able to achieve like them, we think they are bad. So it is a challenge for our Adivasi or indigenous communities as well to put in more effort to show something that we can do and from within. That is the challenge of education. And if we do not, then we always criticize everything is bad things are done by others, and from within to do some good to our own, we are feeling shy. Always we are category apart because we are educated, we have job, we have to count the number of cars or whatever we call facilities that we have at home. Then we are in the wrong way. So let us challenge ourselves and try to improve ourselves and two kinds of psychology. Psychology of the discoverer and psychology of the discovered. Psychology of the discoverer comes with the idea, okay, we have subjugated the tribals,
etc. And therefore that dominion or domineering idea, what in different terms we said Sanskritization as well, that's another concept. We will not enter into those debates, but the psychology of the discovered is that losing the sort of sense of identity, self-identity and self-esteem. And therefore, we are in a way, whether we accept it or not, we are a bruised people, wounded people, our identity is fractured. And how do we make it up? How do we compensate for it? And therefore, many suggestions are being made. So therefore, whatever the question, I have also faced some questions from the audience in the past, like, what have you done for tribal? What are you going to do for tribal society? This is, but I would say, getting back to one of the important points of consensus and collectivity, collective consciousness, who am I, who are we to decide for the tribal societies? Tribal societies, what they want. If we take the examples of Dr. Etwa, or from one from Gujarat, another from Maharashtra, under their leadership, under their coordination, the tribal societies have decided to do this or that, or whatever is manifested, whatever we see. And from this stage, or from this podium, it's not possible to say, we can make some suggestions which is coming in the next session. We are going to discuss on the way forward. So it's premature to talk about that. But there are problems. It's very problematic to say, okay, we can say, instead of PESA 1996, or instead of 5th schedule, we should have 6th schedule. Talking about this is not enough. What do we do? And therefore, I would like to enter into one more aspect very briefly. Dr. Ramdayal Munda said, "Je nachi se bachi." Those who dance will survive. This is culture. But let's also remember 4 constituent elements of culture. Language is only one of them. But if you know the language, see many words in the language cannot be duplicated or cannot be translated. Can somebody in the audience here give us or give me the translation of Kokorombo? I'll give 10 rupees. Yeah, please. बहुत मुश्किल से, but exactly you don't get that nuance. Okay, anyway, we'll not go into the details, but what I'm saying is, so language is one important aspect. If you want to save a community, then language is one definitely, but you also have customs. There are customs and traditions. Why does a tribal behave the way he or she does? And therefore, there are many other things involved. We'll not go into the detail. You also have techniques, tools and techniques. I don't mean to say that you should hang on to the ancient primitive methods of plowing. I don't see that. But there are many other things which perhaps can be adapted. Many are adapted. Values, that's one of the most important things. What tribal values do we want to transmit to the coming generations? And to conclude, I would say, as I made one of the points, everything is learned in the family, in the house, by a mother, and by the family members, by the ethnic group, by the society. And therefore, experience is the starting point to analyze the hermeneutical journey of the tribal consciousness. So therefore, whatever happens, oral tradition, I'm not saying that, please understand what I'm saying, because now there's no time to go into the details, but oral tradition and also myths. Now myths are a language for the tribals. They are to be transmitted from one generation to another. You know, during Karam celebration, that myth, Karam myth is narrated because of the oral tradition. And therefore, unfortunately, we are losing and we are forgetting about that. But that was meant to transmit the tribal values, tribal language, tribal customs, etc. to the generations. Youngsters, boys and girls remain seated there for long hours in the evening on the eve of the current festival, on the eve of the current day celebration. That's the point, because there's nothing in writing, and therefore this has to be transmitted. So, but how can we therefore ensure in the families or inculcate in the families that these myths are narrated to the youngsters, so that we also create quote unquote myths. Myths are there.
we have to demythologize. That's one thing. That's another concept. But I'm saying it's also important for us to create new myths so that we, in a way, revolutionize the tribal societies across the country in India. We have to protect and promote our culture, because tribal culture has to be protected, and it's going to contribute. It has contributed to the nation building, but it has much more to offer. And therefore we have to make, therefore that high level of motivation is required. And therefore, in order to do that, we have to create myths. And therefore, to conclude, I would say, we need to further promote collective consciousness, and therefore there is also a question of consensus in the political behavior of the tribal communities, and we need to therefore continue promoting together, and therefore one person cannot do this, and then whatever is being done in various parts, we need to lend our wholehearted support and carry on, not single-handedly but collectively. I think unity and collectivity is the only solution for the future. Thank you. किसी और को adaptation पे कुछ add करना है? I think I'd just like to add a very small point. I'm not a trained social scientist, so I don't speak in the framework and know all those. I don't have that training. But then, from what my experience has been, is one which I was touching very lightly when I spoke earlier, that all knowledge transmission is. Or an acquisition is with reference to the livelihood, and with changing, or all our geographical boundaries becoming invisible, and also, opportunities in various dimensions being there. I think it is also a right of each tribal child to have access to those opportunities. And for that reason, I think education and adaptation, a kind of adaptation with modern education, is the need of the hour, and we have examples. That adaptation, some models, some experience, and their experiences will have to count for further adaptation. And I'm only going to talk about adaptation and I'm batting for education only. And so we have examples, those examples or experiments, let's say, and more experiments are coming. And I agree also that each community must decide, or each language must decide what would be our adaptation of the education at what all level. So that is what my point is. And adaptation need not be only at school education. I think the tribal knowledge, all are the content as well as values, and must be brought to even higher education. If we are there in higher education system, it should be our mandate that we are bringing studies and research of our people. Let us not only depend. I'm not an anthropologist, and I have all regards for all those studies that has been done, but shouldn't it be also said from within, that discovered, as it was being said, that perspectives and such terms which may have not been understood by the researchers who do not come from the communities. And therefore, I think it needs to be ascertained by each as to what should be adaptation in my area. 1, 2, then there are models and experiments from which it can be learned. And 3, I think wherever there is scope for bringing dignity to the culture, language, ethos, and everything through academic platforms, I think then we will make the non-indigenous communities or non-tribals adapt to what we have. Thank you.
So, I will just tell you one incident from a village interior of Kuti district. Very recently, I think last year, we visited to do a small field work. And always, we are in discussion कि हमारे जो बच्चे हैं, जो youngsters हैं, they are not into business. या तो फिर वो यूं खासकर रांची की स्थिति जो ये है कि either they are drunk or they are literally, trying hard to get a government job, a सरकारी job. And it is really wonderful to see that now the young scholars are there to do their PhD. But in this particular village, it was really a good sight because वहाँ पे यंग मुंडा लड़का लोग बिजनेस में थे. कोई साड़ी बेच रहा है, कोई चाय बना के बेच रहा है, घर का खाना वो बेच रहा है. लेडीज लोगों को मैंने देखा कि वो कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन लेकर के आए हैं और अपना दुकान खोले हैं. बच्ची सुबह में स्कूल जाती है, दोपहर में अपनी माँ के साथ बैठती है. उनको ये पता है कि मार्केट क्या है, सर्कुलर इकोनॉमी क्या है, बिजनेस कैसे करना है, कितना हमें बचत करना है, वो सारा कुछ वो अपने से कर रहे हैं. मैंने उस बच्चे से पूछा कि बेटा आपने कहाँ से लेकर के आप आए? मैं यहाँ से लाया. कितना आपका मुनाफा हुआ? वो मुझे पूरा बिजनेस बता रहा है. तो ये है, उनको ये पता है कि हम लोग वो खेती बाड़ी भी करते हैं, वो अपना गाय भी चराने के लिए जा रहा है. दूसरे भाई ने वहाँ पे छोटा सा टेम्पो ले रखा है, वो उसको चलाता भी है, और दूसरा भाई यहाँ बाजार में आके बैठता भी है. तो उनको पता है कि जो सिस्टम जो है जिस तरह से चल रहा है, हम लोग को भी उस सिस्टम में रहना है और हमें वहाँ कम्पीट करना है. तो ये एक पॉजिटिव चीज़ है. दूसरा जो चीज़ आपने कहा, आई थिंक particularly you said that in families where they are not able to teach their children language, everything has a solution, I believe. So we can have social institutions. The institutions, either it can be, the community hall, the community institutions, within a city, within a particular locality, and then those who know, they can start the, just maybe, talking in that particular language. भले ही टूटी फूटी क्यों ना हो, ज़रूरी नहीं कि सब कुछ परफेक्ट हो, लेकिन कम से कम आप शुरुआत तो करेंगे. ज़रूरी है शुरुआत करने का. So definitely it is possible. Thank you. All right. So thank you very much to all our wonderful
Huzur, Professor Sonacharya means, and also all the audience. Thank you very much. Give a good applause. We also thank our moderator, Tanya Zairaj. I think it was the on the spot. Yeah, so because I had seen other person's name, so it was very wonderful, and you really very creative way, and also to bring out the deep knowledge that you left them, and you made them to bring out that knowledge and to give to us. Thank you very much. So please, thank you. With this, we end the session. Thank you. Thank you, Pascal ji. We, as per the schedule, it's a tea break, but we won't actually be taking a break. If at all you want to have a cup of tea, you can just grab a cup. As considering the time that we are really running behind, we would just take a quick 5 minutes break. Excuse me, our daily group, those who have energized and they want to honor some new faces, guests. So please come forward and honor Mr. Tofa. Mr. Tofa. एक मिशन में चल रहा हूँ आजकल कि हर घर आदिवासी फोटो होना चाहिए। इसके तौफा की बात होता है कि नेपाल सिंह का फोटो से फोटो बीच बीच में देना। Only for some new faces. हम सबों के लिए जो भी यहाँ पर हैं, आज खाने की भी व्यवस्था है, इसलिए घर जाने खाने के लिए ना हड़बड़ाएं। सारे लोगों को खाना मिलेगा, लेकिन हम लोग आखिरी सेशन के लिए तुरंत अभी शुरू करने वाले हैं, इसलिए सेटल होते रहें। जिनको बाहर जाना है चाय वगैरह थोड़ा सा पी सकते हैं। बाकी हम लोग आखिरी सेशन, उसके बाद में एक सांस्कृतिक थोड़ा सा एंटरटेनमेंट है हम सबों के लिए, उस पर भी हम लोग सहभागी होंगे। Doing PC. I just grabbing some experience. Yeah, like how it feels, but anyway. It's good to sit there. I have done my PhD in communication. Gaziabad. I'm basically from Kerala. Okay. You have friends? Oh, plenty of Manu friends. Once you make one friend, you have more money. Yeah, that is true. Recently, I had gone to Ladakh, Leh very good. They are very chill, like nice man. So now you're in IS. Working in a conference department as a communication officer.
We shall now start with our last session, which is the valedictory session, the concluding session of this seminar. I kindly request you to please have a seat. People standing outside, I request you to kindly come in. I'm not replying in mail also. Mail is like scolding me. No, just क्या हुआ? Replying in mail and all. क्यों? No, I'm like अच्छा तो गया? Maybe. Okay, but आप तो हमें इंस्पायर करते हैं पूरे टीम को. Actually, really? Yeah, seriously. I know. He is a pillar of, real estate. Especially I met him so late. मैं पहले मिल रहा था तो और अच्छा होता. उसके बाद में मुझे बाहर जाना था. From he knows more than me. I welcome you all for the last session of this day, as well as
for the 2-day seminar that we successfully conducted. This is the valedictory session, and to moderate this session, I shall now call upon Mr. Roshnekka. Roshanekka, who originally hails from Gumla district, resides in Delhi for work. He has received recognition for his CSR efforts in France and also in our country, India. He is currently associated with CBCI at the Office of Tribal Affairs. For this session, we have few people. I would like to invite them on the dais. Dr. Vincent Ekka, Assistant Professor, Indian Social Institute, to present a summary of the program. Dr. Joseph Marianus Kujur, to give us a way forward. Advocate Nicholas Barla from the Tribal Affairs CBCI. Gunjalikir Munda, who is a cultural enthusiast and manages the culture in the Amaya. He is also an ex-assistant professor at the Central University of Jharkhand. Mr. Sandilya Ajay Singh Munda, who is a DGM at the LPG Operations North Zone at Hindustan Petroleum Corporation Limited. He belongs to Munda tribe and hails from Bundu Tamar, Jharkhand. He has mentored Adivasi youth for higher education abroad through networking. It's our privilege to have the esteemed dignitaries amidst us at the dais. For this session, I now hand over to our moderator, Mr. Roshanekka. Thank you very much, Anupama. So welcome all of you to the final and the last session of the 2-day seminar that we conducted. I know we are already late by it's complete 1 hour. But what we started, we have to close it. That's how it works. So without taking much time, we'll start and we'll try to find out what exactly we have done so far in last 2 days. It's not that we have done something new. Much of the things have come from the crowd, from the participants, and a few people who came from various parts of the country, our own brothers, sisters, and we have heard from them. So to ensure that what we have done in the last 2 days, I would welcome Dr. Vincent Ekka to give a summary of the 2 days activities that we have done, just to summarize what we have done so far in the last 2 days. Good evening. Johar or Jai Adivasi. I'm very happy at the end of the 2 days sessions that we have had, and I feel much satisfied. And with that note, I would like to just summarize what has been happening during these last 2 days. Most of us in this hall are witness to what has happened, but still I would like to summarize it in a very brief. We started yesterday our 2-day seminar on Musings on Indigeneity. Preparations were done for about 2 months. Many friends from different parts of the country, they responded, and this date was finalized. And we started the day with a beautiful beating of a drum, nagada, with traditional drumming, kind of invoking the great things that was going to happen. And I feel that
really the great things have happened in these 2 days. Under the co-organization of this Herculean task, I would say, there were 4 main co-organizers: Indian Social Institute, CBCI Office for Tribal Affairs, India Indigenous Peoples Forum, Regional Tribal Secretariat of Archdiocese of Delhi and North India, in collaboration with Piramal Foundation, Anamaya and USAID. So with this hand holding together, we organized this 2 days seminar. It was not purely a seminar, but it was a seminar cum workshop where every one of us participated. And during the last 2 days, we have had 13 papers presented. 13 papers plus 4 special papers. The purpose was, शायद हिंदी में बोलूँ तो सबके समझ में आ पाएगा, 1-2 लोगों को बीच में अंग्रेजी में भी बोलूँगा। पिछले 2 दिन में हम लोगों ने 13 पेपर जो हमारे स्कॉलर्स थे एकेडमिक सेक्शन से, और बाकी 4 स्पेशल प्रेजेंटेशंस थे हमारे ग्रास रूट्स में जो लोग काम करते हैं, आदिवासियत को लेकर के, आदिवासी तरीके से, आदिवासी समाज व्यवस्था के अनुसार आदिवासी जीवन मूल्य को जीते हुए वे काम करते हैं, तो उनकी भी प्रस्तुति रही है। इस सम्मेलन में 3 प्रकार के हमारे समूहों का एक सम्मेलन रहा है। पहला समूह था जो लोग एकदम ही जमीनी स्तर पर काम करते हैं, आदिवासी जीवन मूल्य को लेकर के। इसमें आए थे हमारे साथ सहभागी होने के लिए गुजरात से भाई पटेल, नीलम भाई पटेल और उनके साथी। गुजरात में जो एक सामुदायिकता, सहभागिता से जीवन मूल्य को आगे बढ़ाने का कार्यक्रम चल रहा है, उसके बारे में उन्होंने बतलाया। हमारे भाई आए हैं महाराष्ट्र गढ़चिरौली क्षेत्र से, जो कि आदिवासी स्वशासन व्यवस्था को जीवंत रूप में लागू करके जी रहे हैं और एक आत्मसम्मान का जीवन आदिवासी स्वशासन प्रणाली में ये संतुष्टिपूर्ण जीवन व्यतीत कर रहे हैं। हम सबों के लिए अनुकरणीय है, हमारे बीच में आए। जमीनी स्तर पर काम करने वाले आदिवासी भाषा और शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए एतवा उरांव जी जो काम कर रहे हैं झारखंड क्षेत्र में, और एक खास आदिवासी समुदाय की भाषा को लेकर के, भाषा के माध्यम से संस्कृति, उसके जीवन मूल्य हैं, उसको आगे बढ़ाने के लिए आदिवासी समुदाय को सामूहिक रूप में संगठित करने और आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं श्री एतवा उरांव जी, डॉक्टर जफरीनुस बखला। तो वो हमारे साथ आए। हमारे साथ आए हैं मुकेश बिरुआ जी, जो कोल्हान क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जमीनी स्तर से जुड़ करके। पेशे से वे एक इंजीनियर हैं, ट्रेंड इंजीनियर हैं, लेकिन तो जमीनी स्तर पर रह करके किस तरह से एक गांव स्तर में रह करके अपने वातावरण से जुड़ करके कैसे काम करना है, अपनी ज्ञान पद्धति को आगे कैसे बढ़ाना है, आदिवासियत को कैसे हम लोग जीवित और आगे बढ़ाएंगे, इस पर काम कर। तो वी हैड 4 presentations from the grassroots experiences and learnings. And second category of people we have had was from the academics. So 13 papers were presented basically from the academic backgrounds. Scientific papers, some are working papers, some are completely finished work that were presented here. The third group of people are here who are trying to mediate between these grassroots and academics. So 2 sections bringing them together and trying to negotiate with the present political system. We can say what I call it affirmative activism. So
that group of people are also here, who are also academics, who are also activists. We are also trying to be connected with the grassroots. So we are a kind of combined symbol of the Adivasi Samudaya here, all of us were. So what we have had was, basically we were trying to reflect during these 2 days in a particular framework which we have been speaking and also reflecting from yesterday. आदिवासी की सोच में सह अस्तित्व क्या है, पर्यावरण के साथ सह अस्तित्व, प्रकृति के साथ सह अस्तित्व के साथ कैसा जीवन जीना है। उसके बाद में हम लोगों ने चिंतन किया कि कैसे हमारे समाज में जीविका आजीविका को चलाने की क्या व्यवस्था है, किस तरह से हम लोग उत्पादन करते हैं, इसकी कैसी खपत होती है, किस तरह से उसके औषधीय गुण का हम लोग उपयोग करते हैं। ये सारी बातों पर हमने चिंतन किया। साथ में हमने चिंतन किया कि कैसे एक कोऑपरेटिव सिस्टम में, सामुदायिकता में आदिवासी समाज स्वयं को कैसे आगे बढ़ाता है, एक विकास के रास्ते पर ले चलता है। इसका मॉडल हमारे गुजरात के भाइयों ने दिखाया, स्वयं एक हर प्रकार के चीजों में अपना हाथ डाल करके, बैंकिंग सेक्टर में, सामाजिक सेक्टर में, शिक्षा के क्षेत्र में, गांव व्यवस्था के क्षेत्र में, सब एक तरह से स्वतंत्र रूप से व्यवस्था कर रहे हैं। हम लोगों ने चिंतन किया कि आदिवासी शिक्षा किस तरह से होना चाहिए, सिर्फ डिग्री पाने के लिए और नौकरी पाने के लिए केवल नहीं, बल्कि अच्छा इंसान बनने के लिए समाज में, टू बिकम ए गुड ह्यूमन बीइंग। Indigenous human formation is to become a good human person, and that is what we got a model to see today, how they are trying at grassroots levels to make good human beings, not only training them to obtain degree and get some good jobs and get alienated from their lands and roots, but trying to make people good human beings, to try to see positively in relation with the surrounding and the other. So that kind of an integral formation of humans that we call human formation or human system, Adivasi system of education. So we have been reflecting over these points basically these 2 days, and now we have come to an end. We have had 2 panel discussions, very enriching panels which we just concluded previously. Then yesterday we had another panel discussion which was to bring into a kind of conclusion of the day's deliberation yesterday. Today's deliberations was concluded through this panel discussion, which was very enriching, just we concluded. And we have had many our tribal scholars, basically the indigenous scholars, tribals, academicians who gathered here from all over India. We have had our friends from some other countries as well, the participants. Sunil Jojo came all the way from Ethiopia only to be present here because he considered this very important and necessary. He came all the way from Ethiopia to present a paper. We are very thankful to you. We have here amidst us one scholar from Ireland, Tom Davis. He is a student in Varanasi, but he only got a message through WhatsApp and he came to participate in it. We have our research scholar from Brazil who is doing research here. Can you show yourself? Yeah, so she's from Brazil. David, Tom David, can you also stand up? People can see you. So he is from Ireland, and like that, this is not only national seminar, it became an international seminar with your presence. Then, yes, madam is there. I forgot the name, please. Can you? Mary. Mary is from Germany, but residing in America, I think. So, yes. We are really thankful to you. Both days you have been sitting with us and trying to reflect and also maybe directly or indirectly trying to get involved with the whole process. Recently we have our great friend here, Ganga Sharma ji. ये हम लोगों के साथ में अलग अलग स्तर से काम करते हैं और नेशनल इंटरनेशनल पर ये अपना जो एक निपुणता है या तो अपना जो उन्होंने जिसमें
डिग्री हासिल की है उसका सेवा देते हैं अलग अलग कंपनी को ऑडिटिंग के रूप में, एक कंपनी का ऑडिटर्स वगैरह, और बहुत सारे काम हैं जिनको अभी यहाँ शायद समय नहीं हमें जिक्र करने का। तो आपका भी बहुत धन्यवाद, अभी अंत में आए। और हमारे कुछ बहनें आई हैं इधर से, आज हम सबों को दिन भर कल से आज तक बहुत सीरियसली हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, तो थोड़ा एंटरटेनमेंट और जो नाची से बातचीत तो जरूरी है, इसीलिए हमारी कुछ बहनें भी भाई लोग आए हुए हैं। दे आर गोइंग टू परफॉर्म शॉर्टली, सो आई विल वाइंड अप हियर। It was really very enriching experience to be here together, and from morning till evening like this very serious participants we rarely come across. Recently I went to Hyderabad to present one paper. I was given only 7 minutes and only about four listeners were there. I felt very bad, waste of time and money to go all the way from here to Hyderabad to speak to 5 people and for 7 minutes. But here it was not so. Here I felt very serious group and crowd, really willing to learn and take it away. So that's why I am very grateful to all of you, and I now hand over the mic to the chair. Thank you very much, Dr. Vincent, for summarizing the 2 days. 2 दिनों के जो चर्चा हुई, जो हमने जो भी चर्चा की, उस सभी चीज़ों को उनका संक्षेप बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही हमने तो नेशनल सेमिनार कहा था, उसको इंटरनेशनल बनाने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। समय की कमी है, तो बिना समय वेस्ट किए मैं डॉक्टर जोसे मरियानुस कुजूर को जो 2 दिन हुआ वो तो 2 दिन हो गया, जो डिस्कशंस हुए वो हो गए। इसके आगे हम क्या कर सकते हैं, बहुत बड़ा काम है, मैं समझ सकता हूँ इसको समराइज करके वे फॉरवर्ड करना, क्योंकि बहुत सारी चीजें आई हैं। तो आई कॉल अपॉन डॉक्टर जोसेफ मरियानुस कुजूर टू गिव अस ए वे फॉरवर्ड एज टू व्हाट वी कैन डू फ्रॉम हियर with all the topics that has been discussed so far, and how exactly we can go ahead from here. Thank you very much, Chairman sir. Takeaways from my side, just 3 moments or 3 points I would like to mention. 1, structure or structural changes or structural problem. Number 2, processes, and number 3, possibilities. Number 1, structural problem. Tribals problem is, or problems, we could say, are a structural problem, and every structural problem has to be resolved structurally. And in this context, we also remind ourselves of the presentations yesterday and today, and we also know how just structures need to be created and implemented. For example, Constitution gives us that structure to the tribals by way of constitutional provisions, and as we have been raising 3 questions about ownership, control and management, whether it be education, health sector, whether it be natural resources, etc. And we know that we are at the receiving end. We have not been able to enjoy all these in a full way. And therefore, another example of the structure that we have, PESA, of course, somebody told me this morning, it's also a jhunjhuna. Okay. It's not what we would have liked to have, but then at least it has been given in 1996 following the principle of free, prior and informed consent of the Adivasi communities. There are problems, but for us it's important to understand, rather than always thinking in terms of glorification or valorization of the institutions that we have, what has been offered, what is available, how can we make the best of whatever is available. So recently we had another system which is very, very diabolic, that is Forest Conservation Act 2023, which takes away whatever rights have been given in the PESA and other rights as well. So I'm talking about how structural problems need to be solved structurally.
Professor Varjus Khaka also told us yesterday, instead of 5th schedule in the central India, if it's replaced by the 6th schedule, then that structural change will bring about some justice to the tribal communities, which will also facilitate legislative, executive and judiciary powers. And no to the principle of eminent domain. And there are some other problems like this. We are talking about universal education, but just think of CUET, okay? So what's happening now? Even that university exam has been centralized and it has been made mandatory. And therefore, people coming from the grassroots or people coming from the rural areas or others, primarily from the weaker sections, will not be able to get into even in graduation at various levels. So the point is how we need to work out the structures which are just. Point number 2. There are some processes. Let's not confuse the processes with the structure or what we see. For example, process of homogenization. It's happening. But it's basically correlated with the structure and it tries to create unjust structure. I am just mentioning these points very briefly. Shrinking space of democracy, which is very bad for the tribal communities. Collapse of the space for dialogue. If you want to have a dialogue with the powers that be, you need to sit together and identify the problems and tell them these are some of the issues that tribal communities are grappling with. Do you have space for that? Feudalization of democracy and democratization of feudalism. So therefore this is another serious problem. We are trying to conceptualize whatever processes we have seen. So this process continues, which is bad for the tribal society. Again, democratization of undemocratic institutions or undemocratic spaces, and that's very detrimental to the tribal societies. But we also see trends like some sociological, economic and historical trends like migration, displacement, unemployment, farmer suicide, human trafficking, dropouts from the school as far as tribals are concerned. However, some positive processes also, because our coming together here is part of that movement or assertion of self-identity, identity of the tribals collectively. So therefore resistance movements, protest movements, assertion for rights, constitution, land, etc. Now coming to the final section, this will give us the way forward. Possibilities. What are the possibilities that we pick up from what happened yesterday and today? Or where should we go from here? Number 1, we should continue asserting ourselves. Continue asserting our collective consciousness. And therefore that formation, an integrated approach to our formation, our education, our assertion is important. Number 2, change of mindset. Okay, we consider ourselves to be educated, etc. But as I said, we are also continuously going through the process, psychological process of that feeling of discovered, psychology of the discovered, contrary to the psychology of the discoverer. So therefore, we need to come out of that, and once we are able to do that, then only we'll be able to help out others. Therefore, how do we go back to the roots, keeping in mind the tension between tradition and modernity, traditional development, modern development, traditional education and modern education, and in other sectors also we can see. We cannot ignore that there is a tension, and we have to address the tension. So we need to work out, and adaptation also, we had a lot of discourse on adaptation, but to what extent, what way. So this negotiation, let it continue. We don't have the final answer. We don't have a ready-made answer for this, but we need to work it out along with the communities. Very important for us, tribal way of looking at things, the histories, memories, tribal memories, collective memories, geographies, and it was also mentioned tribal methodology or methodologies. Can we spell it out? Can we articulate tribal methodologies, even in researches or even in our studies? We have not found a solution for that, but if we continue reflecting together. And also, finally, let's continue problematizing some of the assumptions on which we lay our
foundations of argument, especially when we are making studies. And therefore, some of the assumptions need to be questioned, some of the assumptions need to be problematized. And finally, I would say, it's a big challenge for each one of us, but our friends from Maharashtra, from Jharkhand, from Lordipa, and also from Gujarat, if you are able to replicate what they have been doing, I think that will solve many of the problems. It will not solve all the problems, because these tensions will continue, and that tension between the powers that be and those who are seeking for more power, tribal steps. When we talk of empowerment, that means you have to disempower certain groups of people or certain number of people. Therefore, these processes go hand in hand. But if we take examples from these 3 case studies of three regions, I think to a large extent, they'll give us the answer. If you're able to replicate it throughout the country, I think it will be a big achievement for us. But we need to have a very high level of motivation for that, and the onus is on us all, personally and collectively, to be able to take it forward. Thank you so much, and I would once again congratulate the organizers for provoking international workshop, which facilitated a lot of critical thinking, and I'm sure it's going to be very helpful in the days to come. Thank you so much. Thank you very much, Dr. Kushur. I think मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग जो है पॉसिबिलिटीज़ पे उनका ध्यान ज़्यादा रहा होगा, क्योंकि 2 दिनों से तो हम प्रोसेसेस और जो चैलेंजेस है उस पर बात कर ही रहे थे। पॉसिबिलिटीज़ मतलब जो संभावनाएं हैं, आपने उन पर जो बात कही है, और जो सबसे आखिरी जो आपने बात कही है कि जो हमारे पास जो 3 उदाहरण जो आए हैं, जो महाराष्ट्र से, गुजरात से और झारखंड लोकदीपा से, इनको किस तरह से हम अधिक से अधिक इसकी कॉपी बना सकें। एक कॉपी मतलब चोरी करने वाली कॉपी नहीं, मतलब उसका कैसे डुप्लीकेशन कर सकें, तो इस पर हमें काम करने की ज़रूरत है। और इसके अलावा भी आपने और कुछ जो भी चीज़ें बताई, जैसे हमें अपने को असर्ट करते रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम असर्ट नहीं कर पाते हैं और वहीं पे हमारी आइडेंटिटी खोती जा रही है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, और हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे। हम अभी पिछले कुछ समय से एक शब्द सुन रहे हैं, जे नाची से बाची, है ना। We have been hearing one phrase, जे नाची से बाची. So the person who said this, we have his son here, Gunjal Ikir Munda. So Gunjal, basically what I would expect from you is, since you are in Piramal Foundation, who has been very kind to us to sponsor this event, this seminar. At the same time, you are also a cultural enthusiast. We have been talking about adaptation in lot of things, like we should adapt. So, how do you think, like, since you are already into the cultural, you work for culture, being in Anamaya, and you are also in Piramal Foundation, and now since with the changing condition, we are talking about adaptation. So taking into account the culture part of it, what do you think, like taking the 2 days discussion, overall, what are your views on this, like how exactly we should go about it? Over to you. Hello. Yeah, so, बहुत धन्यवाद Vasudha. Certainly there is this aspect of adaptation going on all over. You see, if you have looked at the workings of NGOs, let's say, for example, the organization which I am representing now is Piramal. You wouldn't have found this culture aspect in many of them, but now institutes are giving space to culture as a special thing. Whenever you're talking about development or be it anything, it should be from the perspective of culture. That's one thing which has come up very strongly over the past, not many years, but at least 4, 5 or some years, it's coming up. Because you see across many, even across development sector, who are working
hardcore on the development aspect. They are also looking into this culture aspect. Apart from it, I'm very, very, happy to see, this seminar also has brought up the issue of culture very prominently. You would have expected, people talking about only, Jal Jangal Jameen. I mean, it's in as a part of culture, but it would have been very superficial in earlier years. It would have been just, staging a protest or, having a referendum or a memorandum, whatever. But the issue of culture, issue of language, language preservation, working on culture, and an aspect of self-reflection has come within the community. They are looking more into themselves, as to where they are making these mistakes, and everything, even the governance aspect. Devaji was talking about the governance, and the way it is being integrated with culture and it is being understood by the public, and also the people working amongst the tribal people who are partnering with them. They are all, coming at a common consensus that, without understanding the culture, you cannot work on anything else. So that's one thing. The other thing which I'd like to address regarding adaptation, with a bit, we have talked about Dhumkuria and the quote-unquote youth dormitory, which my friend won't agree with, the terminology, but this whole system of imparting education, it has certainly collapsed in rural areas, but I think since the world has become so interconnected, our village is no longer a 5 by 5 kilometer area. It's kind of, our village has been globalized. We are in touch of people from America, and American people are in touch of us, in touch with us. So I think in this changed context, and with all the available resources we have, the way we look at the Dhumkuria or the Jarugoda, Gitioda, Gutul, its prospects have widened. We have to integrate many modern things, modern thinking, methodologies, which lots of scholars did talk about it. So an integrated approach is a must. At the same time, I won't be repeating it again and again, but there has to be a balance between whatever our roots are in, and what the other world, the outside world has to teach us. So it has to be a mix of things, but again, at the same time, we have to be deeply rooted in our culture. That's what I say. And I'm very, very happy that this seminar has touched upon almost all the topics. And my friend from Nagaland, he in fact devised, coined the term, bonsaification of the Adivasis. You're trying to make them look exotic, but at the same time, you are trying to diminish all their or whatever they were good at. So these kind of innovations in terms of methodologies or even in terms of thinking, that's what is required. Because still now, what I feel that mostly all the scholars or whatever we are pursuing, it has been coined or it has been formulated somewhere else in some other setting and with some other objective in mind. So now the scholars are coming up with their own point of view, with their own ideology. I think that will be more pro-tribal, more region-specific, and it will do better for the tribal people if we come up with these things. So overall, I'm very, very happy with this program, and I think this partnership across different regions and different institutes, they continue in the future also. Thank you. Thank you very much, Kunjal. हमारे साथ HPCL के DGM सांदीला अजय सिंह मुंडा भी हैं, आज हमसे जुड़े हैं। मुंडा जी, शायद आप अपनी व्यस्तता के चलते आपने बहुत ज़्यादा समय तो दे नहीं पाए, लेकिन जैसे आपने समरी में सुना होगा या तो वे फॉरवर्ड में सुना होगा,
उसके आधार पर आप अपनी 2-3 मिनट का एक पॉइंट रख सकते हो, बताइए कि मतलब क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है कि हम यहाँ से कैसे आगे बढ़ें, कैसे कर सकते हैं। तो At the outset, I would like to thank the organizing committee to give me an opportunity to express myself. I'm here from last 2 hours only, so I could witness only one panel discussion about the indigenous way of education. I would like to share my thoughts in 2 ways. First of all, we have to feel pride of being an indigenous. ये कहने में बहुत ही आसान सा रहता है, लेकिन ये करने में उतना ही जो मुश्किल है। मुश्किल इसलिए है कि अगर हम अपने जमीन से जुड़े हुए नहीं हैं, अपने जंगल से जुड़े हुए नहीं हैं, अपने बच्चों को अपनी भाषा नहीं सिखाते, हम घर नहीं जाते, कट के रहते हैं, तो ये बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तब ये प्राइड फील करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। दूसरी बात ये कि सिंस आई वर्क वेरी क्लोजली विद द गवर्नमेंट, तो इसमें मुझे एक अपॉर्चुनिटी भी दिखता है। अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है, शायद जितना हमें जानकारी है उससे भी अधिक है। ये जो गैप है, गैप इसलिए है कि वी आर नॉट कनेक्टेड इनफ। गवर्नमेंट के पास बहुत सारे स्कीम्स हैं, आप जॉब के लिए अप्लाई भी कर सकते हो। जॉब के अलावा आप एंटरप्रेन्योरशिप में भी जाना चाहते हैं तो भी बहुत सारे स्कोप्स हैं, बहुत सारे रिलैक्सेशंस हैं। और जो एक बहुत ही हार्ड फैक्ट ये है कि वी आर रिसीविंग वेरी लेस पार्टिसिपेशन फ्रॉम आवर कम्युनिटी। ये एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है कि वी शुड स्टॉप फोकसिंग ओनली ऑन गवर्नमेंट जॉब्स। एंटरप्रेन्योरशिप में भी बहुत सारा स्कोप्स है, उसके लिए बहुत आवश्यक है कि हम आपस में मिलकर रहें। वी मस्ट गेट कनेक्टेड वेरी वेल। आप ये इसलिए नहीं हो पा रहे कि हमें जानकारी मिल नहीं पा रही है, हमारे लोगों के बीच में, हमारे गांव में लोगों को जानकारी मिल नहीं पा रही है। तो मेरा एक जो छोटा सा मेरा उपाय जो मुझे लगता है कि हमें आपस में मिलते रहना चाहिए, हमें अपनी कम्युनिटी के लोगों के बीच में रहना चाहिए, और हम जिस भी जगह पे बैठे हैं वहाँ से पहुँच के अपने चारों ओर के लोगों को कम्युनिकेशन सही टाइम पे भेजते रहेंगे तो काफ़ी हद तक ये गैप मेंटेन होता है। थर्ड है एजुकेशन। अभी पिछले 2 घंटे से मैं ये सुन रहा था कि व्हाट इज इंडिजिनस वे ऑफ एजुकेशन। मेरा एक थर्ड ओपिनियन है इसमें, जो 2 घंटे की जो भी बातें हुई यहाँ पे, मेरे हिसाब से दिस इंडिजिनस वे ऑफ एजुकेशन इज नॉट फुल्ली कनेक्टेड विद द एकेडमिक्स, but it is more connected with the values and the culture of indigenous people. और जहाँ तक एडेप्टेबिलिटी की बात हो रही थी, काफ़ी क्वेश्चन आंसर्स भी इस चीज़ पे हुए हैं। मेरे हिसाब से देयर इज नो हार्म इन adapting modern education when we have our values and culture in our basic education at home. तो मुझे लगता है कि बहुत ही आवश्यक है। और एजुकेशन कौन सा अच्छा होता है, कौन सा बुरा होता है, इसमें मैं कुछ नहीं कहूँगा। आई एम नॉट ए कॉम्पिटेंट पर्सन टू कमेंट ऑन दिस। पर एक चीज़ तो है कि एजुकेशन ऐसा हो जो आपको सही इंसान बनने में आपकी सहायता करे। हमारे झारखंड की एक आदिवासी पोएट है, जसंता टेकट्टा उनका नाम होगा, आपने नाम भी सुना रहेगा उनका। उनकी छोटी सी कविता एक है, वो पूरी कविता मुझे याद नहीं है, मेरे पास अभी आई थी कुछ दिन पहले। उसमें एक सवाल था कि एक छोटी बच्ची अपनी माँ से पूछती है कि महुआ के फूल तोड़े क्यों नहीं जाते, मम्मी व्हाई डोंट वी प्लक फ्लावर्स फ्रॉम द महुआ ट्री। और उसके माँ ने क्या बोला कि बेटा महुआ का फूल पूरी रात अपनी माँ के पेट में रहता है, वो तभी गिरेगा जब उसका समय आएगा। तो ये सही नहीं है कि हम पूरे पेड़ को झिझोड़ें और फूल को जबरदस्ती निकालें। तो ये एक छोटी सी बात है
पर इसमें ये बहुत ही गहराई से छुपा हुआ है कि हाउ दिस वैल्यूज आर इन आवर ओन कल्चर. When education is powered with a value and culture, this is going to do miracles to our people. मुझे ऐसा लगता है. तीसरी बात है एजुकेशन कौन सा अच्छा होना चाहिए. एजुकेशन वही अच्छा होना चाहिए जहां पे आप या तो आप उसको बिल्कुल अनजान बन के सीखें या एकदम ही ना सीखें. एक श्लोक मुझे आ रहा है याद, वो भी मैं आपके साथ में शेयर करना चाहूंगा. इस श्लोक का कुछ ऐसा है कि अज्ञा सुख मारा देते सुखतर मारा देते विशेषज्ञ गणल वधूर के दग्धम तंद्रम ब्रह्मा भी नरंजयति. मतलब ये है कि अज्ञानी आदमी को आसानी से समझाया जा सकता है, जो ज्ञानी है उसे और भी आसानी से समझाया जा सकता है, पर कचरे ज्ञान वाले को ब्रह्मा भी नहीं समझा सकते. बस मेरा छोटा सा कहना यह था कि एजुकेशन वही हम लेंगे जिसमें हमें सारी जानकारी मिले, या फिर हम नहीं लेंगे बीच में आधा नहीं छोड़ेंगे. इसमें मेरा ये कहना था कि जैसे सर ने बोला कि हमारा वे फॉरवर्ड क्या रहेगा, देन आई वुड लाइक टू शेयर दैट जो भी यूथ यहाँ पे हैं who are thinking to acquire their masters in abroad like UK, US or Canada or anywhere, तो हम लोग की टीम काफ़ी वेल कनेक्टेड है. अभी पिछले एक साल में करीब 25 से 26 लोग वहाँ पे अभी जा चुके हैं अपने MS करने के लिए, या किसी को PhD वगैरह भी करना है. तो हमें सबको एक साथ में फिर से कनेक्ट होना पड़ेगा. फिर से मैं इसी चीज़ पे बोल रहा हूँ कि वी ऑल मस्ट कनेक्ट टू ईच अदर. तो काफ़ी अच्छा ये रहेगा. यही बोल के मैं आपसे अनुमति लूँगा कि वे फॉरवर्ड करने के लिए पहला स्टेप होना चाहिए कि वी मस्ट कनेक्ट विद ईच अदर. मैं खुद ही आज यहाँ पे 4 महीने में पहली बार आया हूँ. आज किसी तरह से 2 घंटे के लिए मैं सेमिनार अटेंड कर पाया हूँ. अगर मुझे ये इन्फॉर्मेशन थोड़ा जल्दी मिलता था तो हो सकता था कि मेरे साथ कुछ और भी लोग आते थे. यही करना था सर. थैंक यू वेरी मच. Thank you very much, Sangeeta ji. What he said is basically he is here only for last 2 hours, and what he heard basically was basically with the indigenous view of education, and what he has to say is we should be always proud of being an Adivasi, of being a tribal at all time. So that's number one that he said. Secondly, the gaps that we have has to be filled. There should not be any gap. And job is not the only option now. So though gap has to be filled, there are options for job. At the same time, we should also consider opportunities for entrepreneurship is what he said. We have to be, as a community, be connected, and communication. As he rightly commented, that if he could have got this message maybe a week back, he could have been here for maybe 2 complete days. So we'll ensure next time that we do that. According to him, the education should be not just to get something, but values need not ever be compromised. And finally, what he has said is they have got a very good network where young people can go abroad for MS and even for PhDs. So what Mr. Munda talked about, being in communication it's very, very important. Also education, what is good, what is bad, he did not say much about that, but let's accept anything that is good with empty mind. Let's not say like whether it's good or bad before we actually learn. Let's learn with an empty mind and then we see whether it is good or bad. So thank you very much, sir. Finally, we have amidst us Advocate Nicholas Barla. We were supposed to have some guests from ILO, UNESCO, FAO, UNDP. Obviously, we did not. The guests did not come, but we did get their response saying they're not being able to come.
And Advocate Nicholas basically taking these institutions into account, like these, since these are the international organizations, what we have been talking in the last 2 days, again, adaptation and all those things, like if we are tribals, we should be tribals. And these are, most of these organizations are international organizations. And you are very well connected with them, you work with them. So, in your opinion, like, what do you think that how exactly the adaptation should be with these organizations, so that we can grow at the same time? We do not like how exactly we can grow with these organizations internationally and with our own community. Over to you. Thank you very much, रोशन जी. तो सबको जोहार. तो एकदम अच्छी बात हो रहा है कि एटलीस्ट वी आर ट्राइंग टू अप्रिशिएट आवर सेल्व्स. नहीं, अपना भाषा, अपना पहाड़, विजय जी पूरा चमक धमक लाल सफेद पहाड़ कर रहे हैं काल से एकदम बढ़िया. So we are trying to appreciate ourselves, our language, our culture, our thoughts, our way of life. बढ़िया है ये. And तो कहाँ कहाँ गलती है, कमजोरी है, गैप है, ये सब को भी बात हम लोग बहुत कर दिए, तो आसपास में नहीं जाऊँगा. मैं खाली कैसे how we will take it forward ये बात के ऊपर कहते. तो हमारे पहले रोज अच्छा हुआ, हमारे बीच में एक सेक्रेटरी जी आए थे, सेक्रेटरी फ्रॉम जॉइंट सेक्रेटरी फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ लोकसभा. तो उनसे बात हुआ. आज भी और एक सेक्रेटरी आए थे, उनसे बात नहीं सुने कि, लेकिन चुपचाप बैठकर सुन रहे थे. आखिरी में भेंट हुआ तो आए थे, मैंने सरकार की ओर से, सरकार की ओर बहुत लोगों को बुलाए थे असल में. तो आज उनका कुछ मंथन बोलकर ऐसे कुछ प्रोग्राम था, सब मंथन में लगे हैं सरकार लोग. हम लोग जैसे मंथन कर रहे हैं, हमारा जो ट्राइबल डिपार्टमेंट है सरकार में, सब लोग पूरा मंथन में लगे हैं आज. तो नहीं तो 4 कम से कम आने वाले थे. तो उसे खबर मिला तो सबका अप्रोच किए थे. और जैसे रोशन जी बोले कि ILO ऑफिस पास में ही है, उस बाउंड्री के उधर है. यूनेस्को थोड़ा सा दूर में है, FAO, UNDP, ये सबसे भी कनेक्शन हुआ था. तो खाली ILO को छोड़कर बाकी तीनों डिपार्टमेंट लिखे कि थोड़ा शॉर्ट नोटिस हुआ और सब लोग एंगेज हैं. और कोई लोग छुट्टी में चले गए, उनका छुट्टी हो गया, क्रिसमस छुट्टी ऐसे बोलकर बोले तो आ नहीं सके. तो बट दे वुड लाइक टू बी विद अस ऑन आवर जर्नी. तो ये अच्छी बात है, तो उसको फॉलो अप करते रहेंगे. और ये प्रोग्राम कैसे हुआ मैंने, अच्छा आदिवासी का सवाल है तो पैसा ढूंढो इधर उधर से, नहीं तो पैसा भी नहीं था. तो एक दिन बैठे, अरे 1-2 लाख है कैसे करेंगे, और इतना बड़ी मीटिंग कैसे करेंगे, ये सब चर्चा किए थे इसको. तो चर्चा करते 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 कैसे कैसे हमारा पिरामल भाई बहन लोगों को ख्याल हो गया हमारा कि अपना भाई बहन लोग हैं पिरामल में, क्यों अप्रोच नहीं करें. तो ऐसे होकर वो शोभा दीदी, अच्छा नहीं बोली हो, नहीं बोली हो, अच्छा नहीं बोली. हाँ अच्छा, हमारा शोभा एका बोलकर डॉक्टर है एक, तो हमारा गुंजन भाई लोगों के साथ काम करते हैं लोग. तो उनको पूछे कि अरे हमारा ऐसे करने का है, कुछ मदद कर सकते हो क्या, ऐसे बोले. तो फिर मीटिंग बैठा है सबको. तो मीटिंग में बोले कि हमको इससे चाहिए. तो बोले कि नहीं आदिवासी है और ये हमारा फिर कल्चर और सारी चीज़ में आ रहा है, तो जरूर करेंगे, तो मिलकर करते हैं. बोले तो ठीक है, मिलकर करते हैं. तो ऐसे होकर मिलकर कर रहे हैं सबको. तो वंडरफुल नहीं. सो वी आर टुगेदर. So that's what networking and the connectivity. जो डॉक्टर मलिनोस बोल रहे हैं, तो एंड ऑल्सो मुन्ना जी बोल रहे हैं, तो कनेक्टिविटी और पूरा सब मिलकर करते हैं माने टुगेदर. आई थिंक ऐसे में हमारा गंगा साहब हैं, हमारे ऑडिटर हैं, बड़े नेशनल इंटरनेशनल बड़ा कंपनी सबको ऑडिट करते हैं. तो उनके साथ भी हमारा रुका था. तो हमारा ये कौन सा कंपनी को गए थे, वेदांता कंपनी गए थे. अच्छा, बाल्को वेदांता कंपनी को ऑडिट करने गए थे. पूरा 1 हफ्ता पूरा सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक पूरा ऑडिट कर रहे थे. तो ऐसे हैं. तो काफ़ी बड़ा कंपनी से भी अच्छा कनेक्शन है. तो दैट कनेक्टिविटी वी हैव टू क्रिएट. और ज़रूर
हम सोचते हैं कि ऐसे ऐसे जहाँ जिन बात होता है ऐसे तो दिल्ली में करते रहे, कल गुजरात में कर सकते हैं, कहीं उड़ीसा में कर सकते हैं, नागालैंड में कर सकते हैं, कहीं पर भी कर सकते हैं। तो ऑल दिस पॉसिबिलिटी को ढूंढ सकते हैं। मैंने वो सरकार से भी बात कर रहे हैं, तो सरकार से भी ठीक ठीक हो जा रहा है, तो सरकार से भी मदद कर रहे हैं। मैंने मिनिस्टर बीते साल ही बोले थे कि यस फॉर स्टेइंग एंड फूड एंड लॉजिस्टिक और सारे अरेंजमेंट कर सकते हैं, आप लोग ठीक करो, इतना भी बोल दिए थे मैंने। तो ऑल पॉसिबिलिटीज आर देयर, तो उनको सबका हमको कैसे लेंगे वही बात रहा। तो अब आखिर में जो बात हुआ है कि इट इज वेरी गुड दैट आवर ऑल यंग स्कॉलर सब आ रहे हैं। आप लोग सब यंग हो, पीएचडी सब कर रहे हैं, ऑलरेडी कोई कोई पीएचडी खत्म कर दिया है, कोई लास्ट स्टेज में है, ऐसे ऐसे आप लोग हो, जो बहुत खुशी की बात है। और इसमें हम लोग 2019 में 2020 में मुंबई में किए थे एक बार, जितना पीएचडी लोगों को स्कॉलर लोगों का सबका वहाँ पर किए थे, ऑलमोस्ट वी आर अबाउट 150। तो वहाँ पर भी बात हुआ, सो वी शुड डेवलप आवर ओन इंडिजिनस एपिस्टेमोलॉजी, ये बात का हुआ वहीं पर 2019 में। तो बीच में गैप होते गया, ऐसे खो गया। तो उस टाइम में मुंबई में सब बात हुआ था, तो उसके बाद ही ये सब बात चालू हुआ। उसके बाद हम लोग 250 लोग हम लोग मध्य प्रदेश में स्थित भोपाल में ऑलमोस्ट 250 बने प्रोफेसर लोग, असिस्टेंट प्रोफेसर साहब ये सब आए थे विद द सपोर्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश। तो ये सब हो सकता है, तो इसलिए ये सबको हमको सबको मिलकर हमको करना पड़ेगा और काम करना पड़ेगा हमको। बने एपिस्टेमोलॉजी, नया एपिस्टेमोलॉजी, आदिवासी एपिस्टेमोलॉजी शुरू कर सब कौन करेगा? सरकार करेगा नहीं। हमारा तोहफा बोल रहा है, सरकार करने वाला नहीं है, हम ही को करना है। सरकार कुछ मदद कर सकता है इधर उधर से, दूसरे लोग मदद कर सकते हैं, बट वी हैव टू वर्क। सो दिस इज इम्पोर्टेंट। और दूसरा बात, जो ट्राइबल मेथोडोलॉजी ऑफ रिसर्च एंड वर्क एंड लाइफ, ये जो बोल रहे हैं, इसको भी कौन करेगा? हम ही को करना पड़ेगा। सो कलेक्टिवली सपोज वी आर टुगेदर, देन डेफिनेटली वी कैन डू इट। तो आई थिंक आई विल नॉट स्पीक। सो बहुत धन्यवाद सबको, नहीं बहुत धन्यवाद जितना भी आए। अभी नाची से बची तो मैं तभी से देख रहा हूँ, मेरे को भी नाचता हूँ मैं, तो नचूंगा ऐसे लग रहा है, तो नचेंगे जरूर। हाँ, तो बहुत बहुत धन्यवाद सबको, नहीं सबको जोहार, जय आदिवासी। Thank you very much, Advocate Nicholas, for the possibilities that we may have even the days to come. And we have. अच्छा, एक बात भूल गया, जनवरी 13-14 मैंने एवरी ईयर वी हैव ए बिग गैदरिंग ऑफ आदिवासीज ऑल ओवर इंडिया। तो कहाँ से आप आते हैं? फॉरेन से भी आते हैं, लद्दाख से भी आते हैं, इधर केरल से आते हैं, इधर नागालैंड से, सब तरफ से आते हैं। तो जनवरी 13 और 14 इस साल सिलवासा में होगा, वो दादरा नगर हवेली वहाँ पर है। तो इसलिए आप लोग अपना दोस्त लोगों को सबको बताइए। और इतना भीड़ प्राय दुनिया में नहीं होता है जितना आदिवासी लोग कहते हैं, तो वैसे भीड़ कहीं नहीं होता है पूरा दुनिया में। तो इफ ऑल ऑफ अस विल गो विद ओपन एटीट्यूड, और सीखने के लिए, सिखाने के लिए और नेटवर्किंग करने के लिए वेरी गुड स्पेस। तो 13 and 14 जनवरी 2024 सिलवासा नगर दादर हवेली वहाँ पर स्वागत। Thank you very much for letting us know that the possibilities that we may have even in the days to come. Again, we once again thank our sponsors, USAID, Piramal Foundation, Aname, and also let's not forget Indian Social Institute, CVCI Office for Tribal Affairs, and India Indigenous Peoples Forum, who have contributed in different ways to make this day successful. Finally, what Advocate Nicholas said was about a cultural event that happens every year on the 13th and 14th of January, and it's a big, huge gathering of tribals. And this year it is going to be in Silvassa, Dadra Nagar Haveli. So all of you, each of us actually, are most welcome there. There is nobody, we do not actually need invitation to come there.
everybody is most welcome. And to see a crowd of almost 4 to 5, half a million people sitting, coming together, that's a marvelous sight to see. So all of you are most welcome to come and join and enjoy that cultural gathering actually. So thank you very much. And I have tried to save my time as much as we can because we are already late. So over to you, MC. Thank you, Roshan. Thank you so much for moderating this session. I extend my heartfelt gratitude and thank you to all the leaders sitting here for wonderfully summarizing a 2-day long seminar and giving us a way forward and possibilities. And as we disperse from here, I think every one of us, we need to take a pledge to at least even ponder about the thoughts that you have shared here. I thank you once again. Can we have a huge round of applause for that? All of you sitting here to just kindly rise up so that we can have a group picture. So we have come to the end of the program. Just after this program, this session, we have a very interesting and much needed event coming up, without which this 2-day seminar is incomplete. We have a special group called Sanskritic Tribal Manch from Ayanagar. अभी उनकी तरफ से एक सांस्कृतिक प्रोग्राम होगा हमारे लिए. उसके बाद हम सब भोजन के लिए जाएंगे. अभी का कार्यक्रम यहाँ पर होने वाला है नीचे में, तो जल्दी से वॉलंटियर्स इधर उधर कर दे, थोड़ा जगह बना दी यहाँ नाचने के लिए. सोफा को इधर मेरे राइट और ले आए, सोफा को इधर
गाय और ताल के साथ नाचते भी। इसलिए कहा जाता है आदिवासियों के लिए कि उनका चलना ही नृत्य है और उनका बोलना ही। आदिवासी समाज में बच्चों को नृत्य सीखने, अलग से नृत्य सीखने की जरूरत नहीं पड़ती। वो परंपरा के अनुसार समाज की संगति में रहकर स्वतः ही वो गाना बजाना सीख लेते हैं। तो ये प्राकृतिक परिवेश और होने उनके नाच गान में जुड़ी हुई। आदिवासी नृत्य विभिन्न मौसम के अनुसार ताल, लय और नृत्य भी भिन्न होता है। तो अभी हम उसको प्रस्तुत करने जा रहे हैं। और मैं इस यहाँ के प्रबंधकों को भी मैं धन्यवाद देता हूँ जो कि हमें याद किया और हमें यहाँ दर्शन दिया। थैंक यू। My sister was there. Oh yeah, I know. The flying is a reverse.
Thank you.